Hello and welcome. It's that time of the year, once again, where we are down to the selection process. It is about the 2024 season draft. It's the HBL PSL and excitement right on top. शानदार इस्तकबाल सभी का जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो भी यहाँ पे आज पार्टिसिपेट करेंगे इस ड्राफ्ट में एंड here we are with you guys in the studio once again. बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है क्योंकि ये मौका ही ऐसा होता है जहाँ पे ना सिर्फ फैंस बल्कि क्रिकेटर्स भी अपने दिल थाम के बैठे हुए होते हैं. तकरीबन 1000 क्रिकेटर्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान उन्होंने अपनी एंट्रीज डाली हैं इस ड्राफ्ट में और ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो फ्रेंचाइजेज हैं वो उनको सेलेक्ट करेंगी और फ्रेंचाइजेज भी पूरी तैयारी के साथ आई हैं क्योंकि क्या कॉम्बिनेशंस हैं जिससे वो इस साल ट्रॉफी उठा सकें. अभी आपने देखा पूरा सिलसिला 2023 के सीज़न का इस एब्सोल्युटली लाइक जैसे कल की बात हो. हम इतने एक्साइटेड थे, लाहौर ने उसको ट्रॉफी को उठाया था. ऑफ कोर्स हर साल हर टीम कोशिश करती है, देखते हैं इस साल फातेह कौन होगा, लेकिन फातेह तब होगा जब एक अच्छी टीम बन पाएगी जिसमें 18 मेंबर्स प्लेयर्स हर फ्रेंचाइज उठाएगी, जिसमें प्लैटिनम भी है, जिसमें डायमंड है, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग, सप्लीमेंट्री, बहुत सारी बातें करनी है, काफ़ी ट्रेडिंग हुई है. So I'm all excited right here, and not just me in the studio on a new sofa. I've got some guests alongside me. I'm going to introduce them one by one. So I'm going to start with the lady, and she is very well known to the, of course, cricket fraternity. My colleague, Uruj Mumtaz. Always lovely to have you. Thank you very much, Sikandar. Thank you for having me. I hope you are as well as you sound because this promises to be very exciting. क्योंकि जितनी चीज़ें आज से पहले in the past couple of weeks हो चुकी हैं, I think it's a very exciting draft that's lined up here. Of course. And one more guest of mine, जिनको मिलके मुझे personally बहुत खुशी होती है. A very refined gentleman. We've shared the commentary box together also. A fine cricketer, and you all know him, but we're going to show his face, of course. Azhar Ali. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम अज़हर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. Looking fit, happy. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. बड़ा ज़बरदस्त मौका होता है जब HBL PSL स्टार्ट होता है और ये ख़ास तौर पे जो बेसिकली जो डिस्प्ले पे होगा अब से 2 महीने बाद वो यहाँ सेलेक्ट होगा. तो कैसा लग रहा है आपको? कई नए खिलाड़ी भी दिख रहे हैं, बाहर से आए हुए भी, हमें कुछ लोकल टैलेंट भी काफ़ी दिखा है. सो एक्साइटिंग टाइम्स. वेरी एक्साइटिंग टाइम है. हमेशा जो ड्राफ्ट का जो टाइम होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे हम कहते हैं गेम यहाँ ही से स्टार्ट होती है कि कैसे आप अपना अपनी स्ट्रेंथ टीम की बिल्ड करते हैं, फिर आपका बेंच स्ट्रेंथ कैसी होती है. क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है कुछ इंजरीज होती हैं, कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स आती है, कोई प्लेयर आउट ऑफ ऑल ऑफ अ सडन अपनी इंटरनेशनल साइड के लिए पिक हो जाता है, तो कई टीमें फिर स्ट्रगल करती हैं बैकअप के ऊपर. आई थिंक कि अब काफ़ी हद तक के इतने सीजन्स हो चुके हैं, ड्राफ्ट के लिहाज से भी अब सारी टीम्स जो हैं वो मेच्योर हो चुकी हैं काफ़ी हद तक. तो आई एम श्योर कि इस ड्राफ्ट में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ पिकिंग अप द टीम नज़र आएगी आपको. बिल्कुल. अच्छा, ऐसा है कि इस साल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हुई है. हम देखते हैं हर साल होती तो है, लेकिन इस बार आई थिंक कुछ फ्रेंचाइजेज ने एक फ्रेश लुक देने की कोशिश की है. बड़ी मुश्किल से उन प्लेयर्स को जिनको बड़े अरसे अपने साथ रखा हुआ था उनको जाने दिया. सो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हुई हैं, उनमें से कुछ दिखाते हैं. इफ्तिखार अहमद को बड़ा हमने देखा. इफ्तिखार अहमद जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मुल्तान सुल्तान को रायली रूसो, मुल्तान सुल्तान के रायली रूसो वापस अपने घर जा रहे हैं उरूज जहां से आए थे बिकॉज ही रिप्रेजेंटेड क्वेटा ग्लैडिएटर्स. अ की प्लेयर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, अमेजिंग टैलेंट दैट ही पोजेसेस. Also for Multan Sultans, we've seen कि इन्होंने किस तरह से उस मिडिल ऑर्डर को संभाला हुआ था. He is obviously a batting powerhouse, but I feel it's a very balanced trade क्योंकि इफ्तिखार also जिस तरह हम जानते हैं कि उनकी मिडिल ओवर्स में स्पेशली फिनिशिंग की तरफ. So I think it's a very similar trade. It'll be interesting कि अब मुल्तान जो है again, but I really feel कि it's an interesting trade because balanced पावर हाउसेज एक्सचेंज हुए हैं. बट रायली रसो घर वापस जा रहे हैं आफ्टर स्पेंडिंग व्हाट अ फ्यू इयर्स एट मुल्तान सुल्तान. तो जिस तरह आपने ट्रेड्स की बात की, आई थिंक दिस इज अ फुल फायर ट्रेड ऑफ. Let's have some look on some more trades that took place. ये बड़ी की ट्रेड थी. शान मसूद बड़े इंटीग्रल पार्ट रहे मुल्तान सुल्तान के और पहली बार कराची जा रहे हैं अजहर, और ना सिर्फ वहाँ जाएंगे बल्कि आए गेस्ट कप्तान भी होंगे. फैसल अकरम जो हैं वो उधर चले गए जो कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं. उसके अलावा कुछ पिक्स भी इन्होंने एक्सचेंज किए हैं इस बदले में. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर भी आई वाज सिटिंग कवरिंग PSL लास्ट ईयर, तो कराची किंग्स को हम भी वहाँ पे फील कर रहे थे कि दे नीड फ्रेश फेसेस, यू नो, कि काफ़ी अरसे से सिमिलर यू नो इवन इन स्पोर्ट्स स्टाफ एंड देन एज प्लेयर्स. तो आई थिंक शान मसूद इज़ अ वेरी गुड रिफ्रेशिंग चेंज बिकॉज ही विल यू नो जैसे टीम को इकट्ठा करने में इन्होंने मुल्तान सुल्तान का भी में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया. और आई थिंक दैट विल गो
a long way with Karachi as well. I think they will make plans, and I think he will make sure that all his team play according to those Yeah. plans, and I think they will have a lot more selfless players. Yeah, and Multan have let go Riley Rousseau and Shan Masood. Next up on the draft 2024, this is a big trade once again. इन्होंने जो राइट पे दिख रहे हैं आपको इमाद वसीम शुरू से कराची किंग्स से खेलते आए हैं, so it's a big move, it's a trade, and Hassan Ali coming on to Karachi. That's amazing. I mean, different colors. Yeah, big move also because Karachi has not done well for a long time except for winning the trophy under Imad. तो वहाँ से वो उधर जा रहे हैं, and Hassan Ali now moves to Karachi Kings. Obviously, this is very interesting. Again, two big names in Pakistan cricket and in franchise cricket. और इमाद आप कह रहे हैं towards the latter half, anyways एक franchise specialist हो गए थे. So I think this is going to be interesting कि how this plays out in the new colors. ना सिर्फ इन्होंने एक्सचेंज किया बल्कि उन्होंने एक पिक भी आपस में जो है वो स्वैप की है. ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेड था, एक के बदले दो, प्लस उसके अलावा साथ में आपको पिक्स भी मिलेंगी. नसीम शाह भी काफ़ी अरसे से क्वेटा के साथ हैं, की परफॉर्मर हैं, और हम जानते हैं कि उनकी वैल्यू एडिशन कितनी बड़ी है किसी टीम के लिए. नहीं, नसीम हमने पिछले एक साल के अंदर जिस तरह एक्सेल किया उन्होंने अपने कैरियर में, आउटस्टैंडिंग, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर एट द मोमेंट इन द होल वर्ल्ड क्रिकेट. बड़ी चेंज है, बट आई थिंक दो प्लेयर दोनों वसीम जी ने जिस तरीके से वर्ल्ड कप में इम्प्रेस किया है, अंडर प्रेशर टीम हार रही थी हमारी, लेकिन मिडिल ओवर्स में बहुत ज़बरदस्त पारी. अबरार आई एम श्योर कि वो T20 क्रिकेट में इवन इन पावर प्ले ऑल्सो विद हिज मिस्ट्री स्पिन ही कैन बी वेरी इम्पैक्टफुल. तो आई थिंक बहुत टीम्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त चेंज है, लेकिन आई थिंक इसमें क्वेटा को ज़्यादा एडवांटेज होगा. और अबरार पहले भी काफ़ी अपनी सारी क्रिकेट कराची में है, उस सेटअप से भी वाकिफ़ हैं जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स लाता है, क्लब लेवल पे भी है, उसके हायर लेवल पे भी. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 1000 प्लेयर्स हैं जिन्होंने एंट्री की थी, 450 इसमें फॉरेन प्लेयर्स हैं जो कि फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आए हैं. फुल मेंबर नेशंस भी हैं इसमें, एसोसिएट मेंबर नेशंस भी हैं, और इसमें कई ऐसे नाम हैं जो कि डिफरेंट लीग्स में परफॉर्म करते आ रहे हैं अपनी अपनी कैटेगरी में. कुछ नाम मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा एज वी मूव ऑन, एंड सम ऑफ द प्लेयर्स आई वुड पर्सनली लाइक टू सी they become part of the HBL PSL and also at the same time become a part of any franchise. Tim Seifert, somebody जो कि बहुत explosive batter हैं, recently UAE में उन्होंने खेला था, New Zealand versus UAE. I saw him playing another format, one of the leagues. I mean, it's good to see that fresh blood, young blood is being injected from the foreign categories also. It's also the essence of franchise cricket, right? So many fringe players who are making their way into their respective international sides, वो franchise cricket में impress करते हैं और फिर कहीं ना से कहीं उनको international debut की call ups आती हैं. So Tim Seifert की आपने बात की, Matthew Ford from West Indies एक हैं, Jordan Cox हैं. There's so many names, और ये अक्सर हम देखते हैं कि I don't know एक सिलसिला शायद PSL में बन गया है कि international batting prowess जो ज़्यादा आती है और हमारे अपने फास्ट बॉलिंग होती है, तो ये एक थोड़ा सा सिलसिला बन गया है. इसके बहुत बड़ी मिसाल है, PSL से उठे और फिर और नेशनल साइड पे भी आए, आगे भी गए. हालांकि जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं ज़्यादातर बैटर्स ही आते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जो बेस्ट बॉलिंग अटैक है किसी भी लीग का वो पाकिस्तान में हमें मिलता है, हम चैलेंज होते हैं. इंग्लैंड में बहुत क्रिकेट खेली अजहर आपने, और वहाँ पे जो उनका एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें डिफरेंट लेवल्स पे वाइटैलिटी भी है, ये भी है, और T20 प्लेयर्स निकलते हैं. वी सी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम इंग्लैंड फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्रिकेट ओवर देयर जो कि हिस्सा लेना चाहते हैं. देखिए, हम पास में देखते रहे, टॉम बेंटन आए हैं, विल स्मीड आए हैं, हैरी ब्रुक आए हैं, लिस्ट गोज ऑन, एंड देन जिनसे भी मैं ऑब्वियसली काउंटी क्रिकेट खेलता हूँ तो जिनसे भी बात होती है वो PSL को बहुत हाईली रेट करते हैं, और वहाँ की जो मैनेजमेंट है, उनके जो सिलेक्शन पैनल है, वो भी PSL की परफॉर्मेंस को बड़ी हाईली रेट करती है. और आपको देखने को मिला कि जिस प्लेयर ने PSL में परफॉर्म किया उसको कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिली है. इस तरह ही और बहुत से नाम हैं जो इस साल मैं देख के आ रहा हूँ, हो सकता है कि वो इस ड्राफ्ट में हमें नज़र आए, इस PSL में नज़र आए. सैम हेन उसमें बहुत बड़े परफॉर्मर रहे हैं, उन्होंने अब इंग्लैंड कॉल अप भी हुई है, तो आई एम श्योर कि कोई टीमें हैं उनकी तरफ भी देख रही होंगी. एक टॉम मोजली हैं कि वो भी आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं उनका भी नाम आ सकता है इस ड्राफ्ट में. ही इज़ अ वेरी वर्सटाइल प्लेयर एज वेल. तो आई थिंक T20 के लिहाज से जो बैटिंग पावर हाउस है ना इंग्लैंड का, क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करते हैं अपनी T20 क्रिकेट को अपस्किल करने के लिए, वाइट बॉल क्रिकेट को अपस्किल करने के लिए, और जो टेस्ट क्रिकेट में भी उनका मेथड है, तो उस वजह से तमाम क्रिकेट जो है वो उस तरफ जा रही है उनकी. आई थिंक इंग्लैंड इज़ ऑलवेज फ्रेंचाइज टीम्स के लिए इंग्लैंड प्लेयर्स इज़ ऑलवेज अ हॉट प्रॉपर्टी. If I ask you, we are about to go outside and join Zainab where the picks will begin. Any particular player that you would like to see in action who hasn't been around? Are you talking from Pakistan setup Anywhere, or anywhere? anywhere. I mean, see,
one player that is exciting and new is obviously वो पाकिस्तान खेल चुका है, but Abrar. I would really like to see how he is versatile in multi formats. PSL का उसको hopefully सब longer run मिलेगा और flavor मिलेगा. So he is someone I felt के feel from Pakistan level. साइम अयूब की हम बात करते हैं. I think he's already made a name for himself franchise cricket में जितना अच्छा खेला. Last year PSL जितना अच्छा खेला. तो अभी भी वो पाकिस्तान टीम के साथ भी. I think from a batting and a bowling, these two young promising players ऐसे दो हैं जो पाकिस्तान की तरफ से I would like to see them make their names even bigger इस PSL में. आपके जहन में कोई है फॉरेन नहीं, या हमारे एरिया में? नहीं देखिए, हमारे जिस तरह उन्होंने अबरार का नाम ले लिया, उमैर बिन यूसुफ एक मैच खेले, 1 या 2 मैच खेले लास्ट ईयर, उन्होंने भी बड़ा इम्प्रेस किया. आई फील के उनको और चांस मिलना चाहिए इस PSL में, लॉन्गर रन मिलना चाहिए. उसके अलावा भी जितने प्लेयर्स हैं हमारे, अगर आप देखें थ्रू आउट द करियर, साउथ शकील बड़े अरसे से मिस आउट हो रहे हैं. अब्दुल्ला शफीक को देखा लाहौर कलंदर्स के लिए, इवन ही इज़ अ टेक्निकली वेरी करेक्ट प्लेयर, बट ही प्लेड T20 क्रिकेट परफेक्टली. तो आई थिंक नेशनल T20 में भी दिखे, अमाद आलम देखे जो कि पहले भी रह चुके हैं हिस्सा कराची किंग्स का, फिर सिस्टम से बाहर हो गए, नजर नहीं आए PSL में. लेकिन आई थिंक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है और उनके रन्स भी चल रहे हैं, तो ऐसे बहुत से यंगस्टर्स हैं. और बिल्कुल इन प्लेयर्स को जो टेक्निकली अच्छे हैं और अपनी गेम इवॉल्व कर रहे हैं, उनको PSL में लॉन्ग रन मिलना बहुत ज़रूरी है. पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है. वो अपनी क्रिकेट इंप्रूव करते जाएंगे, अपनी गेम के अंदर एडिशन करते जाएंगे. आगे पाकिस्तान क्रिकेट ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बल्कि वाइट बॉल फॉर्मेट में भी अच्छा परफॉर्म करके देंगे. Excellent. So, it's all set. Recently concluded National T20, now moving into HBL PSL. Lots of talent locally, lots of talent, of course, coming from around the world. And who is going to be picked? We'll have to find out right away. We'll take you now to Zainab Abbas, जहाँ पे अब सिलसिला शुरू होगा franchises की एक आपस में टसल का. Assalamu alaikum everyone, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all of you here. We're indeed looking forward to a fantastic evening of the HBL PSL Draft 2024. Now, हर साल PSL का HBL PSL का draft होता है, and you know there's always a lot of things that one can look forward to. Foreign players, बड़े-बड़े नाम हम देखते हैं कि आते हैं HBL PSL में, and I think this year is no different. We can expect some big names that we can witness in the HBL PSL 2024. And apart from that, I think one reason that we've seen the HBL PSL has been in the news this year has been due to all the trade activity that we've seen between the different franchises. बड़े मजे की combinations बन रही हैं, कुछ players किसी और franchises में चले गए हैं, कई teams की बिल्कुल look जो है वो change हो गई है. So I think we can all look forward to a fantastic evening full of action, full of entertainment, and full of star value. So I think आज की evening start करते हैं, and I'd like to call upon the CMO of HBL to come forward, Mr. Ali Habib, and say a few words. HBL की बड़ी ज़बरदस्त association रही है पाकिस्तान Super League के साथ. Over the years, it's the 9th year in the making, and special thanks to HBL कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का साथ दिया. Assalamu alaikum ji. Good evening to all the participants of the HBL PSL draft for season 9. मैं आप तमाम लोगों को HBL की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ. The fact that we are now with PSL for the 9th straight year reflects the importance of this platform for cricket and for Pakistan. और जब हम HBL PSL की बात करते हैं तो I think this has really become a reason to believe in Pakistan. जब भी कभी we at times are very critical of ourselves कि पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, but when you look at the consistency with which HBL PSL has been held over the last 8 years, and inshallah 2024 में 9th edition शुरू होगा, तो इस बात की अक्कासी करता है कि जब हम किसी चीज़ का बेड़ा उठाते हैं पाकिस्तान में तो PCB को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स को और फ्रेंचाइजेस को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जी आपकी कंसिस्टेंसी है और आपकी कमिटमेंट है जिसकी वजह से आज हम ये 9th एडिशन देख रहे हैं HBL PSL का. कोई आसान बात नहीं है, बीच में पैंडेमिक भी आया था, दिस कुड हैव स्टॉप्ड
लेकिन आप लोगों की कमिटमेंट की वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं. तो something that we need to really pat ourselves on the back is the consistency and commitment of the franchises and of the of PCB behind this. HBL obviously has been with PSL for the last 9 years. Inshallah, we'll be here in the 2025 as well, taking our relationship with PSL to 10 years, a decade long of association of HBL and PSL. It has helped Pakistan. It has helped talent in Pakistan. It is helping communities in Pakistan. The fact that we took HBL PSL to Multan a few years ago, 2 years ago, has also ushered in international cricket in Multan as well and helped cricket flourish in Pakistan's different. Uska matlab hai youth flourish karta hai. HBL is now associated with youth. At the end, I'd like to thank you all. And jahan hum HBL mein kehte hain कि जहाँ ख्वाब वहाँ HBL, I think we also would like to say जहाँ PSL वहाँ HBL. बहुत बहुत शुक्रिया. Have a great evening. Thank you. Thank you so much, Ali Habib Saab. I really like that tagline, जहाँ PSL वहाँ पे HBL. And now it's time to call upon the CEO of Pakistan Cricket Board, the Chief Operating Officer, Mr. Salman Nasir, to come forward and share his thoughts. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Chairman, Zakash Saab, dear franchise owners and teams, Ali Habib from HBL, and all our other sponsors and stakeholders, Assalamu alaikum. It is a pleasure to welcome you all to the PSL Draft 2024. It has been a long, long journey for the PSL and an interesting one at that. From a time when we couldn't have international cricket in Pakistan, to a time where we started bringing to some cities some matches, to a time when we had to have the PSL, HBL PSL behind closed doors, to having it fully in Pakistan. It's been a wonderful journey, and I thank you all who have participated in this journey with us, because together we have created a global and international brand for which Pakistan is now well known. And the beauty of this brand, of course, is that it is our own. I think Ali touched upon it as well. It's so Pakistani, this brand. And everything about it, each year's branding, the themes, the players that participate in it. Of course, the international players add a wonderful flavor to it. But it is our local players also that form the core of this HBL PSL. And the power of this brand has been such that over the years we've seen the impact, and Ali also talked about it a little bit, in our society, in bringing international cricket back to Pakistan, but also projecting a positive and soft image of Pakistan globally. I think the players that have gone, the international players that travel, that play and travel outside of Pakistan, end up being ambassadors for Pakistan and speak also about the competitiveness and the quality of this league. And it is second to none. I also want to take a minute, though, and talk about the franchise owners and their commitment to the HBL PSL. It is united that we've been able to bring it to the level that it is today. And data tells us, and this is, numbers don't lie, that the HBL PSL 8, the last one that we had, in terms of digital reach, exceeded any other league in the world. So testament, I think, to the brand that we have created, and just having them with us today, it's a pleasure to see everybody here today, whether it's Salman Iqbal Saab, whose interesting, rare, but very good speeches, profound speeches usually add a lot of flavor to our meetings. We have Atif Rana Saab from Lahore Qalandars, and his comic relief and passion for the game is always a pleasure to have. And their approach has always been Dil Se, while the approach from Islamabad United has been Dimagh Se. So it's been an interesting battle between the two. They've both won equal titles. So it's an interesting battle between them. Nadeem Umar Saab is here from Quetta, and his one-liners are always popular and end up concluding any debate that's happening. Javed Afridi Saab is not here, and we miss his good looks, of course, but also his passion and patriotism that he brings. I do also want to mention one last thing. I'll not
bore you all with more. But this is the favorite time for the PCB when the PSL is happening. It is also the most difficult time. And I want to take a moment to appreciate the PCB team who work day and night. They are the real unsung heroes in this, whether it's the groundsman, whether it's the operational team, whether it's the logistical team, the security team. They all come united and work extremely hard. The players on the ground can drop a catch. These guys can't drop a ball. So congratulations to you for doing a great job so far, and best of luck. And thank you everyone for being here today. Thank you so much, Salman, for your wonderful thoughts, your insight. Completely agree with how this league has evolved and it's grown. And I love the fact that, you mentioned the fact that we've got all these individual personalities that I hear that bring in a lot of flavor to the league itself. Okay, ji, moving on to our next speech. If I can please call upon the chairman of the management committee of the PCB, Chaudhry Mohammad Zaka Ashraf Saab, to come forward and say a few words. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, esteemed franchisees and dear friends, it gives me immense pleasure and pride to address all the passionate and steadfast followers of Pakistan cricket as we embark on the 9th year of HBL PSL. Spectacular event that continues to deliver a complete package of thrilling entertainment and public joy. HBL PSL is not just unearthing exciting local talent every season, but it has also become the face of Pakistan cricket. The forthcoming Pakistan Super League will unfold on our 4 renowned cricket grounds, Karachi, Lahore, Rawalpindi and Multan. Sponsors are an integral part of the cricket ecosystem. I express my sincere thanks to our little title sponsor HBL for fostering a lasting relationship. Gratitude is also extended to all commercial partners of the PSL whose support plays a pivotal role in building and enhancing the image of Pakistan. Our 6 franchises, Karachi Kings, Lahore Qalandar, Multan Sultans, Islamabad United and Peshawar Zalmi are the backbone of PSL. I extend my best wishes to them and trusting that they will select best players for what promises to be the most competitive T20 cricket league. On behalf of PCB, I express my gratitude to the Government of Pakistan, LEAs and other local authorities for the unwavering support to make this event a great success. I still remember in 2012 when we planned this PSL, we named this name as Pakistan Super League. और आज देखें एक बहुत बड़ा एक ऐसी लीग बन गई है जो मुझे देख के बहुत खुशी हुई है कि जो एक पौधा लगा था आज 2016 में, आज 2023 और 24 में एक तनावर दरख्त बन गया. तो इसकी कामयाबी जो है ये सब आपकी वजह से है. तो मेरी आप सबको बहुत मुबारक भी है और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के वी विल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर Pakistan cricket and our league. So my best wishes to you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. लेकिन हम आपको थोड़ी देर के लिए मज़ीद रोकेंगे because a souvenir is going to be presented by the league commissioner of the HBL PSL, Miss Naila Bhatti. अगर souvenir please पकड़ाया जाए so that he can be presented with the souvenir. Remember, these souvenirs are now going to be passed on to the franchise owners. Thank you so much, Naila. And if we could also call upon Mr. Ali Habib, agar aap aa jaएं. And sir, agar aap ek souvenir
All right, if I could please call upon all the franchise owners or representatives जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप आएं on stage and you can collect. If I could also call upon Mr. Rao Umar Hashim Khan, उनको भी एक souvenir मिलना है. आप भी please stage पे मौजूद हैं, आ जाएं. चले मैं चले जी प्लीज सलमान सर आपका सूवेनिर तैयार है. Mr. Salman Iqbal has now received his souvenir. आतिफ राना साहब अब आपकी बारी है. Lahore Qalandars have been the defending champions. They've done really well in the last few years. And Atif Rana has now received his souvenir from the chairman of the management committee. Ali Tareen Saab, ab aapki bari hai. Multan Sultans in a new look this time. Kuch adli badliyan hui hain, kuch changes aaye hain, and it'll be interesting to see कि क्या picks होती हैं इनकी तरफ से. Nadeem Umar Sahab of Quetta Gladiators. जी जावेद अफरीदी साहब यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके बिहाफ पे सूवेनिर लेने के लिए उनकी टीम रेडी है. पेशावर ज़ल्मी, they've also won the HBL PSL previously, and now it's time to give the souvenir to Islamabad United. अली नकवी साहब यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन अगेन उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं. All right, thank you so much. I know that you have a really busy day today and quite a challenging one. To make a team, make a combination that works in these conditions is something that's always a challenge, and I'm sure सारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, they're going to get very busy in a couple of minutes. Let's have a quick recap of the HBL PSL draft rules in case you're not aware कि क्या rules हैं. अगर हम एक दफ़ा rules को revisit करते हैं. Platinum category, आपको पता है, is the topmost category. Minimum one foreign player and one local player has to be there. Same as the case for diamond category. Minimum एक foreign player और एक local player का होना ज़रूरी है. 3 foreign players in the first 9 picks भी होना ज़रूरी है. And apart from that, you've got 2 additional picks in the supplementary round. 1 wild card pick per team. Right to match bhi hai. This should be an interesting one today. All teams must have a roster of 16 players at the end of the draft. So there you have it, a recap of the rules in case the franchises are not aware of what, this is just a refresher for your memory, all those that are watching. So we can actually now commence with the draft itself. We're all really looking forward to tonight. But I think before we start, I'd like to call my co-host for the evening. And it's a bit of a surprise package this time because we talk about entertainment. We talk about providing entertainment to our people through cricket. But there's also somebody who's contributed in the field of acting. हमने उनके plays भी देखे हैं और movies भी देखी हैं. He's perhaps a master of his craft and a fine artist, Adnan Siddiqui. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, and I'm really excited. Khawatir Azad, assalamu alaikum, and really excited to be the first co-host for your. नहीं, but As the saying goes, if you're not living on the edge, you're occupying too much space. And I feel that all the franchise owners are there, on the edge, but ready to fly. Ready to fly. अच्छा, वैसे अदनान को मैंने अक्सर मतलब मैचेस पे देखा है. He's in different camps. He's always rooting.
you seem to be a keen follower of the sport itself, and especially part of the HBL PSL. Every year we get to see you. हमेशा से interest रहा है cricket में? क्रिकेट किसी भी पाकिस्तानी लड़के लड़की से पूछें so it's a second name is cricket. So Adnan Siddiqui cricket, Zainab cricket. So cricket has been a very popular sport in Pakistan and it's been followed in every house. Not even men, women, kids, everyone. इससे पहले और बातें करें, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेल्प की ज़रूरत होगी, जा जाके आपने सबसे बातें करनी है जितने भी यहाँ पे ओनर्स हैं. इट्स टाइम टू हेड बैक टू द स्टूडियोज फॉर अ व्हाइल. यू गॉट सिकंदर, अरूज एंड अजहर अली वेटिंग फॉर यू. All right, thank you so much, Zainab. Here we are. Now, we haven't started with the picks yet, but you can see the excitement out there. All the owners were there up on the stage, and they all geared up. बहुत सबको तो आइडिया होगा कि उनका कोर क्या होने वाला है टीम का. कुछ को रिटेन करेंगे, ऑफ कोर्स, कुछ को नए को लेंगे. लेकिन मज़ेदार बात ये होती है कि they always, one of the other, they come up with surprises. And good surprises, I must say. And I know the certain usual suspects जो करते हैं ऐसी कोई ना कोई बदमाशी छोटी छोटी. तो हम ओवरऑल देख रहे हैं सेटअप को. हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया है क्योंकि 8 सीज़न हुए हैं HBL PSL के कि हर फ्रेंचाइज का अपना एक मोड है, एक मूड है, एक स्टाइल है, एक उनका कल्चर है. Which one has impressed you the most over a period of like what, say 8 years, 8 seasons? I think if you go with consistency, you can probably pick Multan Sultans, who were slightly late to obviously enter the franchise, HBL PSL franchise. But I think consistently वो top 2-ish में रहते हैं and they quietly do their job. उस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड की आप बात करें तो उनका एक बड़ा methodology है, risk and reward cricket, flamboyant cricket. So which one out of the two is No, so I'm just saying that, but that hasn't paid dividends from them yet. क्वेटा एंड कराची कहीं ना कहीं फॉल्टर करते चले गए. पेशावर ज़ल्मी भी कुछ सालों से उस तरह से नहीं आया. बट लाहौर कलंदर्स इज आउट शोन एवरीबडी अंडर वेरी यंग लीडरशिप ऑफ शाहीन शाह अफरीदी. तो आई थिंक बट दिस टाइम राउंड जिस तरह हम कोर्स की बात कर रहे थे, ट्रेड्स जिस तरह से हुए हैं, पेशावर ज़ल्मी का बैटिंग अगर आप देखें पावर हाउस, मतलब बाबर, साइम, इतने सारे नाम है. TKC is in there as well. Sherfin Rutherford potentially if they pick him and stuff. So I think they've got a very a strong powerhouse in there. अजहर खातून से कोई एक पिक निकलवाना कितना मुश्किल है. अच्छा, मुल्तान सुल्तान ने चलिए ले. चले दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे, हमारे साथ कुछ शेयर करते हैं. इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये सेटअप है. प्लैटिनम में दो ऑफ कोर्स हमने दिखाया, ट्रेडिंग हुई. नसीम शादाब उनके ऑफ कोर्स मेन स्टे हैं काफ़ी अरसे से, एंड ही इज पार्ट ऑफ. कैसा देख रहे हैं बाकी पिक्स को? डायमंड आई थिंक प्रीटी स्ट्रॉन्ग. आई थिंक एक अच्छा कोर इनका कोर प्लेयर्स इनके पास मौजूद हैं. दे कैन बिल्ड अराउंड इनके अराउंड टीम पिक कर सकते हैं. तो आई थिंक कि इस्लामाबाद लास्ट 2-3 सीजन दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड. दे ऑलवेज पिक अ वेरी गुड साइड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब नॉकआउट स्टेज पे ही आते हैं ना, वहाँ थोड़ा सा फॉल्टर कर जाते हैं. आई थिंक हालांकि 2 सीजन जीते हैं. हाँ, 2 सीजन जो इनका फर्स्ट हाफ 4-5 सीजन थे उसके अंदर ये यूएई में बहुत जीते हैं. लेकिन आई थिंक दे ऑलवेज पुट अप अ ग्रेट परफॉर्मेंस इन PSL. बट वो जो है ना इन दी एंड क्रॉसिंग द फिनिशिंग लाइन, मे बी ये टॉप 3 टीम्स में रहते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर. अच्छा, आपकी फॉर्मर फ्रेंचाइज के बारे में देखते हैं. लाहौर कलंदर आप खेल चुके हैं, कप्तानी भी की है लाहौर की. लाहौर की एक जर्नी रही है फ्रॉम UAE टू पाकिस्तान, और अब तो बिल्कुल ही अनटचेबल दिख रहे हैं 2 सीजन से. देखिए, लाहौर का एक प्रेसिडेंट रहे अपने साथ कि जो उन्होंने प्लान बनाया था स्टार्ट में आफ्टर 2-3 इयर्स ऑफ डिबैकल में कह सकता हूँ कि जिसमें बिल्कुल भी उनकी परफॉर्मेंस वो प्लेऑफ्स भी क्वालिफाई नहीं कर रहे थे. लेकिन फिर इन्होंने एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने लोकल टैलेंट के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे. उसके काफ़ी बैकलैश भी उनको फेस करना पड़ा, लेकिन अब उनके फ्रूट्स जो है ना उनको अब लास्ट 3 सीजन में, एक में फाइनल में, फिर 2 चैंपियन हुए, तो उसमें फिर आपको नजर आ रहे हैं. अच्छा, इनका जो बॉलिंग अटैक है उरूज, वो एक्चुअली किसी प्रॉपर नेशन का हो सकता है, वर्ल्ड कप में भेज सकते हैं आप. हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी वो हटते हैं तो राशिद खान, इनके पास डेविड वीज़ा, उसके बाद फिर पार्ट टाइम, हाँ, और फिर पार्ट टाइमर्स में सिकंदर रजा. सो जो आपको चाहिए होते हैं सेट ऑफ 5 बॉलर्स, वो तो पक्के हैं इनके. मतलब वो आप क्लीशे टर्म की बात कर लें कि बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, और यही इनका रहा है. हालांकि अगर आप इनकी बैटिंग देखें ऊपर से तो वो अब्दुल्ला शफीक अभी रिसेंटली आए, बट उस तरह से उनकी बैटिंग नहीं रही है. बट डेविड वीसा ने इनको मैचेस ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी टर्म्स पे फिनिश करके दिए हैं. फॉर दैट मैटर आप शाहीन शाह अफरीदी के वो एक फेमस जो पिछले
मैच में थी वो खुद उतर कर आ गए थे, वीज़ा को रोका था उन्होंने, बट बॉलिंग इज़ वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। और इनके पास ऑफ कोर्स इनके अपनी खुद की भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। हारिस रऊफ को हमने देखा, ताहिर बेग भी आए हैं। आगे चलते हैं क्योंकि फ्रेंचाइजेस तो बहुत सारी हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स अजहर, ये भी एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी जब यूएई में चल रहा था, और ये यूजुअल होते थे प्लेऑफ्स में, आप इनके बगैर प्लेऑफ्स में जाते नहीं थे, बड़े कंसिस्टेंट। हाँ, लास्ट 2 सीजन से कुछ इनका सिलसिला जो है ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन अब हमने जैसे बताया एक ट्रेड में तो अपने पुराने हीरो को वापस ले आए, राली रसो को। उसके हाँ, जो उन्होंने रिटेंशन की है ना, जो ट्रेड जो की है वो बहुत आउटस्टैंडिंग की है। सारे अगर प्लेयर्स देखें ऑलमोस्ट एवरीवन इज एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो आई थिंक काफ़ी क्योंकि काफ़ी पिछले 2-3 सीजन से मार पड़ी है इनको, तो आई थिंक they have thought very deeply and I think they'll make up a very good team here। क्योंकि जब आप दुबई में एक दफ़ा उन्होंने एक पैटर्न सेट कर लिया था अपना, उनके लिए बड़ा मसला हुआ कि एक दफ़ा आप जब टीम को टीम बना लेते हैं फिर अगली फ्रेंचाइज आपको इतना इजीली मौका नहीं देती कि आप वापस से अपना कॉम्बिनेशन चेंज कर सकें। तो आई थिंक काफ़ी स्ट्रगल किया स्पेशली इन बॉलिंग डिपार्टमेंट में। नवाज नज़र नहीं आ रहे इस बार, अभी तक रिटेंशन में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला रहा होगा इनका उरूज नसीम शाह को जाने देना। वो एक बहुत बड़ा डिसीजन इस फ्रेंचाइज के लिए रहा होगा, और इनके सबसे प्रोलिफिक स्कोरर बैटर शेन वॉटसन इनके अब हेड कोच हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ बिग गैम्बल एंड अ फ्रेश चेंज, big gamble, but I guess loyalty to the franchise, Shane Watson उस तरह से वापस हैं, but I think नसीम शाह is a prime time commodity, चाहे वो कहीं भी चले जाएं, वो इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो आई एम श्योर काफ़ी सोच समझ के, आई एम श्योर उसके लिए काफ़ी टसल हुआ होगा कि हम दे ना दें, उसके बदले में 2 प्लेयर्स आएँ। बट जिस तरह अजहर बात करेंगे, आई थिंक इनका जो इस वक्त कोर है ना, ये इम्पैक्ट, आई थिंक दिस रिफ्रेशिंग चेंज जो अब्रार वसीम जूनियर आए, रायली रसो आए, जेसन रॉयल, आपको पता ही है सरफराज कैन ऑलवेज बी द स्टेबलाइजिंग फैक्टर, हसरंगा हो लास्ट ईयर मिस किया ना हसरंगा को, उन्होंने इंजर्ड थे या शायद अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इस साल अगर अवेलेबल होते हैं तो देन ही विल बी पाकिस्तान में जो भी सीरीज खेली उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। जी हाँ, हसरंगा इंजर्ड थे। चलिए आगे चलते हैं। मुल्तान सुल्तान का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले उरूज ने, इन्होंने भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, कोचेस में भी तब्दीली आई है, इनके अब ओवरऑल सेटअप का पता चलेगा आज शाम रात तक कि क्या बनता है। मुल्तान सुल्तान नज़र एक और ऐसी फ्रेंचाइज, थोड़ा सा बाद में आए थे, दे वर द लेट एंट्रीज, बट जब से आए हैं इम्पैक्टफुल फ्रेंचाइज रही है, जिसमें अगर रिटेंशन की सारी अभी तक देखूँ ना, तो उसके अंदर सबसे अगर वीकेस्ट इस टाइम पे लग रही है रिटेंशन की राह से। आई एम श्योर कि जब ड्राफ्ट खत्म होगा तो ये बड़ा अच्छा बैलेंस बनाने में कामयाब होंगे, लेकिन एट द मोमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लग रही है। लेकिन आई थिंक कि शाम तक ये मेरा व्यू भी इस बारे में चेंज हो गया होगा। लेकिन एहसानुल्लाह का बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि क्या वो क्योंकि इंजरी का शिकार है अभी, क्या वो पीएसएल के टाइम तक वो फिट हो जाएंगे नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। रिजवान आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, T20 क्रिकेट के वन ऑफ द टॉप बैटर्स इन द वर्ल्ड है। इफ्तिखार की एक ऐसी इंक्लूजन हुई है, एक ऑलराउंड पैकेज है, बॉलिंग में भी आपको ओवर्स करके दे सकते हैं, और बैटिंग के अंदर जो डेथ ओवर्स में जो हिटिंग है इनकी बड़ी इम्पैक्टफुल हो सकती है। अदर दैन दैट कि मुझे कोई ऐसा उसामा मीर की फॉर्म देखनी है वर्ल्ड कप के बाद, इस पिछले पीएसएल में तो बहुत अच्छी थी, इस पीएसएल में कैसी होगी। इंटरेस्टिंग बात है, आपने बोला कि इम्पैक्टफुल ऐसा अभी दिखा नहीं है। ये उरूज स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत सारे किए हैं इन्होंने, इवन टू लेट गो एंडी फ्लावर, ये भी बहुत बड़ा डिसीजन था। अब्दुर्रहमान अब इनके हेड कोच हैं, उसके अलावा उन्होंने एलेक्स हार्टली को भी लिया है। सो इट्स नॉट जस्ट द रिटेंशन ऑफ द प्लेयर्स, जो आपका सपोर्ट स्टाफ है और जो आपको पीछे जो सपोर्ट है उसको भी इन्होंने पूरा शफल किया है। एंड आई थिंक मुल्तान सुल्तान और सॉरी 3 फाइनल लगातार खेलते हुए आ रहे हैं, तो छेड़ दिया उन्होंने। और इनके अंदर आई थिंक दे आर प्रॉब्ली, अगर चेंजेस की या अडेप्टिंग की आप बात करें, तो दे अपीयर टू बी द मोस्ट ब्रेवेस्ट। चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने में, ट्राई करने में, एंड विद स्ट्रैटेजी बिहाइंड, उसके पीछे लॉजिक भी होती है। तो आई ऑलवेज फील कि मुल्तान सुल्तान इज़ वन टीम जो जम्प्स अबव द रेस्ट। उनकी लीडरशिप के अंदर के हिजाब जायद को भी जिस तरह से लेकर आए, आई फील एंड दैट उनके लिए वो इट्स बिन फ्रूटफुल। तो ये डरते नहीं है चीज़ें ट्राई करने में, क्योंकि T20 क्रिकेट है, अडेप्टेबिलिटी की बात है। तो बट ये है कि नीचे के जो 3 नाम हैं ये किस तरह से यूटिलाइज होते हैं। फैसल अकरम नाम काफ़ी टाइम से है मगर खेला नहीं है, लेफ्ट आर्म रिस्ट पिन एक सरप्राइज पैकेज है, पाकिस्तान हमें ही तंग कर जाता है अक्सर। अब्बास आफरीदी लास्ट ईयर हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे थे, एहसानुल्लाह की पेस अगर ड्रॉप नहीं होती उस तरह से इंजरी के बाद, आई थिंक ये जो नीचे के जो 3 नाम है, जो 3 पोटेंशियल्स हैं, दोज विल प्रॉब्ली गिव मोर इम्पैक्ट।
ऑलराइट, और अब क्विकली हम रह गई हैं पेशावर, ज़ल्मी और कराची। तो पेशावर को एक नज़र डालते हैं। पेशावर भी बड़े बैलेंस्ड फ्रेंचाइज रही है। अजहर, इन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। डैरन सैमी इनके काफ़ी मेन स्टे रहे, पहले कप्तान रहे, फिर इनके हेड कोच बने, एंड ऑफ कोर्स अंडर हाजी अकरम दे बीन डूइंग वेरी वेल। सो इनका भी ये सिलसिला अभी तक दिख रहा है। बिग थिंग लास्ट सीजन से बाबर आजम। जी बिल्कुल, और आई थिंक बैटिंग डोमिनेंट लग रहे हैं, इनकी रिटेंशन इतनी है। अब ये मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक जब इनके ड्राफ्ट शुरू होगा तो ये दे विल लुक फॉर बॉलर्स, बट आई थिंक अगेन टीकेसी हैं, बाबर आजम, पावल, सायम्यूब, इम्पैक्टफुल बैटर्स, यू नो टॉप ऑर्डर इनका बहुत थ्रेटनिंग है। इसके साथ अगर इनके हारिस भी हैं, वो भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, तो दे हैव प्लेंटी। हसीबुल्ला, he has impressed as well. Yeah. So they have amazing team. मेरा ख्याल है कि अगर कुछ spinners और fast bowlers इसमें induct कर लें तो they will be a power to beat. इनके पास ओपनर्स काफ़ी सारे हैं। हसीबुल्ला भी ओपन करते हैं, बाबर भी ओपन करते हैं, साइम भी ओपन करते हैं, एंड ऑफ कोर्स इससे पहले हारिस भी ओपन करते हैं। कराची रह गया। अच्छा, कराची भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनको ऑफ कोर्स एक ऐसी फ्रेंचाइज है, एक सीज़न जीत चुकी है, बट दे हैव बीन वन ऑफ दोज अलॉन्ग विद क्वेटा जो कि बहुत मुश्किल से पहुंच रहे हैं आपकी व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेऑफ्स, बट दे हैव गॉट द फायर पावर. And this time round, I think Shan Masood and Hassan Ali, two big names, two experienced players who come back into Karachi Kings. उस तरह से James Vince, obviously we know what he brings. Shoaib Malik का जितना experience है, Tabriz Shamsi, so I think they've done well for themselves this season कि वो जिस तरह से experience लेकर आए हैं Hassan and Shan. तो but again अक्सर नाम रहे हैं कराची के साथ, बट समवेयर अलोंग द लाइन्स आपको उनकी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती कि मैच की सिचुएशन में दौरान मैच आपको लगता है कि यू डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. तो कहीं ना कहीं दे बीन meandering along for seasons after seasons. So I think high time क्वेटा और कराची दो ऐसी टीम है जो अब बेहतर लग रही हैं to do something in this year's PSL. Well done guys. उरूज एंड अजहर, हमने कुछ ऊपर से टच किया कि क्या सिलसिला दिख रहा है अभी तक फ्रेंचाइजेस का. अब टाइम आ गया है कि हम अपनी प्लैटिनम कैटेगरी को हिट करें और स्टार्ट करें इन सारे पिक ऑर्डर्स को, और उसके लिए ज़ैनब और अदनान को ज्वाइन करते हैं. Thank you, Sikandar. We are now ready with the first category and the first pick of the night. And as you know, the first pick today belongs to Multan Sultans. Don't forget, there was a trade. Quetta Gladiators के साथ उनका हुआ है. कुछ players उधर गए हैं, कुछ picks इधर आई हैं. इफ्तिखार जो है कहीं और चले गए हैं. So ये सिलसिला जारी रहेगा. But the first pick of the night belongs to Multan Sultans in the platinum category. And उनका time शुरू होता है अब. चले अदनान, आप ये बताएं, क्योंकि हम प्लैटिनम कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको भी मैं टेस्ट करती हूँ. ये बताएं कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं इस कैटेगरी में दैट यू रियली वांट टू वॉच. अच्छा ज़रा मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, ये सारे बड़े इमैक्युलेट है अपनी पोजीशंस पे, मगर आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड represented my school, my college, and then I represented my showbiz cricket team for 10 years. So I know कि किसको कैसे पिक करना है, कहाँ पिक करना है, कौन सा ऑर्डर सही रहेगा किसके लिए. अगर मैं हूँ इनकी जगह पे तो अपने प्लेटिनम को मैं शायद ग्रैंड पोलार्ड को करूँ, और उनको तो ये और भी लोग हो सकते हैं, बेन बकेट हो सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त बैटर हैं, विकेट कीपर हैं, तो बड़ा मज़ेदार हो सकता है. चलें देखते हैं कि आपका प्लेयर आज पिक होता है कि नहीं. अब आप जा सकते हैं अपनी इनिंग्स का आगाज फ्लोर पे आप कर यहाँ सकते हैं. संभालें, मैं ज़रा नीचे की दुनिया संभालता हूँ. नीचे की दुनिया संभालने के लिए जा रहे हैं. बट वी आर रेडी विद द पिक अनाउंसमेंट. अली तरीन साहब यहाँ पे मौजूद हैं. जी अली, फर्स्ट पिक ऑफ द नाइट प्लीज अनाउंस. माइक प्लीज इनको दे दें. टेबल पे माइक है, उसमें प्लीज अनाउंस कर दें. I would like our new GM Hijab to announce the first pick. All right, Hijab is the new GM and she will make the announcement for Multan Sultans. Go on, Hijab. Hello Zainab. So our first pick in platinum is David Willey. All right, David Willey. They've opted for David Willey from England. He's a fast bowler. They were looking to bolster that aspect of their side. And we've got Adnan to ask questions, but we are ready with the next pick today. And that belongs to Karachi Kings. Karachi Kings, आपका वक्त शुरू होता है अब. So जी, बड़ी changes किए, lot of structural exchanges in your team. Well, we can see the first time ever in PSL 2 female coaches and female GM. So congratulations, women empowerment. Thank you. So Ali, why this pick? Why this pick, Hijab? Do you want
me Yeah, first? please. So we have retained a lot of our local players, and a lot of our foreign players weren't available this year. So our first pick had to be a foreign player. We were looking for someone who can give us the edge in the opening overs of a game, and somebody who can be very helpful in the power play and the death overs. And I think David Willey is a name that stands out. 2 female coaches. पहली दफा हुआ है शायद किसी भी लीग के अंदर. ये क्या चेंज था और ये क्यों था? I don't think it was because we wanted to bring like specifically female coaches. It was just because Ali has previously worked with these specific coaches in different capacities. So he made up his mind that whenever he gets to be the head of a franchise, he will make sure that these people who have come up from the grassroots level get the chance to coach in a franchise league. I think very well said. Ali, I would like to ask you, what is your say on this pick? When we were looking at our team and the performance over the past 4 years, we noticed that in power play bowling, we had a hole. So we wanted to prioritize that with our first pick, and David Willey as a left-arm power play specialist just made sense. Makes sense. All right. Thank you so much, Ali. And we are ready with the announcement from Karachi Kings के platinum category में उन्होंने किसको pick किया है? Salman Iqbal साहब, please, if you can share with us. Karachi King has picked Kieron Pollard. All right, Kieron Pollard. West Indies all-rounder Kieron Pollard has been picked. You were mentioning his name as well, Adnan. You know what he brings to the table, apart from the fact that he can hit a few. He's also one of the safest fielders around. We've seen him take some wonderful catches in the deep, and he's always a valuable addition in any kind of league. ठीक है जी, अब चलते हैं इस तरफ. कोयटा ग्लैडिएटर्स का सलमान टाइम साहब. शुरू होता है अब. आपकी टीम में काफ़ी चेंजेस आई हैं. The last 2 seasons wasn't that great for you. So ये changes, कोई ख़ास वजह? Coach, management सब? New management team, new decisions. The boys have made the decision कि भाई अब changes आनी चाहिए टीम के अंदर. और Amir and Imad have been with us for a long time. Babar also. तो नई टीम आई, नई मैनेजमेंट टीम आई, नए कोच आए. They took a decision कि we need to have a change. So I said, fine, let's go for it. Why Kieron Pollard? Why Kieron Pollard? Heather, I think you should answer that. Well, my answer would be why not? He's probably the biggest name in T20 cricket, and he gives you the stability at the number 5, number 6 slot, which can be a game changer in a tournament like PSL. So Kieron Pollard, he has a history with Karachi. Karachi Kings is very close to his heart. Simo has worked with him in great detail. So I think it's a lot of experience. How difficult is for you to And retain? plus you chose Kieron Pollard for us. I did. I should be sitting there then. So why do you think that is so hard to retain some players and let go of your captain? See, what happens is the retention policies change every year. So what happens is, like, Kieron Pollard used to play with Karachi Kings, and we had to let him go because of the retention policies. So things change in the complication of draft. It's a very difficult thing to understand. हमारी audience, हमारी fan ये समझ नहीं सकती कि जितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है कि RTM करना पड़ता है, उसके बाद पे picks पे जाना पड़ता है. And there's a whole algorithm that you have to sit down and make a decision. And plus, you need to have players for that particular position. So, like we said, we need a player 5, number 5. So Pollard was the best pick that we could get for. I think you've picked the right player. Thank you. All right, thank you so much, Salman Iqbal. We are ready with the announcement from Quetta Gladiators. They have decided who they want in the platinum category. Nadeem Umar Sahab, अगर आप announce करना चाहें कि कौन सा player आपने platinum category में pick किया है? Anji, we've picked Sherfin Rutherford from the West Indies. I don't know. Sherfin Rutherford from Quetta Gladiators. पहले भी हम देख चुके हैं इनको in the HBL PSL. We know his hitting ability and the fact that he can contribute in that lower middle order. So congratulations to Quetta Gladiators. अगली pick है पेशावर ज़ल्मी की. पेशावर ज़ल्मी, आपका टाइम शुरू होता है अब. जी नदीम भाई, आपने भी बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस की हैं अपनी टीम में, और आपका वो प्लेयर जो मेरे ख्याल में PSL में बड़े अच्छे लेवल पे खेल चुके हैं और अच्छा खेल सकते हैं, उनको आपने कोच बना दिया है.
जी. So what is the reason for this? And then I'll ask why this pick. आई थिंक मोइन भाई से तो 8 साल से कह रहा हूँ खेल रहे हैं, लेकिन वो नहीं खेल रहे. बट जो हमारे नए कोच हैं शेन वॉटसन, आई थिंक वो भी अभी खेल सकते हैं. बिल्कुल. तो हमारे कोचेज हमेशा they've been young guys. But on a serious note, I think Shane brings a lot of promise. He's been with the franchise for a very long time. Similarly, Moin Bhai is now heading Quetta Gladiators. His word is the final word. But with the inclusion of Shane Watson, I think the team is very comfortable with him. And overall, he brings that Aussie, mentality of going all out the way they play. So that is the basic thing that we had in mind when we chose him. And what about this player you chose? Sheffin Rutherford. I think we needed a good hitter, which was a good finisher. We didn't, last year also, the run rate that we had at 4-5 was not very good, but I think with Riley and Sheffin Rutherford, I think we'll have a good combination and they're good finishers. So we're very lucky. Peshawar didn't red flag us. And thank you so much for that. They gave us their player to us. So we were really grateful to them. Thank you so much. Thank you Thank you so much, Nadeem Saab. And now it's time to hear from Peshawar Zalmi. Mohammad Akram वहाँ पे मौजूद हैं. जी बताएं, बड़ी जल्दी आपने डिसाइड किया आपको कौन चाहिए, तो इनफैक्ट पास हो गया माइक, आप ही बता दें फिर जी. मोहम्मद हारिस साहब, अफगानिस्तान. लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर नूर अहमद को पिक किया गया है. ही फ्रॉम अफगानिस्तान. बहुत तंग किया था पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में. जो पाकिस्तान को तंग करता है वर्ल्ड कप में, फ्रेंचाइज ओनर्स उनको फौरन जो है पकड़ लेते हैं. ऑल राइट, अब वक्त आ गया है वापस कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ जाने का. कोयटा, आप का टाइम शुरू होता है अब. पहले तो मोहम्मद अकरम साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. आई मीन यू हैड द सेम बॉलिंग स्टाइल व्हाट माइकल होल्डिंग हैड. Very smooth runner, very smooth action. I was a big fan of you, and I'm still a very big fan of you. Thank you. Why this pick? हमें स्पिनर की ज़रूरत थी. पिछले साल भी हम लाइक कर रहे थे क्वालिटी स्पिनर. और नूर अहमद, जिस तरह अभी जैनब ने कहा कि वर्ल्ड कप में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की उसने, और ओवरऑल इज़ इन गुड निक, इज़ अवेलेबल. सो हम इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहते थे. सिंस स्पिनर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है, क्वालिटी स्पिनर्स इस ड्राफ्ट में, तो ये एक वजह है. अच्छा, आपने कोई चेंजेस भी नहीं की कि आप अपनी टीम से बहुत खुश हैं, या ट्रेड से भी आप अपनी खुश हैं कि नहीं है? पूरी तरह खुश हैं. पूरी तरह हर चीज़ से खुश हैं. कोई ट्रेड नहीं किया आपने? ज़रूरत नहीं पड़ी. आपकी हमेशा अब आप बैटर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. एनी पर्टिकुलर रीज़न फॉर दिस? नहीं, आपको पूरी टीम बनाने के लिए बॉलर्स की भी ज़रूरत होगी, और जब ये सारी टीम बनेगी तो आपको काफ़ी सारे बॉलर्स भी नज़र आएंगे. अच्छा, तो हम ये चेंजेस देखेंगे इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा मोस्ट प्रॉब्ली शायद आपकी तरफ से बैटर्स के साथ बॉलर्स भी अब आएंगे, बिकॉज योर फर्स्ट पिक इज़ अ बॉलर एंड अ वेरी फाइन बॉलर टू. थैंक यू. थैंक यू. All right, we are ready with the announcement from Quetta Gladiators. You heard it from Nadeem Umar. अगर मोइन खान साहब अनाउंस करना चाहें कि क्या पिक है उनकी इस कैटेगरी में? नहीं, इसको मैं ही अनाउंस करूँगा. चलें, आप ही कर लें. हमारा एक शेर वहाँ बैठा हुआ है, और हमने एक और शेर को लिया है, मोहम्मद आमिर को. मोहम्मद आमिर. मोहम्मद आमिर needs no introduction whatsoever. यहाँ से वो उड़ते उड़ते यहाँ इस पार आ गए हैं. His contributions in left arm swing, everyone is aware of that, and he's been doing well in franchise cricket. So congratulations to you, Quetta Gladiators, on securing Mohammad Amir. Right, अब चलते हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ. लाहौर कलंदर्स, आपका वक्त शुरू होता है अब. जी, बड़ी पिक ली है आपने, और ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? थोड़ा सा तो मैंने बता ही दिया आपको, बट मैंने एक शेर का जिक्र किया, वहाँ दो बैठे हुए हैं. वहाँ तो दो बैठे हुए हैं, बिल्कुल. And I think we, as QG, miss them a lot. But I think with Mohammad Amir coming in, he's been with us
कराची किंग्स से वो खेले एंड आई थिंक ही परफॉर्म्ड वेल और वो हमारे ग्रेड 2 में भी व्हेन ही वाज देयर इन द बिगिनिंग वी पिक्ड हिम एंड आई थिंक एक नसीम के जाने से फ़र्क आया है सो आई थिंक वी नीड एन एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर a new ball bowler and a death bowler. So Amir has been doing well all around. So I think he would be a great asset for QG. Thank you so much. Thank you so much, नदीम साहब. आतिफ राना साहब भी रेडी हैं. उनके मुंह पे एक बहुत बड़ी स्माइल है. तो बता दें इस स्माइल के पीछे क्या राज है? कौन सा प्लेयर पिक किया जिसने आपको इतनी खुशी दी है? प्लेयर तो ऑब्वियसली एक ही है लेकिन चूंकि लोग लंबी लंबी छोड़ते हैं तो आके भाई ने कहा हम भी एक प्लेयर छोड़ के देखते हैं. none other than obviously फखर कलंदर और फखर पाकिस्तान फखर जमान. All right, Fakhar Zaman comes back. Fakhar Zaman comes back to Lahore Qalandars. No surprises there because he's been associated with Lahore Qalandars from the start. Everybody's aware of what he is capable of at the top. It's now back to the studios. Sikandar, you can take over with Arooj and Azhar Ali. Thank you so much, Zainab and Adnan. Here we are now, without wasting any time, because थोड़ी देर में वापस बुला लेंगे हमें. In our studios right now, I've got someone who we are very happy to see back in the whole system. Ali Tareen alongside me. Ali, firstly, welcome back. Thank you, Sikandar. Good to be back. Multan Sultan, we were just discussing a while ago. आप बैठे थे तो हमने कहा कि बहुत brave decisions हैं. Overall, if we look at your retentions, then we look at the back scene, जहाँ पे आपने must be a tough call to let Andy go. Then Abdur Rahman, of course, has been a part of your system. Just tell me the whole idea, the changes that you've made. Where are you looking in the next 3 or 4 months into the franchise? So we've taken over Multan after a very, very successful legacy built by my uncle, Alamgir Tareen. So the past 4 years, they've been the team with the highest win rate at 64%, 3 finals in 3 years. So huge, huge shoes to fill. But we're going to try our best to carry on that legacy of success. In terms of changes we've made, again, every team goes through changes, especially after a 4 or 5 year period of success. And we're all about empowering not only players, but also coaches and management. So Andy Flower has been an amazing coach for us the past few years. But Abdur Rahman has been the assistant coach for at least 5 years. And this we felt was the right time for him to step up and become our head coach. So you've given Abdur Rahman, of course, the lead. He's the head coach, right? And also you've included some bowling coaches, spin coaches from outside. And of course, you talk about Alex Hartley. Tell me the decision behind that. So 5 years ago, we started working with the development camps in our academy. So we got Ian Pont, who's a very famous fast bowling coach. So he came into our academy and he brought Catherine Dalton, his assistant, with him. And I knew who she was because he had mentioned her extensively in his book, and she did all the demonstrations. So when she came in, within a few days, the players would all go to Ian first for advice. They started going to Catherine because she was giving them so much value in terms of technical coaching that I just saw the respect they have for her and how much of a positive impact she's having in a very short time frame. They came back again a few years later, and it was the same thing again. Catherine was taking the lead in the camp and helping the bowlers, not only from Multan Sultan, but from other PSL teams as well. So I knew that if I ever need a technical fast bowling coach in any capacity, it was going to be Catherine. So when the Multan Sultan came back, Catherine was the first call I made. हमने support staff जब hire कर रहे थे तो हमने कहा हमें इनको retain कर लेंगे इनको ना ले लें integral part है हमारे commentary box. Anything that you feel when you see all I'm talking about the support staff जो इन्होंने select किए हैं लोगों को. How do you see that as an impact on not just HBL PSL but the way Pakistan cricket has been? I mean, I was mentioning it to you before in the previous segment that we had that it's brave and bold decisions, but it's relevant. It's strategic with some practical sense to it. It's not just because के Ali को कुछ करना है इसलिए हम कर देते हैं. I just feel it's with the modern evolving game as well. You bring relevant players in, like he's used the word respect, but that comes with the technical knowledge, not because just because वो बड़ा नाम है इसलिए नहीं, it's because technical knowledge साथ ज़रूरी है. तो जो इनका backroom staff है, not just Catherine and Alexandra Hartley, but I think even the others that they bring are all relevant people, fresher, younger faces, people who want to sort of do stuff and build from there. So I think just as a general evolution, Ali, just want to ask you, where does that vision come from? It has to be innate from somewhere. Is it just you as a personality? Is it a group of people? Because it is very forthright. No, I think we've always, we haven't been afraid to take decisions that challenge the norm. So whether it's business, whether it's cricket, what we're thinking is what is the objective, what is the
what is the overarching vision, where do we want to go, how do we want to use this platform. So when taking all of those things into account, we were very happy to have a local core of players as well as a local core of coaches, and then supplement them with experienced, dynamic overseas players or coaches. Yeah, it's fantastic. So yeah, Aline, we let you go out there. So आपके गैर मौजूदगी में गलत चीज़ें ना कर लें वो लोग. Thank you so much for joining us. Thank you guys. And it's time for us to head outside and join Zainab and Adnan. All right, let's continue. ड्राफ्ट का सिलसिला जारी रखते हैं. लाहौर कलंदर्स की एक बार फिर से बारी है और कलंदर्स आपका टाइम शुरू होता है अब. जी आदिल साहब, मैं बड़ा आपकी टीम को बड़ा फॉलो करता हूँ. आप कुछ ना कुछ एक नई चीज़ या नया बॉलर या बैट्समैन लेकर आते हैं. क्या बात है कि इस दफ़ा फिर आपने उनको प्लेटिनम में पिक कर लिया जब आप रिटेन कर सकते थे? देखिए ऑब्वियसली पहले हम थे वो जिस तरह सलमान नसीर ने कहा कि हम दिल से करते थे, फिर कलंदर फैमिली बने और अब कलंदर ब्रदर बने हैं. तो ऑब्वियसली आपके जो फ़खर ज़मान, मेरा ख्याल है कि जितने बड़े प्लेयर हैं उससे बड़े इंसान भी हैं और टीम की ज़रूरत थी कि हम 8 की जगह रिटेंशन हमारी ऐसी पॉलिसी थी कि हम फ़खर को अगर रिलीज़ करते तो हमारी टीम का बेनिफिट होता था. और फ़खर ने ग्रेसफुली उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कलंदर फैमिली है और एनीथिंग फॉर फैमिली. इस दफ़ा कोई नया सरप्राइज? नई ट्रॉफी. जी चलिए हम दोबारा से रेडी हैं. कलंदर्स के पास वापस जाएंगे क्योंकि उनकी पिक थी. तो आकिब जावेद साहब, चलें आप अनाउंस कर दें इस दफ़ा कौन सा प्लेयर है जो पिक किया लाहौर कलंदर्स में. Rassi Dusman from South Africa. Van der Dusen has been picked. He's all the way coming from South Africa to the HBL PSL. Again, somebody who can score a lot of runs. You can look at that strike rate and a handy batter in the HBL PSL, hopefully. अगली जो पिक है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की और इस्लामाबाद यूनाइटेड आपका वक्त शुरू होता है अब. सलाम आकिब भाई. आकिब भाई, पहले तो ये बताइए कि कहा यह जाता है कि बॉलर्स जो होते हैं वो टूर्नामेंट्स को जिताते हैं, बैट्समैन एक मैच को जिताता है. इस दफ़ा आपने बैटर्स लिया है, इसकी कोई रीज़न? देखिए आपकी जो टीम कॉम्पोजिशन है आपने उसको जेन में रखना होता है कि आपके गैप्स कौन से हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका कोर ग्रुप. वो शुक्र है 3-4 साल से बन गया है. उसके बाद नया ड्राफ्ट आता है तो उसमें आप यू कैन हैव ओनली 8 प्लेयर्स और ये फ़खर को लेके 9 पूरे हो गए. देन यू लुकिंग फॉर द गैप्स कि आपको फाइनल जो आपकी फर्स्ट 11 है उसमें कौन सी ऑप्शंस आपकी टीम के लिए सूट करती है. ज़ैनब, मैं एक बात बताता चलूँ, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन था. इनसे ज़्यादा बॉलिंग से ज़्यादा मैं इनके बाल देखता था. राइट. जिस तरीके से ये भागते हुए आते थे, बाल कभी लेफ़्ट कभी राइट, इसी तरीके से इनकी बॉल्स भी ऐसी होती थी, लेफ़्ट कभी राइट. तो इस दफ़ा भी कुछ ऐसा बॉलर देखेंगे हम? ये आज से पहले ये जुमला लड़कियों से सुना था, पहले मर्द है. आई डोंट स्विंग बोथ वेज, बट बॉल मुझे पसंद है बोथ वेज. चले बालों की बातें मेरे ख्याल है बाद में होती रहेंगी कि क्या राज है बालों के पीछे. बट वी आर रेडी विद इस्लामाबाद यूनाइटेड. रहानुल हक कैन अनाउंस कि किस प्लेयर को आपने पिक किया है इस कैटेगरी में. So we've used a wild card to pick Jordan Cox in the platinum round. All right. Wicket-keeper batter Jordan Cox. Wild card has been exercised by Islamabad United. कुछ नाम इधर भी चेंज हुए हैं. I'm really amused by these baseball jerseys that you're all wearing. बिल्कुल baseball style. Everybody's got a smile on their face. तो उसके बारे में भी मेरा ख्याल है अदनान आप ज़रूर पूछना. लेकिन मैं पहले अगली पिक जो है वो अनाउंस कर दूं. अगली पिक है कराची किंग्स की. कराची किंग्स आपका टाइम शुरू होता है अब. So wicket-keeper batter, why you have chosen him? I think Mike is the best man to answer this question. He's our new head coach this year. So over to Mike. Thank you. Yeah, obviously Jordan Cox, he does keep wickets, but primarily he's picked as a middle order batter for us. We've obviously got a very talented middle order domestic squad, so we wanted somebody who would complement those skills.
rather than somebody who would come in and try and dictate the nature of our lineup. So he's got real flexibility in terms of being able to bat anywhere between anywhere in the top 6 really. He's obviously in incredibly good form at the moment, as he has been for the last 12 months, so a real talent. So Michelson, first of all, welcome to this team. I think choosing a wicket-keeper batter is always a good pick because, you know, you're picking two things for one. So what strategy you have for this particular pick? Yeah, well, obviously we've got Azam Khan, who's our #1 keeper, so it's a matter of having a backup keeper within your squad and someone who's able to make the playing 11 from a batting point of view as well. So he's also probably one of the better fielders in the world. So, look, we think he's a dynamic player. We think he's going to add tremendously to our squad. Well, thank you so much. Thank you so much, Mike, and welcome to the HBL PSL. It's great to have you here. We're also ready with the next announcement from Karachi Kings. If Salman Iqbal Saab, if you can announce who you've gone for. My son, Shayan, is going to announce it. All right, Shayan. So we've gone with fast bowling all-rounder Daniel Sams. Fast bowling all-rounder Daniel Sams has been picked by Karachi Kings. He's got a lot of pace and he can hit a few as well. That strike rate tells you the story there. Okay, moving forward. Karachi Kings, दोबारा से आपका time. Your time starts now. Naseem Saab, Naseem Shah Saab, Lala Sange. हाँ. शोल्डर कैसा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है. कैसा लग रहा है कि आप अब दूसरी टीम में आ गए हैं? अच्छा लग रहा है. क्वेटा से भी 3-4 साल खेल के बड़ा एंजॉय किया और सारों ने बड़ा एक फैमिली की तरह वहाँ पे भी मैंने टाइम स्पेंड किया और अच्छी मेमोरीज़ है वहाँ के भी और यहाँ पे आके भी बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि एक फैमिली की तरह इन्होंने एक इन्वायरमेंट जो है ना वो बनाया हुआ है और सारे ज़बरदस्त लोग हैं तो यहाँ एंजॉय कर. न्यू फ्रेंचाइज, न्यू टीम्स, क्या आपको न्यू फ्रेंचाइज है आपके लिए, न्यू ड्रीम्स भी होंगी? देखिए बिल्कुल लाइफ में चीज़ें चेंज होती रहती हैं और देखिए नया टीम है और जितना मैंने सुना इस्लामाबाद के बारे में कि बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट और सारी चीज़ें सारी टीमों की होती है लेकिन अच्छा लग रहा है और नया टीम है नया एक्सपीरियंस है तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे. Well done. All right. Are we ready with the Karachi Kings announcement? सलमान इकबाल साहब, एक बार फिर से माइक आपके हाथ में, इस दफ़ा आप अनाउंस कर दें. जी हमने अपना एक शेर उनको दे दिया कोयटा को और उनका शेर हमने ले लिया. मोहम्मद नवाज. Mohammad Nawaz has been picked by Karachi Kings. You've seen what he can do with the ball, especially in these conditions. A former gladiator has now joined Karachi Kings. So congratulations to you, Karachi Kings, on getting Mohammad Nawaz, and that pretty much wraps up the platinum category round. It's back to you guys in the studio, जहाँ पे आपको entertain करेंगे सिकंदर बख्त, अरूज मुमताज, and Azhar Ali. 11 ही रह गए हैं. नहीं 11 बहुत बड़ा. All right, well, thank you so much, Zainab. Here we are once again, and we are quickly trying to speak to every important person out here. जो भी यहाँ आ रहे हैं, of course, चल रहा है HBL PSL का ड्राफ्ट. अगले ओनर जो हमारे साथ है वो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं. बहुत ही नफीस इंसान है. जब ये फ्रेंचाइजेस शुरू हुई थी तो मैं ये बता सकता हूँ कि of course everyone started off fresh, but इनका ताल्लुक क्रिकेट से बहुत पुराना है. And he'll tell you himself. नदीम उमर साहब हमारे साथ हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर हैं, and of course क्रिकेट को भी ओन करते हैं किसी हद तक. कैसे हैं आप? Thank you, Sikandar, for your kind words. Thank you. All well, alhamdulillah. मैं अभी थोड़ी देर पहले अली तरीन से बात करता. आपकी भी फ्रेंचाइज हुआ है जो आपने इस बार काफ़ी ब्रेव डिसीजंस किए हैं और कुछ आपने थोड़ा सा शफलिंग की है. कुछ टफ कॉल्स इसलिए कहूँगा, नसीम को जाने देना, नवाज बड़े शुरू से आपके साथ थे. तो कुछ बताइए इन फैसलों के पीछे, क्योंकि आप तो क्रिकेट को बड़े क्लोजली देखते हैं बाउंड्री लाइन पे जब मैच हो रहा होता है. नहीं, एक्चुअली मसला सिर्फ ये था कि जो रिटेंशंस हैं बहुत मुश्किल काम है. आई थिंक फॉर ऑल फ्रेंचाइजेज, नॉट ओनली फॉर अस. वो जो आपके 2-3 फेवरेट्स हैं, यू लेट देम गो. कुछ कभी ऐसा भी होता है, सम आर नॉट हैप्पी टू प्ले, यू नो, दे हैव सम अदर गोल्स, उनको और आगे जाना होता है. अनफॉर्चुनेटली जैसे आज़म
Khan आप देख रहे हैं ना, we had to release him because Sarfaraz was our keeper. But product हमारा ही रहेगा wherever Naseem goes or wherever Azam goes. They've played for us from the beginning. Azam to my club ka, as you know, and we picked him when nobody wanted to, and now mashallah he's grown big. So as a, you know, जैसा आपने कहा ना, 35 years of playing cricket and following cricket and owning teams. So I feel so happy कि हमारी जितनी franchises हैं, you say 6 of them, we all have 1 or 2 players from our club playing for them. So it's overall, I think cricket is getting healthier. These players are going, expressing themselves. So it's good. हमने देखा सफर क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जब यूएई में चल रहा था एचबीएल जी, पीएसएल, तो आप लोग तो आंखें बंद करके प्लेऑफ्स में तो आते ही आते थे। यहाँ आके थोड़ा सा सिलसिला नीचे आया। बट उरूज मैं ये बताऊं कि तमाम फ्रेंचाइजीज जो हैं, ऑफ कोर्स उनका अपना एक मंत्र है। इनके जो नजर आता है थोड़े डिस्टेंस से इनकी फ्रेंचाइज के, इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड प्लेस वेयर दे वैल्यू not just cricketers but the relation that they have, and I guess that is why lots of cricketers have stuck with them for the longest time. I think that transcends from Nadeem Saab and his personality. I think it's like, you know, father figure, keeping everyone under one umbrella, and relations are important. I mean, in any sort of business, and we are in we are in this business, ये relation बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि cricketer पीछे इंसान है. So I think this time round मुश्किल I'm sure ज़रूर होगा to let go of some big names, but I'm really they really look strong with the aid that they have at the moment, which is going to be quite interesting. मैं कहता हूँ, मैंने इनको गुस्से में नहीं देखा कभी। तो मैं कहता हूँ कि जब आपको कभी कभार होता है कि फादर फिगर, तो हो सकता है जब जाते होंगे बैकएंड पे तो वहाँ अच्छी क्लास लेते होंगे, बट आप ऐसा क्रिकेट फैन भी, मैंने आपको देखा है मैचेस जब चल रहे होते हैं आपकी टीम के, तो आप हिलते नहीं अपनी जगह से, और 4-5 लोग आपके साथ फंस जाते हैं वहीं पे। You're right. Yeah, I think superstition जो I think वही पुरानी, we are following that, एक हो गई है, you know, when you are there for such a long run, कि जो अपनी जगह पे बैठा हुआ है बैठा रहे. उरूज ने अभी बड़ी अच्छी बात करी कि, you know, relationships, they're not meant to last just a few years. It's over a period of time. आप देखें Kevin Peterson, such a big player, and आज तक we are in contact because he had a lovely time with us. Even Shane Watson, all these big players, they had a good time with QG. और मैं आपको बताऊं कि ये जो प्लेयर्स काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं क्वेटा, अब जैसे सरफराज को मैं किसी और क्रिकेट में इमेजिन नहीं कर सकता, समझ नहीं आएगा। एक रिलेशन आपका सरफराज के साथ, एक भरोसा सरफराज के साथ आपका बड़ा रहा है, एंड ही इज़ अ वेरी गुड मैन मैनेजमेंट प्लेयर, ऑफ कोर्स अ वेरी गुड प्लेयर हिमसेल्फ। ये थोड़ा सा बताइए कि हाउ यू सीन हिम फ्रॉम हिज यंग डेज, अंडर 19 व्हेन ही रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान और जीतते हुए आ रहे हैं। जी जी, नहीं, आई थिंक सरफराज की जर्नी इज ब्लेस्ड इन द सेम टाइम दैट, you know, it was unfortunate at the end the way he was, you know, let go of, but I still believe कि उसमें ना वो एक वो होती है अपनाइयत, because I've seen him when he was just 14 years old और वो my club से खेलता था, तो he had that capacity. अब आप rating him as a captain would be difficult, but I would say he was a very blessed and a very lucky captain. हम आपको ज्यादा देर याद नहीं रखेंगे। एक आखिरी सवाल है, क्या इस बार क्या आपका प्लान है, क्या कोर है आपकी टीम का, कोई नया मंत्र है, या आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे ओरिजिनलिटी वही रहेगी बट कुछ शायद फेसेस चेंज होंगे? हम मंत्र तो हमेशा से रहा कि किसी तरह जीते हैं, I mean every team has that mantra, but there's some hurdles that unforeseen. अगर आप मुझसे कहना कि क्लब को खिलाओ, if you give me my club, Pakistan Cricket Club, we can beat any team hands down. Why? Because they know their place. We know कि यार ये वो 4 regular bowlers हैं, ये दो, अब तो यहाँ there is sort of a lottery, you know, because at the top we don't have that platinum pick में those regular 200 good guys. You just have these 4 to choose from. अब वो आप जब अमेरिकन फुटबॉल वगैरह देखते हैं उधर तो you have a big roster. Here the roster is so small, so it's a matter of luck also. A quick one, Shane Watson, आपके सब प्रोलिफिक सबसे बड़े स्कोरर रहे आपके लिए क्वेटा ग्लैडियर्स में, आपने इस बार उनको कोचिंग दी है, ये फैसला भी एक बड़ा डिफरेंट था, सरप्राइजिंग था. How do you just quickly tell us about that? हाँ, Shane Watson, you know that Aussie factor जो सब कहते हैं, fearless cricket जो मैंने भी प्रमोट की और पसंद है, तो and Shane Watson has been with us for such a long time, और उसको क्वेटा आप यकीन करें IPL से ज़्यादा वो इसको फॉलो करता है, and he's been with us. So I think वो जो लेके आएगा ना, hopefully वो जो है ना कि Aussie एक फ्लेयर है, वो that we are missing, probably he will inject that. चलिए, very good.
आपको you. बेस्ट ऑफ लक बाकी पिक्स Thank में एंड ऑफ कोर्स आगे जाके जब सीजन स्टार्ट हो जाएगा कुछ महीने बाद लवली मीटिंग यू ऑलवेज प्लेजर Jazakallah. Thank you so much. Thank you. And now time for us to head out to the stage, main stage where Zainab and Adnan have more surprises for us. All right, that was the platinum category for you. Moving forward, we are now looking at the diamond category picks, which should be quite interesting to see कि कौन सा player किसके पास जाता है. And we've got Multan Sultans up first, who are ready with, I suppose, thinking about kisko lena hai. Hijab, all smiles there. Multan, your time starts now. All smiles there. Let's go back to Karachi Kings. Wonderful addition in the form of Phil Simmons. Phil, a very warm welcome to you in the HBL PSL. It's great to have you on board. I'm sure you've got a wealth of experience that you can bring forward to Karachi Kings. But let's talk about your last pick, Mohammad Nawaz. A gladiator first, and now moving on to Karachi Kings. What was the thought process behind having him on board, just in terms of your team combination? Yeah, first of all, it's great to be here as part of this draft and be part of the HBL PSL. For him, we needed someone that, as the term goes, all-rounder. We know that he can come in at any point and change the game with the bat, but his bowling is always been at the top, and especially he can also bowl in the power play for us. So he fits an all-rounder in the true form. All right, thank you so much. I hope it works out well for Karachi Kings, but we are ready with the announcement. Abdur Rahman Saab, if you can please announce who you've picked for Multan Sultan. Gigi, go ahead. So Zainab, our head of strategy, Nathan Lehman, will announce the diamond pick. Sure, sure. Our diamond round pick is David Malan. David Milan from England has made it to Multan Sultans. He's been quite prolific in this T20 format and been consistent in making those runs. Perhaps that's what Multan Sultans is looking at, consistency. I will be coming back with that question, but Peshawar Zalmi, aapki hai agli pick aur aapka time shuru hota hai ab. All right, Multan Sultans, Abdur Rahman bhi hai, Hijab bhi hai. Whoever is, the floor is all yours in terms of answering. But just in terms of your strategy, David Milan, we've seen what he's done in franchise cricket around the world, what he brings to the table. Any particular reason of picking him in the HBL PSL draft? So David obviously is a hugely experienced batsman. He's a former #1 ranked T20 batsman in the world. He gives us a left-handed option at the top of the order. He's got a good record in Pakistan, and he's been in excellent form in the recent World Cup. Very batting heavy, Multan Sultans, lots of retentions as well. If you just look at the combination that you've got, what are you looking at going ahead in this draft? I mean, in terms of, are you looking at adding a spinner or a pacer? What's lacking so far in the squad that you're trying to make for the HBL PSL? Well, I mean, the retentions and the 2 picks so far, we have 3 seam bowlers and 3 spinners. So we're not as batting heavy as that might suggest. We've still got several picks left, and dependent on what the other franchises choose ahead of us, then we'll be looking to complement both our batting and our bowling lineups. All right, and just in terms of conditions, you know, there'll be different venues that are going to be used across Pakistan. Obviously, the strategy is going to be keeping those conditions in forward. We saw some really batting-dominated games in Pindi last year, flat tracks, but then there was some turn at offer at different venues. So when you're making a team, is that one of the things that a franchise is always looking at, keeping all the venues in mind? Yeah, it's nice to have a squad that gives you flexibility, and first in how you set up the side, and secondly, in terms of the strengths of the players within it on different services. So that's what we're trying to do with the squad, and in particular with our overseas contingent. All right, we are ready with the next announcement as well. So Peshawar Zalmi, if you would like to announce. Asif Ali.
आसिफ अली अब चले गए हैं पेशावर ज़ल्मी के पास. Remember, he was with Islamabad United as well, and we know what he can do with the bat. He's got that power hitting ability. He can hit those monstrous sixes which we've seen in the past as well. So congratulations Peshawar Zalmi for securing Asif Ali. And now we move on to Islamabad United once again, and आपका time शुरू होता है अब. जी मोहम्मद अकरम साहब, आसिफ अली देखा है सबने उनको, हमने इन द पास्ट भी देखा है, नेशनल लेवल पे भी उनकी परफॉर्मेंसेज रह चुकी हुई हैं. वाज दैट द मिसिंग लिंक पेशावर ज़ल्मी की जब आप टीम फॉर्म कर रहे थे कि कोई ऐसा प्लेयर हमारे पास भी हो हु कैन रियली सॉर्ट ऑफ गो आफ्टर द बॉलिंग एंड डोमिनेट द बॉलर्स? बिल्कुल ऐसा ही है. पाकिस्तान में देर आर वेरी फ्यू जो नंबर 6 और 7 के प्लेयर हैं, और 6 पे ये बहुत अच्छा खेलते हैं, और इन्होंने ऑब्वियसली इस्लामाबाद के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस दी, पाकिस्तान के लिए खेला. लेटली इज़ इन फॉर्म एज वेल, सो हम इनको मिस नहीं करना चाहते थे. स्पेशली बाबर आजम हमारे कैप्टन ने बड़ी ताकीद की थी कि आसिफ मुझे चाहिए, तो ही इज़ गॉट हिम. ठीक है. और जस्ट लाइक जिस तरह से आप लास्ट ईयर जो आपकी टीम कॉम्बिनेशन थी, कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने पिक किया हो कि हाँ शायद हमारी टीम में ये चीज़ लैकिंग थी, और दिस वाज द वन एस्पेक्ट दैट वाज मिसिंग? ऑब्वियसली यू field an 11 and you hope for the best, but there's always a learning that you take forward into the next year. So what's been that learning that you are utilizing in the PSL HBL PSL draft today? अगर आप देखें जब ड्राफ्ट ख़त्म होता है तो हर टीम सोच रही होती है कि कुछ ना कुछ स्टिल मिस हो रहा है. तो हम लोग एक्चुअली एक स्पिनर को मिस कर रहे थे, क्वालिटी स्पिनर को. पिछले तकरीबन 2 साल से कुछ पिक किए, वो इंजर्ड या उनके मुल्क से एनओसी नहीं मिला, लेकिन इस साल वी गॉट नूर, ये एक मिसिंग फैक्टर था, तो इस साल वो भी मिल गया. चलें आए, उम्मीद करते हैं जो भी प्लेयर्स आपको चाहिए आपको मिलते रहे. We are ready with the announcement from Islamabad United. Mike, if you can announce who you've gone for this time. Tammy Mills. Tamal Mills has been picked for Islamabad United. पहले भी हम इनको देख चुके हैं HBL PSL में. He's got all the variations in the world. He's a specialist in this particular format as well. अच्छा जी, कराची किंग्स अब आपकी बारी है. सो आपका टाइम शुरू होता है अब फॉर द डायमंड कैटेगरी. Mike, just on Tamal Mills, again somebody we've seen in franchise cricket around the world, has got everything in terms of variations and just so successful in this format. I mean, any particular reason why you went for Tamal Mills, looking at the combination of Islamabad United? Yeah, we were very keen to get a bowler who could bowl in all 3 phases. So obviously we've got Naseem Shah, we've got Imad Wazeem, we've got Rahman Reis who can all open the bowling. So, depending on who we go with, we need somebody, once again, that complements what we have from a domestic point of view. So Tamal obviously is very good through the middle and the back end as well. He can take the new ball if required or bowl on the power play, but highly experienced, and as I said, he complements what we currently have. What about Imad Waseem then? He's made a shift from Karachi Kings to Islamabad United, and you were talking about using bowlers in different stages. He's definitely somebody who can add value at the front and in the middle as well. Yeah, he is. Obviously highly experienced, gets the ball to drift, so the ability for him to have the new ball is important. Can take wickets in the power play, and obviously gives us that batting, left-handed batter through the middle. So, yeah, really pleased with what Imad brings to the squad. All right, thank you so much for your thoughts, Mike. We are ready with the announcement from Karachi Kings. Haider Azhar, जो हैं वो announce करेंगे. Who have you gone for, Haider? We've gone for Tim Seifert. Over 180 T20s have been played by Tim Seifert. He, again, somebody who specializes in this format, and he's got that all-round ability. Wicket keeping bhi kar lete hain, batting bhi kar lete hain. A valuable addition to Karachi Kings. All right, अगली पिक है लाहौर कलंदर्स की. कलंदर्स, आपका टाइम शुरू होता है अब. चले हैदर, आपके पास आते हैं. Tim Seifert has been the addition that we've seen from you guys. Karachi Kings की आप
इधर से इधर आ गए और आपने पूरी कराची किंग्स की शक्ल ही बदल दी है. Like we've got a lot of wonderful additions to the squad. You're looking to improve from last year as well. Let's talk about Tim Seifert. What was the thought process behind getting him on board for Karachi? Well, before that, I'd like to thank Mr. Salman Iqbal and Mr. Tariq Wasi for this opportunity. Fresh start for me. Tim Seifert, we were looking for a wicket-keeper batsman, ideally someone who can play in the top order. There were some other names as well, but we thought that the qualities that we were looking for, Tim Seifert fulfills them for us, and we're really, really looking forward to having him in the squad. I mean, I was asking Mohammad Akram this question as well, that when you move on to the next year, you obviously reflect and evaluate on what went wrong or what can we do differently, how can we improve. Anything in particular strategy-wise that you're looking at? You know, are you wanting to be batting heavy, pace bowler heavy, or just having the right balance? Zainab, this is a rebuilding year for us. So obviously everyone competes because they want to win. But our main aim is to provide the coaching staff and the captain with the best possible resources so that they can come in with a balanced squad. So I think right now all we're trying to do is making sure that we have all the right people for the right roles that we know that the captain and the coach would want. So that's the mantra for this year. New leadership as well. We're talking about changes. We're going to see a new captain with Karachi Kings. What can we expect from your new leader? Well, Shan is an experienced captain. He is from Karachi, so I know for a fact that personally it's a huge honor for him that he's representing his home city. And I think Karachi always wanted a captain who was a local boy. Best of luck to him because I know right now he has a really, really tough series. So it's baptism in fire for him. But we're really looking forward to seeing how Shan, gets along in the Karachi dressing room, how he leads it. And as far as his understanding of the game, obviously everyone is well aware of how well adapted he is to changing situations. And so we're really, really lucky to have Shan and have him lead the rebuild. All right, good luck with all the decisions that you're making, the new additions that you're making, Karachi Kings. Qalandars are ready to announce who they've got. Atif Rana Sahab, ya Akif Javed Sahab, whoever wants to go. Sahibzada Farhan. Wild card. साहिबजादा फरहान सेंचुरी मार चुके में हैं 450s भी आपने देखी होगी अभी नेशनल T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है ही इज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर द राइट रीजंस एंड ये टॉप ऑर्डर बड़े मज़े का लग रहा है अब लाहौर कलंदर्स का बिकॉज देव गॉट फ़खर जमान एंड देन देव गॉट साहिबजादा फरहान दैट्स समथिंग दैट वी ऑलवेज सी फ्रॉम कलंदर्स दैट दे ट्राई टू गेट ओपनर्स दैट कैन गेट देम ऑफ टू एन एक्सप्लोसिव स्टार्ट. All right, जी, this is the wrap up of the diamond category. Platinum category भी आपने देख ली, diamond category भी देख ली. अब अगली category की तरफ भी हम चलेंगे. But before that, let's head over to Sikandar Bakht. Thank you so much, Zainab, and exciting picks. One of them being, of course, we discussed here, Tim Seifert, and then Sahibzada Farhan just now by Lahore Qalandars. So lots of great picks coming up, some interesting picks also, and we are also trying our level best to get all the owners here in our studio ताकि उनसे हम जान सके कि वो करना क्या चाह रहे हैं, क्या उनकी फॉर्मेशंस हैं. अब जो मेरे पास आए हैं एक टीम के ओनर, उन्होंने तबाही मचाई हुई है पिछले 2 साल से और समझ नहीं आ रहा कि क्या उन्होंने घोल के पिलाया है अपने प्लेयर्स को कि अचानक वो पीछे पलट के देख ही नहीं रहे. आप समझ गए होंगे बिल्कुल. आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं. आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम. सिकंदर, तबाही जो है ना वो 2 साल से नहीं 8 साल से मचाई हुई है. 8 साल पहले नीचे मचा रहे थे, अब ऊपर मचा रहे हैं. ये हमने सबने देखा कि किस तरह से एक ग्रेजुअल राइज हुआ. शुरू में आप पे काफ़ी तनकीद भी हुई होगी कि उसी सेटअप के साथ जा रहे हैं, लेकिन जिस फोकस पे आप चले थे आपको यकीन था कि इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं, वो आएंगे और ज़रूर आएंगे. तो आप कितने श्योर थे, सच से बताएं? कितने श्योर थे? अजू भाई बैठे हैं हमारे साथ, हमारे पहले कप्तान लाहौर कलंदर्स की दागवेल डालने वाले. देखिए, जब पहला सीज़न था और हमारे पास जो इमर्जिंग कैटेगरी थी उसमें उतने
प्रॉमिसिंग उस तरह के कम्पेटिटिव क्रिकेटर्स नहीं थे और आपको पता है कि एक इमर्जिंग खेलना होता है। सो हमारे पास दो ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन ये थी कि जिस तरह भी बात हो रही थी कि हम दूसरों के प्लेयर तोड़ते अंडर द टेबल। दूसरी ये थी कि हम पाकिस्तान की यूथ पे बिलीव करते हैं और इस मुल्क में क्रिकेट रन्स इन द ब्लड, तो ये हो नहीं सकता कि जो इन्वायरमेंट है वहाँ टैलेंट ना हो। सो हमने दूसरा रूट लिया, हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आए और हमने कहा कि यार हम वो हीरे ढूंढते हैं, क्योंकि उस वक्त की मैनेजमेंट ने यही कहा कि पाकिस्तान में तो टैलेंट ख़त्म हो गया है, यहाँ पे है ही नहीं। सो फिर हम इस प्रोग्राम पे आए और जब लोग हमारी बैशिंग कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि सिर्फ इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे थे और उसके सम्राट आने में फिर टाइम लगता है। फिर आपने देखा कि इस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया को रीच आउट किया, हमारी टीम वहाँ पे डेवलपमेंट की टीम जाती थी, उसके बाद हमारा साउथ अफ्रीका से हुआ, इंग्लैंड से हुआ, नमीबिया से हुआ और अब जिम्बाब्वे क्रिकेट से भी हो गया। सो मकसद एक ही था कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है और ये साबित करना है कि ज़रा नम हो तो मट्टी बड़ी जरखे जैसा की। और फिर आप देखें कि उसमें कलंदर से पहले चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर जमान की सूरत में फाइनल में हमें जीत मिली इंडिया के खिलाफ। शाहीन और हारिस की तवाक्कुन बॉलिंग की बदौलत हमें फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप T20 में हमने इंडिया को शिकस्त दी। तो वो हीरे जो लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से सामने आए, न सिर्फ उन्होंने कलंदर्स को बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल, इनकी जो बॉलिंग अटैक है अजहर, इनकी टीम का, उसको वर्ल्ड कप में भेजने तो शायद वो वहाँ भी कुछ कर ही जाएंगे, बिकॉज बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस है इनके पास। आपने क्योंकि कप्तान रहे हैं आप इनके, तो ऑफ कोर्स आपका तो एक और अलग किस्म का रिलेशन रहा है, ड्रेसिंग रूम का भी रहा है, एनवायरनमेंट का भी, किस तरह से इनकी ग्रोथ हुई है एज अ फ्रेंचाइज और आज जहाँ पे हैं। तो हाउ हैव यू सीन इट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क हिम? नहीं, ऑब्वियसली मैं लाहौर कलंदर का हिस्सा भी रहा हूँ और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मैंने लाहौर कलंदर पे किया है और उन्होंने आते हुए ने सुना भी होगा काफ़ी दफ़ा। लेकिन ये है कि इन्होंने कंसिस्टेंट रहे अपने जो उन्होंने विजन रखा था। एक चीज़ उनकी बहुत ज़बरदस्त रही थ्रू आउट लाइक 4-5 ईयर्स ऑफ टफ जिसमें ये बिल्कुल अगले राउंड में भी नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन इनका एक ही विजन था कि इन्होंने जो यंग प्लेयर्स हैं उन पे इन्वेस्ट किया है। काफ़ी लोगों ने कहा कि ये बड़ा मार्केटिंग चीज़ है, ये है वो है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ से बाहर की जो जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने अपनी डिसीजन मेकिंग पे डैमेज नहीं होने दिया उसको और उस पर परसिस्टेंट रहे और अब उनके जो फ्रूट्स हैं जो वो तो है, मिल रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे भी बहुत सारे नाम हैं, हारिस रऊफ सब जानते हैं, ताहिर बेग अभी एक नाम आए हैं, आगे भी बहुत सारे देखेंगे। हम आतिफ साहब को कहते हैं कि वो जाके अपनी टीम को ज्वाइन करें, मैं सबको कहता हूँ ये ना पीछे कुछ और ही उठा लें। हैट्रिक का प्लान है पूरा? नहीं, 4 है। 4 तो बाकी 4 दफा नहीं, देखिए बैलेंस आउट भी तो करना है ना, नीचे से 4 दफा थे, ऊपर आके भी 4 तो बैलेंस आउट हो जाएगा। बाकी 5 को फिर घर भेज नहीं, कंपेटिटिव क्रिकेट होगी, कलंदर्स कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बेस्ट ऑफ लक टू यू विद द ड्राफ्ट एंड द सीजन। All right, Zainab, it's time for us to come to you and Adnan and tell us what's happening out there. Thank you, Sikandar. What's happening is that we are moving on to the next category of the evening, which is the gold category. और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 picks हैं। बहुत सी teams हैं जिन्होंने already retentions की हैं, but we can move forward with the first pick of the evening for the gold category, and that belongs to Peshawar Zalmi. Peshawar Zalmi, आपका time शुरू होता है अब। जी, लाहौर कलंदर्स के कोई यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं बात करने के लिए? Is there anyone there? I'm trying to spot Akib Javed, but I can't really find him. साहिबजादा फरहान के बारे में बात करने के लिए कोई मौजूद है लाहौर कलंदर से? Yes, Sahibzada Farhan we have been seeing that he has been the top performer for the last couple of years. And of course, we also need somebody at the top order who can perform well in the combination. So that's why Sahibzada Farhan was our pick. Highest run getter twice in a row in the national T20, Sahibzada Farhan. Stats तो जो है उनको बहुत back कर रहे हैं, लेकिन you've also got somebody like Fakhar Zaman in the squad. So ये बड़ी एक interesting combination बन रही है, just in terms of वो जो कहते हैं ना एक explosive start देने के लिए। जी हाँ, stability भी दरकार होती है explosiveness के साथ। हम समझते हैं कि he has that average that could cover up that thing as well. And of course, इस season में he's been playing like 178 strike rate के साथ, so he can add up. I hope कि he has come up with a good changes in his batting, कुछ improvement नज़र आई है हमें,
So that's why I think he's in the PSL for Lahore Qalandars. ओवरऑल अगर देखा जाए लाहौर कलंदर्स की जो स्ट्रैटेजी हमने देखी है ओवर द years which has been it's worked for them in the last few years that you're very bowler heavy. You look at the pace bowlers that you've got, local अच्छे pace bowlers हैं, फिर आपके पास spinners अच्छे आते हैं, राशिद खान जैसे combination जो है बहुत bowling friendly होती है. Do you think that HBL PSL जो है वो bowler जिताता है आपको या batsman का role है? देखिए दोनों का रोल होता है. बॉलर्स का भी हमारे पास वैसे भी बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग पैक हमारा इज़ बिन डूइंग गुड फॉर द लास्ट 2 years. सो वी आर इतने ज़्यादा हम फिक्रमंद नहीं हैं बॉलिंग के लिए. तो वी वर लुकिंग फॉर आवर लोकल बैटर ऑप्शंस कि हम अपनी टीम को स्ट्रेंथन कर सकें. जी आतिफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि हमारा वो जज्बा जिताता है जो शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में हमारे पास है. सो इट्स अबाउट वो फैमिली की जब आप बात करते हैं, कलंदर ब्रदर्स की बात करते हैं, सो हाँ ना सिर्फ शाहीन हमारा कप्तान भी है बल्कि जो हमारा 18वां प्लेयर है वो भी शाहीन की तरह ही खेलता है. 18वां प्लेयर भी शाहीन है. शाहीन शाह अफरीदी हैज़ well led this franchise in the last couple of years. Congratulations to Lahore Qalandars. Okay जी, Peshawar Zalmi is ready with their announcement. मोहम्मद अकरम साहब अगर आप अनाउंस करना चाहेंगे कि किसको आप लोगों ने पिक किया है? नवीनुल हक फ्रॉम अफगानिस्तान. Relegated player नवीनुल हक जो आ चुके हैं अफगानिस्तान की तरफ से, इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी में नज़र आएंगे. राइट आर्म फास्ट, ऑलवेज लुकिंग फॉर फास्ट बॉलर्स. पेशावर ज़ल्मी भी जो है हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ हैविंग सम ग्रेट फास्ट बॉलर्स दैट वी सीन फॉर पेशावर ज़ल्मी. अच्छा जी, अगली जो पिक है इस कैटेगरी में, गोल्ड कैटेगरी में, वो है मुल्तान सुल्तान्स की. एंड मैं ये बताती चलूँ दैट दे हैव टू हैव one foreign player for sure. And देखते हैं कि वो किसको पिक करते हैं. तो मुल्तान सुल्तान्स आपका टाइम शुरू होता है अब. जी पेशावर ज़ल्मी से बात करते हैं. आपने पिक किया है, मैंने फास्ट बॉलर्स का थोड़ा सा मेंशन भी किया कि वी सीन वहाब रियाज पहले एक टाइम पे थे, फिर एक टाइम पे हसन अली भी देखा है हमने. तो is that an area that's always in focus when you look at Peshawar Zalmi, regardless of the conditions, having a genuine, quick, fast bowler? जी बिल्कुल. सब टीमों ने लाइक आई सेड कि अपनी कंपोजिशंस बनानी होती हैं, तो उसका ये एक ज़रूरी पार्ट है. फास्ट बॉलर्स वहाब रियाज ने बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, तो उसके शूज़ फिल करना इतना इजी नहीं है. लेकिन नवीनुल हक गुड फॉर्म में है और मैं चाह रहा था कि नूर कहीं अकेला फील ना करें, तो दोनों इकट्ठे होंगे तो अच्छा परफॉर्म भी करेंगे. चलें ठीक है, नवीनुल हक अच्छे फॉर्म में, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी जो है वो अच्छे फॉर्म में ही रहें. पेशावर ज़ल्मी के लिए वी आर रेडी एक्चुअली विद मुल्तान सुल्तान्स. दे सीम टू हैव डिसाइडेड हु दे वांट इन द गोल्ड कैटेगरी. सो द फ्लोर इज योर्स मुल्तान. Who wants to announce? जी हमने गोल्ड में रिजा हेंड्रिक्स और ये रिजवान का हमने ओपनिंग में साथी. Right-handed batsman Riza Hendricks has been picked. He's all the way coming to the HBL PSL from South Africa, and Multan Sultans has picked Riza Hendricks. I did mention that they have to have a foreign player in this category. We're going to stay with Multan because once again it's their turn in the gold category. और आपका टाइम जो है वो शुरू होता है अब. चले यहाँ पे मैं डिफरेंट शक्लें देख रही हूँ, काफ़ी लोगों से बातचीत भी चल रही है. आई ऑल्सो स्पॉट आजम खान देर. आजम खान इज सिटिंग इन द इस्लामाबाद यूनाइटेड कैंप एंड जस्ट नाइस टू हेयर हिज थॉट्स एज वेल. आजम, आप तो छाए हुए हैं लीग्स में, जहाँ जाते हैं वहाँ पे छा जाते हैं. क्या राज है उस बल्ले के पीछे, क्या राज है? नेशनल T20 में भी सक्सेस मिला आपकी टीम का, एंड ओवरऑल दैट पावर हिटिंग एबिलिटी, बताएं क्या है? इज इट प्रैक्टिस इन द नेट्स? इज इट जस्ट वेयर डज द पावर कम फ्रॉम?
देखिए शादाब क्या कह रहा है? शादाब क्या कह रहा है? I think I want to hear कि what is he बोल रहा है chipping? कि इसको समोसे नहीं मिले पिछले 1 घंटे में, तो उसके पीछे थोड़ा वो हुआ है। लेकिन मेरी पावर का राज ये है कि मेरी अम्मी यहाँ पे बैठी, उन्होंने मुझे बचपन में बहुत खाना खिलाया है, तो उस हिसाब से काफ़ी पावर आ गई है अभी जिस्म में। लेकिन जहाँ तक बात है ओवरऑल फ्रेंचाइज क्रिकेट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल वाज क्वाइट सक्सेसफुल ईयर फॉर मी एंड क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द PSL के इंशाल्लाह इस दफ़ा अपनी टीम को चैम्पियनशिप की तरफ लेके जाऊँ, क्योंकि जो फिनिशिंग टच हमारे पास नहीं था, कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा उस रोल को निभाऊँ और अपनी टीम को चैम्पियन बनाने की कोशिश करूँ। One thing that we've seen from you always, whenever you take that crease, is that you never ever seem to be under pressure. There's always this sort of monotone look. It's a poker face, as I call it. We've never actually seen you under pressure. So is that actually the case, or are there a few nerves when you're walking in, or is it just you just seem to know what to do when you're there? नहीं, आई थिंक इट्स द सिचुएशनल प्रैक्टिस जो मैं करता हूँ अपनी एकेडमी में, और उसके पीछे माइंडसेट है जो मेरे वालिद साहब बैठे, उन्होंने काफ़ी तगड़ा कर दिया मुझे इस चीज़ के अंदर। तो आई थिंक माइंडसेट, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब मैं PSL गया था तो काफ़ी एक टैग था मेरे ऊपर उस चीज़ का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी क्रिकेट है आगे मेरी, तो कोशिश करूँगा कि अपना नाम और बनाऊँ और पाकिस्तान क्रिकेट को जितना सर्व कर सकता हूँ, इस मुल्क के ब्रांड को, इस PSL को जितना सर्व कर सकता हूँ, उतना मेरे लिए अच्छा है। Thank you so much, Azam. All the best for this year. I'm sure you're going to be as good as you've always been in the HBL PSL. Hijab, you're ready to announce Multan Sultan's next pick? Yeah, absolutely. Our next pick is Reece Topley. Reece Topley. Left arm fast bowler Reece Topley has been picked by Multan Sultans all the way from England. He's got pace and he can definitely make early inroads. That's what probably Multan Sultans is looking at when they're making their combination. अच्छा जी, गोल्ड कैटेगरी थी, इसमें सिर्फ इतनी ही पिक्स थी बिकॉज लाइक आई सेड कुछ रिटेंशंस हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब टीम्स की कॉम्बिनेशन बनती जा रही है, बैलेंस आता जा रहा है स्क्वाड्स में, लेकिन और भी कैटेगरीज हैं, वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दैट, बट इट्स बैक टू यू गाइज इन द स्टूडियो। The owners one by one, और अब जिनकी बारी है, he owns one of the biggest and the largest franchises in HBL PSL. इनके बारे में मैं ज़्यादा कह सकता हूँ कि 4 साल इनके फ्रेंचाइज से मैं मुंसलिक रहा हूँ and I've worked under him. And it's been, of course, a great experience. A taskmaster, at the same time, a father figure to all the team members. I've got Salman Iqbal alongside me. Salman साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्योंकि हमें बहुत थोड़े मिनट्स दे रहे हैं लोग यहाँ पे, तो मेरे पास तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके ऐसे पूछूंगा कि when the team was playing in the UAE and then the journey coming to Pakistan, एक आप जीते foreign title, उसके बाद से there has been a certain downfall, but now this year round you seem to be making some very tough and very brave changes. जी बिल्कुल, PSL has been a very tough journey for all the franchise owners between UAE and Pakistan. वो हमने अब फाइनली डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान इज़ द वेन्यू बिकॉज द फैंस आर क्लोजर टू पाकिस्तान देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स बिग चेंजेस. फर्स्ट लास्ट ईयर वाज बाबर आजम, दिस ईयर इट्स आमिर एंड इमाद. I think we have compensated Amir and Ahmad with Hassan and Nawaz, like-to-like players. Management change hui hai. We've got the new coach, Phil Simmons, coming to Karachi Kings. Heather is now director team from Multan Sultan to Karachi Kings. So they wanted to change the whole mindset of the team. So they wanted to have more composure, more dominance of Karachi. So we got Shah Masood as the captain for Karachi, and I think we have now. So far, we have picked up almost 10, 11 players now. The 4 playing international players and the 6 playing domestic players. So I think now we have a good composed team. As I just said, Karachi, of course, being the largest city and of course the biggest franchise, usi expectations bhi usi hisab se hoti hain. How do you tackle and deal with that? Because apart from the cricketing field, you are fighting another battle outside. जी मैं वही देख रहा था. मैं हमेशा कहता हूँ अपनी टीम को, अच्छे लड़के पिक होते हैं तो मैनेजमेंट पिक करती है, बुरे लड़के पिक होते हैं तो सलमान इकबाल पिक करता है. अब मैच जीतते हैं तो ऑफ कोर्स सबको क्रेडिट मिलता है, मैच हारते हैं तो सलमान इकबाल ने टीम पिक की. तो आई थिंक दैट्स द लव ऑफ द फैन. एंड PSL, रनिंग अ PSL टीम
running any franchise cricket team is the most stressful job that you have to ever. I have a TV station, I have other businesses. But the सबसे जो मुश्किल काम इन सब में से जो है ना, वो PSL की या कोई भी franchise cricket को संभालना. वो एक्चुअली उसमें होता भी है ना कि यू कैन मेक डिसीजन, खेल तो प्लेयर रहा है, हाँ. उसका कुछ कर नहीं सकते. बट अब you watched this franchise Karachi Kings for through the 8 seasons. Anything that you have in mind as a player? You also played, of course, for Lahore Qalandars, that you want to ask the owner of I think Karachi Kings? जो भी इन्होंने रिटेंशन की है, जो ट्रेड किया ना, उसमें जो मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज दे आई फेल्ट के काफ़ी स्टारिज्म ज़रूर था कराची किंग्स के अंदर, लेकिन आई थिंक दे वांट टू चेंज द breath of fresh air. आई डोंट नो सलमान भाई वुड एग्री विद मी और नॉट, लेकिन आई हैव फीलिंग कि इनकी डिस्कशन शायद इस तरह की हो कि जिसमें ये चाह रहे हो कि यू नो ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा हो, विनिंग अप्रोच ऐसी हो कि जो भी प्लान ये करें वो कंबाइंड हो गया, एज ए टीम हो गया, एज ए फैमिली वो चले. तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी फीलिंग है क्या ये सही है ये, क्योंकि आप 2-3 सालों से देख रहे हैं टीम बहुत अच्छी होती है, आपको नाम नज़र आएंगे, लेकिन इन दी एंड जब परफॉर्मेंस की बात आती है, जो ना वो टुगेदरनेस नज़र नहीं आई इन द ग्राउंड. नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजहर. होता ये है कि जो बहुत सारे प्लेयर्स, दिस इज़ नॉट ओनली इन क्रिकेट, इन एनी स्पोर्ट्स, जो बहुत सारे प्लेयर्स या प्रोफेशनल्स अगर बहुत कंफर्टेबल हो जाए एक फ्रेंचाइज के साथ, तो उनकी एबिलिटीज़ जो खुद की होती है ना, वो बाहर नहीं आती. हमें पता है हम तो नेक्स्ट ईयर पे पिक हो जाएंगे, हम तो रहेंगे इस फ्रेंचाइज के साथ, तो वो परफॉर्मेंस इनकी, ऑफ कोर्स दे ऑल प्रोफेशनल्स, तो परफॉर्मेंस में फ़र्क बहुत पड़ता है. ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर ये होता है कि PSL राइट नाउ योर फाउंडेशन फॉर क्रिकेट फॉर पाकिस्तान. इस PCB का क्रिकेट जो है ना, अगर आप अच्छा परफॉर्म करें PSL में, सो यू गेट सेलेक्टेड फॉर योर नेशनल टीम. तो हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दे वर्क रियली हार्ड टूवर्ड्स PSL. तो यस, ड्रेसिंग रूम का ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर चेंज करना है. हमारे ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर का कोई बुराई नहीं कर रहा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट आई थिंक दिस चेंज इज ऑलवेज गुड. यू नो, आई बिलीव इन चेंज. No, that's very good, and must be a tough call for you to let Imad and Mohammad Amir go, क्योंकि वो तो पहले सीजन से आपके साथ हैं, and we always seen them in the blue kit. बिल्कुल, because they were like my kids. Literally, I have seen them grow from Imad and Amir both. We were here in Lahore for the first PSL draft. Yeah. And my platinum and my diamond pick were Imad and Amir. Okay. All right. So time for us to head out, I guess. We got more picks, but we'll thank Salman Iqbal for joining us, owner of Karachi Kings, and best of luck to you with the remaining picks and, of course, the season to come. Thank you, Sikandar. Thank you. All right. Let's join Zainab and find out what's coming up next. Yes, the next category is coming up next, Sikandar, and the next category is the gold category. और जो पहली पिक है इस कैटेगरी में वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और उनका टाइम शुरू होता है अब. क्या Quetta Gladiators putting their heads together, of course, the think tank, making sure that ये next category जो silver round है इसमें भी best balance create कर पाएं और अपनी अभी तक जो formation बनी है टीम की वो वही हो जिसको ये सोच के आए हैं. Of course, हर पिक तो नहीं मिलती क्योंकि दूसरे भी यहाँ पे करेंगे अपनी अपनी मनमानी, लेकिन आई गेस अभी तक जो हमने देखा है प्लैटिनम राउंड में और फिर उसके बाद हमने डायमंड में, आई थिंक लुक्स वेरी गुड, फेयरली बैलेंस अलोंग विद द रिटेंशंस दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस. न्यू सेटअप फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स. ऑफ कोर्स वी डिस्कस के शेन वॉटसन उनके अब हेड कोच हो गए हैं, जो सेंटर में आपको दिख रहे हैं मोइन खान वो डायरेक्टर of cricket हो गए हैं. So there are quite a few changes that they have brought in, and hopefully it works for them. They've also let go some of their usual suspects, some players who've stuck with them through and through, जिसमें नवाज भी शामिल हैं. But good part is that they've got Riley Rousseau back once again. इनको represent करते थे, फिर मुल्तान से वापस सफ़र तय करके आ गए. So that's a big pick for them. And then there are other players also which I've been hearing about. Tim Seifert, he was picked up and I saw him in Zimbabwe. Amazing opening batter, wicket keeper. And I think, if I'm not wrong, gone to Karachi Kings. And so on and so forth. Quetta, Multan Sultan also bringing in
quite a few changes. मुल्तान सुल्तान ने अपने हेड कोच भी चेंज किए हैं, ओवरऑल पूरा स्टर अप किया है उन्होंने अपना जो सपोर्ट स्टाफ है, एंड देव ऑल्सो लेट गो सम ऑफ द की प्लेयर्स, जिसमें शान मसूद उनके पास से गए और आ गए हैं अब कराची किंग्स में. Hassan Ali will be wearing a Karachi kit for the first time. So we'll talk more and we'll have more guests around here. Right now, let's go back to stage and find out what Zainab has to share. ठीक है जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सिल्वर कैटेगरी में डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने किसको पिक करना है जी. एनीवन फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर्स, प्लीज अनाउंस, प्लीज शेयर हु यू पिक्ड. Please. We've picked Saud Shakil, our former player. Thanks. Saud Shakil, Pakistan के left-handed batsman, has been picked by Quetta Gladiators, a regular feature in the national side. We've seen him play spin particularly well. We will be talking more about कि क्यों Saud Shakil को pick किया है. लेकिन मेरा ख्याल से वापस चलते हैं सिकंदर की तरफ and find out कि उन्होंने क्या कहते हैं इस pick के बारे में. मुझे सारी पिक्स पसंद है ज़ैनब, मेरा पैसा नहीं लगा हुआ. I will say every pick is very, very good. And of course, these names are so big. It's so great to see that the HBL PSL as a platform is allowing all these international stars to come around here, whether वो associate nation के हों या full member nations के हों, और कुछ ऐसे हैं जो कई साल यहाँ पे आते हैं. I always say कि पाकिस्तान का जो लीग है HBL PSL, this is the best bowling attack in the world. तो जितने भी world के top batters आते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि this is a challenging league in terms of facing world class bowlers, and it's always been the case, I guess. मेरे पास guest भी मौजूद है, मैं अकेले बात कर जा रहा हूँ. अदनान and हुमायूं have joined us. हुमायूं, welcome to the draft HBL PSL के कैसे हैं? Thank you जी, बिल्कुल ठीक. क्रिकेट से आपका भी बड़ा लगाव रहा है अदनान की तरह. You guys are actively playing time to time जब आपको वक्त मिलता है. How do you see this festive, ये जो HBL PSL होता है, how do you guys get time to watch it all the time या बीच-बीच में? नहीं, हम तो बकायदा टीम के साथ ही होते हैं. कराची किंग्स पार्ट ऑफ आवर फैमिली, तो और रहता भी कराची में हो तो कराची को सपोर्ट करते हैं. लेकिन यस, इसका जो पूरा PSL का जो जितनी टीम्स भी खेल रही हैं वो हमारी टीम्स हैं. और जो सबसे अच्छी बात देखने को हमें मिलती है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आना शुरू हुए यहाँ पर. एक वक्त था कि यहाँ क्रिकेट हो नहीं रही थी, कोई आ नहीं रहा था, लेकिन PSL के ज़रिए जो है माशाल्लाह एक फेस्टिविटी होती है और सब लोग यहाँ आते हैं और क्रिकेट होती है, और क्रिकेट हर बच्चे को यहाँ पसंद है. और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे यहाँ जितने भी प्लेयर्स निकले हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, हमारी इंटरनेशनल जो हमारी मेन टीम है उसके लिए बहुत सा टैलेंट निकला है. चाहे वो शादाब हों, आसिफ हों, बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं. उनको कॉन्फिडेंस मिलता है इस PSL के ज़रिए. तो I'm really proud of this. Great. I'll come back to you and Adnan. We could go back to Zainab. Zainab, बताइए किसने किसको पिक किया? ये तो मुल्तान ही बताएगा सिकंदर कि किसने किसको पिक किया. मुल्तान सुल्तान, चले बताएं किसको पिक किया है आपने इस कैटेगरी? जी, हमने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तैयब ताहिर को किया है. तैयब ताहिर has been picked by मुल्तान सुल्तान्स. आप पहले भी इनको देख चुके हुए हैं HBL PSL में, डोमेस्टिक में भी रेगुलरली देख चुके हुए हैं. तो चलते हैं अगली पिक की तरफ. The next pick is going to be from लाहौर कलंदर्स, एंड कलंदर्स आपका टाइम शुरू होता है अब. ने देखा नेशनल T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, एंड इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 100 किए और जिताया पाकिस्तान को. सो यस, ही डिजर्व्स दैट प्लेस. वापस गेस्ट के पास आता हूँ. कराची किंग्स के साथ आप भी मैंने देखा है कई बार स्टेडियम में. तो अदनान, आप तो क्रिकेट से जुड़े हैं, आपने सलमान भाई को बोला नहीं कि मतलब यार कब हम खुश होंगे, ये क्या हो रहा है? एक चीज़ तो अच्छी हो गई कि उन्होंने प्लैटिनम में उसी को पिक किया जो मैं चाह रहा था. अच्छा, पोलार्ड को. तो वो बड़ा लकली कहते हैं कि वो बड़ा सही तुक्का लग गया मेरा उनके साथ. बट यस, क्रिकेट चाहे वो कराची के हिसाब से हो, मेरे दो बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है. पैदाइश के हवाले से लाहौर कलंदर, क्योंकि लाहौर में पैदा हुआ मैं, और दूसरा रहता कराची में हूँ तो वो कराची. तो इन दो टीमों के लिए मेरा हमेशा एक दिल और दिमाग हमेशा लगा रहता है कि कोई जीते ज़रूर. तो इनके आपस के मैच में आप कहाँ होते हैं? आपस के मैच में मैं दोनों की तरफ होता हूँ. थोड़ा सा आई हैव टू बी पोलिटिकली करेक्ट. मगर मैं एक बात बता दूँ, T20 के हवाले से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली हमने बड़ी तरक्की कर ली.
कुछ अच्छे बॉलर्स भी मिल गए, कुछ अच्छे बैटर्स भी मिल गए हमको। ये तो सिलसिला चलता जाएगा, मगर जो हमने फोकस करना है दैट इज़ लाइक जो एक 50 ओवर्स मैचेस होते हैं उसके ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो हम बड़ा अच्छा खेल जाते हैं और अच्छे पिक भी कर रहे हैं और मज़ेदार। ये मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस है ये। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि इसके अंदर खेलना ज़्यादा आसान है, पिक करना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल। मैं आपके पास वापस आता हूँ क्योंकि एक पिक और रेडी हो गई है। तो ज़ैनब, लेट्स गो डाउन एंड फाइंड आउट कि कौन है ये। ये तो कलंदर से ही पता करना पड़ेगा कि कौन है वो जिनको उन्होंने पिक किया है। कलंदर्स हमारे फेमस वर्ल्ड फेमस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जब कश्मीर में हम गए, मुझे याद है रावला कोट से मुजफ्फराबाद का सफ़र तय किया उन्होंने। 35,000 से ज़ायद बच्चे ट्रायल देने आए और वो टेप बॉल से उस वक्त खेलते थे। आकिब भाई ने उनको सिलेक्ट किया, फिर उनको हमने ऑस्ट्रेलिया भेजा और वहाँ पे ट्रेन हुए और उसके बाद वो कलंदर्स फैमिली का हिस्सा बने और उनका नाम लेते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली 2 साल से पेशावर के पास थे, तो हमने कहा अपना कलंदर वापस लेते हैं। सलमान इरशाद। सलमान इरशाद हैज़ बीन पिक्ड बाय लाहौर कलंदर्स। वापस चले गए हैं कलंदर्स के पास विद ऑल हिज स्लिंगी एक्शन। आपको मेरा ख्याल है बहुत मिस कर रहे थे कि वो उधर चले गए हैं, वो उधर से उधर चले गए हैं। बट यहाँ पे देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल। जी दे नहीं सकते उसको। Oh, there you go. Peshawar Zalmi does not. देखा आपने, कलंदर अगर कहीं भी चला जाए तो उसको छोड़ता नहीं है कोई भी दूसरा। बहरहाल नेक्स्ट पिक जो है वो भी हमारे प्लेयर बहुत ज़बरदस्त हैं, वो आके भाई बताएंगे क्योंकि मुझे सलमान इरशाद का पता था। ये मोहम्मद इमरान जूनियर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। Muhammad Imran Jr. Muhammad Imran Jr. Remember, Salman Irshad was originally from Lahore Qalandars, then went on to go with Peshawar Zalmi. और अब Peshawar Zalmi ने decide किया है कि वो कहीं नहीं जाएंगे. He will stay with Peshawar Zalmi. Salman Irshad will stay with Peshawar Zalmi. और अगली पिक तो चली गई, लेकिन सलमान इरशाद तो आपके पास है, सो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बिकॉज वी सीन व्हाट ही कैन डू विद द बॉल एज वेल, अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन, हैज़ दिस एबिलिटी टू टेक विकेट्स. सो कंग्रेचुलेशंस टू पेशावर ज़ल्मी फॉर रिटेनिंग. बट विल टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स एंड देयर रीसेंट पिक. जी बताएं लाहौर कलंदर्स. जी कलंदर उन्होंने वापस ले लिए, तो इसलिए ये बड़े टैलेंटेड बॉलर है, पेशावर से भी खेल चुका है, बट रिसेंटली काफ़ी मैच्योर अपने आप को उसने किया है. सो आई थिंक अब जब आप अपनी टीम का सोचते हैं तो फिर आपको सारी जो चीज़ें हैं, सारे डॉट्स को फिल करना होता है, कनेक्ट करना होता है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. जो भी प्लेयर आपको लगता है कि डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है अब, सो डेफिनेटली इरशाद के बाद फिर मोहम्मद इमरान, जिनको जूनियर भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, कलंदर्स के लिए यू नो डिफेंडिंग चैम्पियंस, देयर इज ऑलवेज दैट एडेड प्रेशर. Every year you're going into the HBL PSL with a slightly different team. तो जब ड्राफ्ट में आप आते हैं तो how do you look at the combination? Are you looking to sort of retain most of your players? How do you make things different? Or actually you want it to be the same? So how does the team form when you've already won the championship? देखिए हर साल जो है एक नया चैलेंज होता है, और आप जो सबसे मुश्किल काम होता है जो कि हमने हार्ड वे किया और सीखा, 4 साल जो बैशिंग और सब कुछ हुआ हमारे साथ, हम जिस पाथ पे चल रहे थे, एक एक करके हम कड़ियाँ जोड़ते जोड़ते एक कोर ग्रुप बना रहे थे. और जब ये 3 साल पहले वो कोर ग्रुप आपका बन चुका है, तो फिर जैसे आपने देखा कि फ़खर को ड्राफ्ट में भेजा तो 9 प्लेयर सिमिलर होंगे जो लास्ट ईयर थे. तो इसलिए फिर आप गैप्स होते हैं जो आपके, उनको फिल करते हैं. फर्स्ट यू मेक योर 11, देन यू नो उनकी रिप्लेसमेंट्स के बारे में सोचते हैं. यू नो द कॉम्पोजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट देन एनी बिग नेम और एनी वन.
ठीक है, मोहम्मद इमरान जूनियर जो हैं इन्होंने पिक किए हैं. Just a little more about him in terms of what he can offer. That average tells you a story. 21 की इनकी average है, 6 विकेटें भी उन्होंने हासिल की हुई है, 51 wickets overall. So hopefully a valuable addition to Lahore Qalandars. And now we move on once again to Multan Sultans. Multan Sultans, your time starts now. Okay, while Multan Sultan is making their selection, we'll talk to our guests over here. अब मैं क्योंकि टाइम इतना कम है, इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, तो बारी-बारी तो मैं क्रिकेट की बात कर रहा था. तो आप लोगों की सेलिब्रिटीज़ की भी एक टीम है. उधर भी पॉलिटिक्स होती होगी, फेवरेटिज्म होता होगा कहीं ना कहीं. कौन बाबर आजम है आपकी टीम का, कौन शाहीन आपकी? जब भी मैं उसको खैर बात कर चुका हूँ. अब आप ये बड़े कोचिंग प्लेयर हैं. कोचिंग में आए हैं नहीं? मैं कोचिंग में भी नहीं, मैं तो सिर्फ अब बाहर से बैठ के इनको देखता हूँ और खुश होता हूँ. मगर देखिए कुछ प्लेयर्स हैं बहुत अच्छा खेलते हैं. फहद मुस्तफ़ा बहुत अच्छा खेलते हैं. उनका जिक्र तो अजहर अली कर रहे थे कि उन्होंने अच्छा मेरे भाई हैं सलमान माय गॉड वो बहुत अच्छा खेलते हैं. तो बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं. तो हमारी टीम काफ़ी अच्छा खेलती है. अभी ये जो एक MSL हुआ था, जो शाहिद अफरीदी ने जो एक लीग करवाई थी, तो उसके अंदर काफ़ी प्लेयर्स हमारे जो मीडिया के जो बहुत से लोग थे उसके अंदर, तो जो हमारे प्लेयर्स थे जो खेलते हैं, तो उन्होंने काफ़ी बोला कि यार तुम लोग तो बहुत अच्छा खेलते हो. तो उसमें कुछ लड़के वाकई बहुत अच्छा खेलते हैं. इट सीम लाइक अ गुड टूर. बस तस्वीरें काफ़ी चीज़ें देखी थी. बट एनीवे द गुड पार्ट व्हाट आई फील इज बिफोर आई लेट यू गो इज कि जब भी आप लोग जाते हैं टीम्स के साथ या खुद खेलते हैं, इट्स अ वेरी गुड फेयर ब्लेंड ऑफ स्पोर्ट्स and our culture in terms of our arts and everything. चाहे आप US जाएं, कहीं भी जाएं. Always lovely watching both of you on screen. Thank you so much for joining us. It's more of like a festivity for us. कि हम जा रहे हैं, साथ मिल रहे हैं, ये हो रहे हैं. आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा जो सलमान इरशाद के हवाले से उन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया अपने आप को. जो डेड ओवर्स के अंदर जो ये यॉर्कर्स इनकी जो आती हैं वो ज़बरदस्त हो गई है. तो सही किया पेशावर ने नहीं छोड़ा. कश्मीर से वाहिद पिक है ये. All right, thank you guys, and time for us to head out and find out कि मुल्तान सुल्तान ने किसको पिक किया. All right, Multan Sultans is ready to announce who they've gone for. Multan Sultans, the floor is yours. I'm very happy to announce that we will be picking my personal favorite player, Shahnawaz Dhani. Shahnawaz Dhani has been picked once again by Multan Sultans. यहीं पे हमने इनको देखा था, and it's great to see him back. Hope he's recovered fully from all his injuries, and we get to see him in action with all the celebrations that we get to see from him. ठीक है जी, let's move on to Karachi Kings. Karachi Kings का वक्त शुरू होता है अब. We're halfway through the draft. Silver round के भी जो हैं आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं. टीम कॉम्बिनेशंस बनती जा रही हैं. सारी टीम्स की मज़े मज़े के प्लेयर्स आ चुके हैं. Now it's just about filling in those gaps and seeing कि कौन सा प्लेयर जो है वो मिसिंग है. Are they missing a spinner? Are they missing a pace bowler? An all-rounder? An opening batter? We'll have to find out. Discussions चल रही हैं कराची किंग्स की. एक न्यू फॉर्म में नज़र आई कि कराची किंग्स इस दफ़ा कुछ नई एडिशंस हैं, कुछ नए चेहरे नज़र आएंगे. And it's the same for a lot of the franchises actually. There's been quite a few changes, but we are ready with the player. So it's over to Karachi Kings to share with us who they've gone for. The young fast bowler, Mohammad Amir. Amir Khan. Medium fast bowler from Sawat, Mohammad Amir Khan. Under 16 भी खेल चुके हुए हैं, under 19 भी नज़र आ रहे हैं. आपने कहा कि एक मोहम्मद आमिर गया है तो हम दूसरा मोहम्मद आमिर जो है वो अपनी टीम में रख लेते हैं. So well done Karachi Kings. I hope he's as successful. पेशावर ज़ल्मी जो है वो तो अपनी अगली बारी जो है वो हार चुके हैं, लेकिन अगली भी जो है वो उन्हीं की है. So आपका जो वक्त है वो शुरू होता है अब.
पेशावर ज़ल्मी अपनी पिक में मसरूफ़ है और पेशावर ज़ल्मी के ही एक करता धरता बहुत बड़ा नाम क्रिकेट में भी. Of course, he's done so much for Pakistan. He's here with us. And मोहम्मद अकरम साहब जिनके साथ एक अच्छी कह सकते हैं मेरे साथ इन्होंने वर्ल्ड कप था गालिबन जो हमने किया था. It was back in 2015 जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. We worked together. मोहम्मद अकरम साहब फर्स्टली बहुत बहुत वेलकम आपको हमारे स्टूडियोज़ में. एंड उरूज आपको भी वेलकम. आपकी जो फ्रेंचाइज है पेशावर ज़ल्मी उसके अंदर एक चीज़ जो मैं पर्सनली कह सकता हूँ देखिए कंसिस्टेंसी है. आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये टीम जाएगी प्लेऑफ्स में. हाउ हैव यू सीन द ग्रोथ ऑफ दिस फ्रेंचाइज एंड क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस फ्रेंचाइज से इस सीज़न में? देखो शुरू से ऐसा है कि हम लोगों को जो पहला ड्राफ्ट था उसमें जो प्लेयर्स मिले थे वो उसमें वहाब रियाज, कामरान अकमल और डैरन सैमी ये हमारे साथ बड़ी देर ये हमारी कोर रहे हैं और इनके गिर्द हम टीम्स बिल्ड करते रहे और हर साल अच्छे यंगस्टर्स भी हमें मिलते रहे हैं. तो एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली लोगों की भी हैं और हमारी अपनी भी अपनी टीम से हैं कि हम 4 दफ़ा फाइनल खेले और एक दफ़ा जीते. तो हम चाहेंगे इंशाल्लाह कि इस दफ़ा हम ये लाइन क्रॉस करें. अच्छा मैंने एक नई चीज़ देखी शायद मैं गलत हूँ रूज लेकिन इनकी कप्तानी में या तो ऑलराउंडर या फास्ट बॉलर कैप्टन रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के. फर्स्ट टाइम वाज इट अ टफ कॉल बाबर आजम को लेना दैट नेम एंड देन टू चेंज द वे पेशावर ज़ल्मी इज़ नोन फॉर मोर बॉलिंग यू नो एंड अटैकिंग फ्रेंचाइज? कैप्टन शुरू से पहले शाहिद अफरीदी थे, फिर डैरन सैमी हो गए, उसके बाद वहाब रियाज वाज द मोस्ट सीनियर इन द टीम और उनकी बड़ी इनपुट और बड़ी परफॉर्मेंसेस थी हमारे लिए. उन्होंने कप्तानी की और उनके बाद जब हमें बाबर आजम मिल गए तो हमें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं. जब वो आए तो हम 1 साल पहले से चाह रहे थे कि पाकिस्तान का जो कप्तान है वो हमारा भी कप्तान हो और ऑब्वियसली ही हैज़ डन वेल लास्ट ईयर. अल्हम्दुलिल्लाह. आपसे और बात करेंगे. आप ही कब पिक आ रहा है तो वील गो आउट देयर और देखते हैं पेशावर ज़ल्मी ने अब किसको पिक किया है. Let's find out from Peshawar Zalmi who they've gone for. Mohammad Haris is with the mic. Ji, Haris. Arif Yaqub from Karachi. Arif Yaqub, leg spinner from Karachi, has been picked और national T20 में recently अभी इन्होंने धूम मचाई थी विकेटें ले लेके third highest wicket taker in the national T20. Arif Yaqub has been picked by Peshawar Zalmi. चले जी अगली पिक है इस्लामाबाद यूनाइटेड की. बहुत ही इंटेंसी डिस्कशंस हो रही हैं तो आपका टाइम शुरू होता है अब. वेल ये जो पिक है इसके लिए तो मैं खुद इंडोर्स कर सकता हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली नेशनल T20 में उन्होंने कोई तकरीबन 21 विकेटें ली. लेग स्पिनर हैं, बड़े पक्के हैं and I think it's a very very good pick and he's got the right franchise for himself because I've not seen him play any level और नेशनल T20 भी इनका पहला ही था. Anything you'd like to ask because he's known for giving those opportunities and I think he and his headhunters have an eye for talent. I mean also I think that they've reformatted जो वो बात करें कि जो एक एक्सपीरियंस पहले चला आ रहा था अब आप देखते हैं कि बाहर से देख लें तो TKC उनकी टीम के साथ हैं, साइम अयूब इज़ देयर who's played well and now the leggy is well. तो ये कोई एक माइंडसेट चेंज था कि जो यंगस्टर्स हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं नॉट दैट कि पहले नहीं थे बट थोड़ा सा लगता है आप लोगों का थोड़ा सा उस तरफ फ्रेशर लुक की तरफ अब जो है वो स्ट्रेटजी गई है. एब्सोल्युटली. पिछले 2 सालों से ये सिलसिला शुरू हुआ. इट टेक्स एटलीस्ट 4 years एक नई टीम बनाने में. जब वहाब, कामरान ये लोगों के जाने के बाद और 2-3 और सीनियर लोग गए तो उसके बाद बाबर आजम के गिर्द में एक यंग साइड बिल्ड करना चाहता था. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक अच्छी यूथ मौजूद है. हारिस, साइम इनकी शक्ल में और अब ये T20 परफॉर्मर जैसे आपने मेंशन किया और मैं कराची में भी इनको देख रहा था. एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मुझे मिलेंगे. आई वाज थिंकिंग कि मे बी कराची या कोयटा हम मुझसे पहले उठा लेंगे लेकिन हम लकी कि ये भी मिल गए हमें और इंशाल्लाह ही विल एंजॉय हिज टाइम. आई एम वेरी श्योर अबाउट. थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अकरम साहब एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक विद द सीजन एंड ऑफ कोर्स जो बाकी पिक्स आपकी हैं. थैंक यू सिकंदर. थैंक यू रूज. ओके टाइम फॉर अस टू हेड आउट एंड फाइंड आउट और कौन किसको पिक कर रहा है. इस्लामाबाद यूनाइटेड से पता करते हैं किसको पिक किया है उन्होंने सिल्वर कैटेगरी में. जी We've picked Matthew Ford from the West Indies as
Matthew Ford from West Indies, right arm fast bowler Matthew Ford, 21 years old. Average of 13.95. Should be interesting to see. He's only 21 and the HBL PSL is very much about all the young, exciting talent that's at display. अच्छा जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर से आपकी बारी है. इस्लामाबाद यूनाइटेड, your time starts now. और अभी भी more and more picks are going on. And it's always amazing. ये जो franchise है 2 seasons जीत चुके हैं अरूज और consistency इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त रही है. I think they seemed very unbeaten when they were in the UAE. यहाँ आके भी इनके पास बड़ा अच्छा सा ब्रांड एक का है कि या तो मारो 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 या फिर हारो हारो हारो. क्योंकि ये मारने जाते हैं तो मारते ही चले जाते हैं. They don't care if they get out for 80 या 180. और ये तो आई थिंक उनकी फ्रेंचाइज उनके कप्तान इंडोर्स भी करते हैं इस बात को दैट वी वांट टू प्ले रिस्क एंड रिवॉर्ड क्रिकेट एट द हाईएस्ट लेवल. ये तो आप शुक्र करें आपकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही वरना 2-3 इधर ही आ जाएंगे आपसे पूछने के लिए कि आपने क्या बोला है. बट ऑल्सो आई थिंक विद बैटिंग उनकी हमेशा रही है. आई थिंक विद नसीम नाउ कमिंग इन इट एड्स दैट विकेट टेकर लीड पर्सनैलिटी बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी. एंड आई थिंक शादाब इज़ अ ग्रूमिंग लीडर ऑल्सो इन द मेकिंग. तो आई थिंक they have been consistent, but वो end results your finishing touch वो नहीं provide कर सकें. So hopefully this year might be slightly different for them. ठीक है, हमारे पास एक बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इस पिक और इसके रिजल्ट के बाद. All right, Islamabad United. जी. जी, सलमान अली आगा. सलमान अली आगा. आपको पता ही है इस वक्त जो है टेस्ट टीम में भी मौजूद हैं, ऑलराउंडर हैं, ऑफ स्पिन भी कराते हैं, हिट्स भी मार लेते हैं, स्वीप शॉट बड़ी अच्छी खेलते हैं. सो वंडरफुल एडिशन टू इस्लामाबाद यूनाइटेड. जी, लाहौर कलंदर्स, अब आपकी बारी है इन द सिल्वर कैटेगरी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. लाहौर कलंदर की बारी आई है तो हम एक नाम को बिल्कुल नहीं भूल सकते जो कि शुरू से अभी तक है और फ्रेंचाइज के साथ और आगे भी रहेंगे. हमारी दुआ है. आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं. आकिब भाई, अभी आतिफ राना आए थे, उनसे मैंने बात की. मैंने कहा कि आप लोगों के जो है ना नर्व स्टील के हैं क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ कहा और अब आपने लगातार 2 साल से किसी और को मौका नहीं दिया, बल्कि आतिफ साहब तो बोल गए 4 साल. मैंने बराबर करना है 4 और 4. ये बताइए मुझे कि आपने कई जगह कई प्लेटफॉर्म्स पे ये बात की होगी कि ये जो चेंज आया है ये ऑफ कोर्स ओवरनाइट नहीं है. इसके पीछे क्या राज है और कितना पेशेंस लेवल चाहिए इसके लिए? देखिए, जितना हमारा रिजॉल्व टेस्ट हुआ अब उतना लोगों का भी करना पड़ेगा. तो आतिफ ने बात सही की है. देखिए, सबसे जो मुश्किल काम था जब लाहौर को मैंने ज्वाइन किया तो ये था कि आपके डोमेस्टिक में उस तरह के आपको ऑप्शंस मिलती ही नहीं है. क्योंकि जो भी बेस्ट टैलेंट होता है पहले सीज़न में वो जो पिक ऑर्डर के हिसाब से सारी टीमें जो हैं वो रख लेती हैं. पीएसएल ने भी खेलते खेलते चीज़ें सीखी हैं. कैन यू बिलीव कि इस्लामाबाद जो पहली दफ़ा चैम्पियन हुआ तो उन्होंने 16 के 16 प्लेयर रिटेन कर लिए. तो अब वो फ्रेंचाइज छोड़ती नहीं है प्लेयर, तो फिर हम कहाँ से लेते? तो फिर हमने वो टुक द हार्ड वे. हम सड़कों पे निकल गए, शहरों में निकल गए और एक एक जोड़ते जोड़ते हीरे जब वो कंप्लीट हो गए 2 साल पहले, पूरा नेकलेस पूरा हार बन गया. तो फिर हार बाहर कर दिया आपने अपने. और फिर वो जो आपकी कोर जब आपका ग्रुप बन जाता है और वो ज़ैनब एंड देन ऑफ कोर्स फाइंड आउट कि आकिब भाई किसका नाम देकर आए. All right, Lahore Qalandars is ready to announce who they've gone for. आदिल भाई, आप शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल ज़ैनब, जो हम कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं और येट अनदर फाइंड ऑफ आवर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम. हम बच्चों को चांस देते रहेंगे. 2022 में जब यॉर्कशायर के साथ हमारा मुआहदा हुआ तो वहाँ पे भी डैरन गव साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और हमने ट्रायल का अनाउंस किया. को 10-12 हज़ार बच्चों ने ट्रायल दिया. उसमें से हमने 22 बच्चे सेलेक्ट किए जिनको हमने क्लास ऑफ 2022 का नाम दिया. और लास्ट ईयर भी ये हमारी तरफ से सेमीफाइनल और फाइनल में खेले. एहसन भट्टी. Ehsan Bhatti has been picked by Lahore Qalandars. Left arm wrist spinner from Sheikhupura has been picked by Lahore Qalandars. Ehsan Hafiz Bhatti.
And as we know, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स तो चाहिए ही चाहिए होते हैं आपको HBL PSL के ड्राफ्ट में हर टीम ने रखा हुआ है इनफैक्ट एक नहीं मजीद और भी रखे हुए सो वेल डन लाहौर कलंदर्स इट्स नाउ टाइम टू मूव ओवर टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपका टाइम शुरू होता है अब नूरुज अभी बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले आकिब जावेद से और आतिफ राना से भी कि ये कहना आसान है कि जी एक सर्टन सिस्टम में आप बिलीव करें और फिर होप करें कि ये आपको रिजल्ट्स देगी और बाहर जाके आपको जितवाएगी एंड देन व्हेन इट हैपेंस इट लुक्स लाइक अ फेरी टेल एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग जर्नी टू वॉच एंड लर्न फ्रॉम जस्ट नॉट जस्ट स्पोर्ट्स एनी अदर प्लेटफॉर्म I mean, like he said, they've put in the hard yards. They went hunting and searching for that kind of talent. Then they've invested time in them कि उसको groom करें. I think मैंने आकिब भाई की बात एक दफ़ा पहले भी सुनी किसी इंटरव्यू में. In fact, I think it was just before the World Cup जब ये हारिस की बात कर रहे थे, हारिस रऊफ की कि when people thought and were pushing him कि नहीं इसको खिला दिया जाए कि ये तैयार है ये करेगा इन्होंने फिर भी उसको रोक के रखा because obviously playing at the biggest level, being in the coaching world, he knew कि वो उस वक्त तैयार नहीं है. और वो तो I think those प्लानिंग दैट स्ट्रैटेजी पीछे बहुत ज़रूरी है और जिस कोर की ये बात करें पाकिस्तान बेस्ड कोर तो जितना टाइम एंड एफर्ट डाले देन यू हैव टू गिव इट दैट टाइम क्योंकि जैसे आप भी कह रहे थे कि सारा पाकिस्तान लाहौर कलंदर्स के पीछे सालों साल पड़ा रहता था एंड नाउ इट्स 2 times in a row. इसको मैं कहूँगा अभी हम जिम्बाब्वे में थे जहाँ इनकी एक टीम गई थी और मैंने उनसे बोला ये कहाँ से लेके आएगा ये अभी इधर के लिए अभी तैयार नहीं है तो it's amazing and I think we should salute you the way you worked hard and the way you have owned this franchise in a way कि यहाँ प्लेयर आपने जो खड़े किए हैं शाहीन शाह अफरीदी हो आए यस सिस्टम से आए हैं बट उनको एक लार्जर प्लेटफॉर्म मिला था जब उन्हें 5 विकेट ली थी मुझे अभी भी याद है एंड देन हारिस रऊफ एंड देन ताहिर बेग आई मीन अमेजिंग स्टोरीज वेरी वेल डन सर थैंक यू एंड विल कैच यू मोर और उम्मीद करते हैं कि आप हैट्रिक करेंगे इस बार 4 का तो अभी थोड़ा टाइम है चलिए ऑलराइट सो टाइम फॉर अस टू हेड आउट एंड ऑफ कोर्स वी हैव थैंक्ड वेल आई थिंक अभी आप लोग रेडी नहीं है बाहर तो हम एक सवाल और कर लें इनसे चलिए एक सवाल और कर लेते हैं ये बताइए मुझे कि कितना टाइम आप देते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को टू ग्रेजुएट हिम टू दिस लेवल एंड देन लेट गो एंड कहेगा जब तो पाकिस्तान के लिए खेल भाई देखिए ये प्रोसेस जो है ना ये दुनिया में अब इसकी ज़रूरत है जो आपके टिपिकल सिस्टम्स थे वो फेल हो चुके हैं उसकी मिसाल आप वेस्ट इंडीज़ ले लें आप जिम्बाब्वे ले लें अभी याद है वहीं पे उन्होंने हमारे साथ 10 साल का एग्रीमेंट किया टू डेवलप देयर प्लेयर्स आप श्रीलंका को ले लें आप बांग्लादेश को ले लें अब आपको आना पड़ेगा एलीट लेवल ऑफ प्लेयर डेवलपमेंट क्योंकि बच्चों के पास सबके पास इतना टाइम नहीं है ना उनके पास इतना पैसा है ना इतने पेशेंस है लोगों के पास तो हमारा जो प्लेयर को फाइनल डेवलप करने का ये 2 साल का प्रोसेस है 2 साल में क्योंकि जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो 1.5 साल आपको लग जाता है टू बिल्ड प्रॉपर मसल्स और अब गेम किस तरफ जा रही है गेम जा रही है पावर रेंज टिपिकल चीज़ों से आगे बढ़ रही है तो हमने इसको फील कर लिया कि अब अगर ये हम पाकिस्तान के लिए भी हमेशा बात करता हूँ कि अगर आपने राइट स्टेप ना लिए तो जिस तरह हॉकी में हम वीक हैं तो उनका मुकाबला नहीं कर पाते हम उतना तेज़ भाग नहीं सकते हम उतना ज़्यादा हमारी रीच नहीं है उतना स्टेमिना नहीं है तो इसी तरह क्रिकेट में भी आपको अब वेल बिल्ड होना पावर लिफ्टिंग पावर मसल्स इनका लाना बहुत ज़रूरी है चाहिए और अभी अब देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो बैट्समैन है वो भी आने शुरू हो जाएंगे ठीक है सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई थिंक नाउ वी आर रेडी आउटसाइड विद अनदर पिक Quetta Gladiators is ready to announce who they've got. जी Quetta Gladiators काफ़ी discussions चल रही थी यहाँ पे intense किस्म की. Sajjad Ahmed, wicketkeeper batsman from Ahmedabad. He did really well recently in the national T20 as well. So I think having him as a backup wicketkeeper option is really good, and his strike rate was also very impressive. There you heard it. Quetta Gladiators has made their pick. Sajjad Ali has been picked and he did really well recently. 550s भी देखने को मिली थी इनकी तरफ से. It's good to see कि जो परफॉर्मर्स उस लेवल पे थे अब उनको HBL PSL में भी ड्राफ्ट में एटलीस्ट मौका दिया जा रहा है कि they can come and showcase their talent on a much more larger scale. All right, Multan Sultans, we are back to you and your time starts now.
Okay, so we can see that Multan Sultan is busy with their next pick, and now overall, if you look at the franchises, they've come up with a shape, a core of how they want their squads to look by the end of this evening and for the season to come in February, March. और 18 लोगों को pick करना है. I've mentioned the platinum and the diamond and the gold, and then so on, supplementary, emerging, everyone. I've got a gentleman alongside with me, and I've also changed my partner guest. Of course, Azhar Ali is with here through and through. But I want to welcome somebody who's come to Pakistan all the way from the West Indies. Phil Simmons, welcome to Pakistan. Welcome to Lahore. Thank you, thank you. It's been a wonderful morning, an exciting morning. So, have you had a chance or opportunity to see how the HBL PSL has been in the past seasons and before saying yes to come and join one of the franchises? yeah, I've watched most of it, and last year particularly because there's a few players that I was watching last year and see how they got on here. But I could have been here early on because I remember Imran spoke to me the first year, but because of my duties then, I couldn't make it at the time. But always been looking forward to trying to get here, and finally I'm here. Finally you're here. Well, good that you're here. Got lots of questions, but we have to go back and find out who has been picked in the next category. चलें पता करते हैं टीम से कि किसको पिक किया गया है. मुल्तान सुल्तान्स कौन शेयर करेगा कि किसको पिक किया? We are extremely excited to announce that we have picked local fast bowler Muhammad Ali. All right. Local fast bowler Muhammad Ali has been picked. Obviously, we've seen him in the past as well, his performances. और बड़ा एक प्यारा नाम है जिससे इनको बुलाया जाता है. मोहम्मद अली को मुल्तान सुल्तान्स में अब इनको देखने को मिलेंगे. चलें जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, आपकी बारी फिर से आ गई. So your time starts now. Simmons alongside us, and we're having a chat. So tell me, Phil, now Karachi is one of the largest cities and, of course, one of the biggest franchises. And there's a certain level of expectations from the fans and everyone. In recent times, Karachi has not been very consistent. So when you decided to take up, what do you bring on the table? And what are your plans in terms to revamp the side? We see quite a few changes this year. Well, I think the first thing you look at, things haven't been well. So you find out what has been going wrong. And we looked at that and thought that we have to change up things. I mean, when you look back, there are players that have given a number of years, but sometimes that you need to just change up the dressing room and the atmosphere in the dressing room. So we looked at it and we decided, well, look, we want to change up things a bit and just find the right combination for us to do well in the tournament. Is it easy or difficult, because you've, of course, been a coach for the national sides also and for franchises, to gel in and bring in people from different parts of the world for a very short period of time? Does that really allow you enough to, get them together before the tournament ends as a team? Sometimes it doesn't, but it's up to the staff to work out who needs what to get them down the line that the team wants to go. And once we get them down the line that the team wants to go, how they achieve what we want from them. It's a very it's a very fresh change. We're talking about Karachi Kings, Azhar, ki kis tarah se changes leke aaye and how they've let go of a couple of players. It must be tough for them. How do you see his inclusion coming in as a head coach and then following the look of the new Karachi Kings, how it is right now? Obviously, it will be a fresh start for him as well. Obviously, the performance hasn't been great in the last couple of years. But one thing is that they are going to start fresh. They have already started in a way of change of a mindset. Atmosphere of the dressing room is very important, as Phil mentioned earlier on. And we spoke to the owner as well. They want to bring fresh faces to have a better environment in the dressing room. I think that is very important. As you asked the question, there's very short time. And if you can't build that, then it's going to be very tough. Doesn't matter how good players are, but unless the team is working in the right direction and one direction, it will get very harder and harder. I'm sure with the new look, the Karachi performance will rise again. Rise again. We hope so too. We'll come back to you, Phil. We've got a time. Another pick is ready, and let's find out that who is getting lucky as a player. Quetta Gladiators is ready to announce who they've got. एंड मोइन खान साहब का इशारा वहाँ से चल रहा था जो हम देख रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे.
वो ऐसे चले आप बता दें कि कौन है ऐसे उस्मान कादिर जी Usman Kadir. Usman Kadir recently got a 5-wicket haul as well, and we've seen what he can do. Leg spinners galore as always in the HBL PSL, and ek baar phir we'll get to see him in action, but this time for Quetta Gladiators, because we've seen him in different franchises, and this time it will be Quetta Gladiators. Okay जी, अगली पिक है लाहौर कलंदर्स की. कलंदर्स आपका टाइम शुरू होता है अब. लगता है कि ऑलरेडी डिसाइड कर लिया. ऑल स्माइल्स आकिब जावेद साहब, आतिफ राना साहब, बट टाइमर चल रहा है. All right, so let Lahore Qalandars make their pick. I'll have one last question because we'll have very less time and we'll let you get back with your team. When you talk about franchise cricket as a coach, I'm saying, and then the national sides, is there a huge difference in the two in terms of your workload? There's a huge difference. Number one, you with the national team all through. With the franchise, you come in and you have to make something click early. With the national teams, you have time to build up that. The good thing about the franchise is that I can buy players to fit in that. Yeah. Sometimes in the national team, you have players and you have to try and change them around, you know. So there's differences, but as a coach, you have to adapt. Has franchise cricket come out as a positive for world cricket, where you just to bring more faces and more cricketers on the forefront in front of television? Maybe they get picked by the national sides. Yeah, it does, but it also gives a lot of young players a chance to settle themselves, because if I'm completely settled financially, then sometimes I burst onto the scene with a lot more enthusiasm because I don't have to worry about that. So it has done that, and it has brought a lot of young people to the game. Okay. T20 has. Yeah. Well, Phil, thank you so much for coming to Pakistan and coming to our studios. I'm pretty sure that in your leadership, Karachi will surely give some sleepless nights to other teams. Okay. Thank you very much. All right. Okay, time for us to head out once again. Zainab is waiting, and Zainab, it's over to you. Okay, Lahore Qalandars, announce कीजिए किसको आपने pick किया. Dan Lawrence. Middle order batter Dan Lawrence has been picked all the way from England for Lahore Qalandars. That strike rate tells you a story as well. 143 का strike rate है, और ऐसे players हमेशा चाहिए होते हैं टीम को जो कि लंबे लंबे छक्के भी मार सकें. So congratulations to Lahore Qalandars. ठीक है जी, अगली बारी. The next pick is Multan Sultans. Multan Sultans, आपका टाइम शुरू होता है अब. Okay, Multan Sultans working hard with a brand new look to their side. There's Hijab Zahid, their GM sitting right in the center. Azhar, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि franchise youngsters को, लोगों को मौका दे रही है इस फील्ड में आने का और उनको उनके decisions को जो है appreciate करने का. Just not the cricketers, but someone like Hijab and many youngsters in their camp. देखिए बिल्कुल you know जो young generation है, जो नए ideas हैं, they should come along, especially in franchise cricket. Then you obviously can build it towards the national sides. क्योंकि हमने देखा कि जब आप एक ही set of idea के साथ चलते रहे, with due respect, it becomes वो एक जैसे ही लगता है ना. So you need to give freedom to the new people to express themselves, to give new ideas and back them. Then obviously you will see the fruits of that. न्यू से याद आया, अभी मैंने जिक्र किया था, कल ही हम यहाँ पे थे रिहर्सल्स के लिए. आरिफ याकूब का मैंने नाम लिया था, लेग स्पिनर. ही गॉट पिक्ड बाय पेशावर ज़ल्मी. उसके अलावा ये सजाद जूनियर आई थिंक है, वो कीपर बैटर हैं. रिसेंटली अपनी बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिया एंड ही गॉट पिक्ड. जो नेशनल T20 में हाईएस्ट रन गेटर वो रहे हैं. तो ये जो परफॉर्मेंसेज हैं रायगा नहीं जा रही, क्योंकि जो हेड हंटर्स उन्होंने देखा है और अभी कोई 4 दिन ही हुए हैं ये ख़त्म हुए हुए, एंड दे आर सीइंग रिजल्ट्स. जी बिल्कुल. आई थिंक द थिंग इज व्हेन जो आप जब टीवी पे परफॉर्म करते हैं, लोग देखते हैं. अब फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी हो गई है, जो लोग एफिलिएटेड हैं फ्रेंचाइज के साथ, वो भी लोग देख रहे होते हैं कि हमें स्पिनर चाहिए, तो कौन से स्पिनर हैं सर्किट में,
कौन से बैटर्स हैं, कौन से यंग फास्ट बॉलर्स हैं. आई थिंक ये एक्साइटिंग थिंग है फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ कि बड़ी जल्दी लोग आइडेंटिफाई होते हैं और टीम्स के हिस्सा बन जाते हैं. Okay. All right, time for another pick. And when we come back, I'll introduce you to a gentleman who's come to Pakistan and we'll thank him for coming here. And then we'll ask him what his plans are. Right now, back to the stage. And it's back to Multan Sultans, who's going to share with us who they've gone for in this category. Ji. We are very happy to announce the return of our destructive batter, Usman Khan. Top order batter from UAE, Usman Khan, also a wicketkeeper, has been picked by Multan Sultans. ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड पेशावर ज़ल्मी का टाइम आ गया है कि वो देखें टीम्स आहिस्ता आहिस्ता दे टेकिंग शेप. वी आर गेटिंग टू सी अ गुड कॉम्बिनेशन बीइंग फॉर्म्ड बाय ऑल द साइड्स हियर. पेशावर ज़ल्मी, आपका टाइम शुरू होता है अब. All right, so here we are. I was talking about a guest who's come to Pakistan. I'm going to welcome Mike Hesson here in the studios and, of course, in Pakistan. Mike, great to have you here. Thank you. It's great to be here. I was talking to Phil just now, Phil Simmons, and same question to you as a coach. This interview is going to be as short as possible. And again, franchise coaches also have a very short stay. And how difficult or easy is it for you to gather a squad around who don't know each other necessarily, different styles, different cultures, and get the work out of them as a team? I think it's important you do the work before you start. So once you get your squad selected, rather than waiting till February, it's really important that those conversations start straight away. So by the time you arrive in February, you're not meeting and greeting. You're actually, everybody knows what their role is. They've already started to plan and prepare for it. So at that stage, you've already started to build those relationships as a coach. I think if you just come in straight away and try and do it within 2 or 3 days, it's just not going to work. And it's just so tough, isn't it, Azad, that you can't fix a problem as a coach if a player is having an issue because time is so short that you got to, sadly move on to the next option available, and you got to be ruthless. Yeah, obviously, he's truly speaking like experienced coach in franchise cricket because if you start in 2-3 days or a week, even a week is not enough. Yeah. You have to start preparing before. You obviously, as a coach or as a team management, you know which players are struggling at the moment. It can happen to any player at any stage. So those conversations are important as well. How to build their confidence back in, how to remind their best performances. So it's a short time, but if you start working at the right time, actually it can work as well. So I think being experienced at this level and at this cricket is very important as a team management as well. We have a Islamabad pick ready, and then I'll have one last question for you. So let's head to Zainab. Peshawar Zalmi. Peshawar Zalmi is ready to announce who they've picked in this category. Mohammad Akram Saab, you have the mic. Umair Afridi. उमैर आफरीदी नेशनल T20 में फीचर कर चुके हुए हैं एंड ये बताते चले कि it's great to see that so many of the performers of national T20 are getting a chance in the HBL PSL. Left-arm fast bowler Umair Afridi will be seen in Peshawar Zalmi, and it's now time to move over to Islamabad United. Islamabad United, your time starts now. रेहान के पास already चिट है और उन्होंने already decide कर लिया, लेकिन आपका timer तो फिर भी चल रहा है. All right, Mike Hesson alongside. He's the head coach of Islamabad United, who's making their pick. One quick question before we let you go to your team. Why Islamabad United? What made you choose them? And of course, you must have done a bit of study what they have been as a franchise. They won twice. Recent times, we've seen shades of baseball in their cricket. They go out there and just hit everything out, and they don't really care if they finish less than 100 or go all the way to 200. What is that you want to bring to this franchise as a head coach without giving too much away, of course, as a plan? Yeah, just a little bit of calmness, I think, is important. So obviously spoke to Ali Naqvi, who owns the franchise, and really enjoyed their conversation in terms of where he wanted to take Islamabad United. I also remember spending some time with Dean Jones many years ago, and when he first started setting up Islamabad United, and some of those players are still there. Yeah. So I remember vividly some of those conversations that he had. And it's a franchise that has a rich history, and obviously hasn't done as well as they would like in recent times, but there's a huge amount of talent there. So I mean, a big part of my job is just trying to, I guess, redirect that a little bit, and rather than being too high and too low, just bringing that consistency and calmness to the team.
Great. Mike, good luck to you with the picks, of course, and of course with the season to come. Thanks for joining us. Thank you. All right, time for us to head out and find out who has Islamabad United picked now. Well, they definitely didn't take much time to decide who they want this time. Islamabad United. My fellow national T20 champion, Umair bin Yusuf. All right. Umair bin Yusuf, over 400 runs in the national T20. Fourth. All right. Hang on, Hanan. झंडा लहराया जा रहा है. पहले भी जो है झंडा लहराया गया था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से और अब उन्हीं के साथी ने जो है झंडा लहरा दिया. So we need to all calm down and let's see what they have to say. उन्होंने obviously झंडा लहरा दिया. That means रेहान साहब उनके पास एक और चिट भी रेडी है. रेहान, sorry. Apologies आ गई हैं उनकी तरफ से, but they have a contingency plan in place. आजम माइक पे प्लीज अपनी थॉट्स शेयर करें. ही आजम हैज सम इनसाइट टू गिव अस विद रिगार्ड्स टू व्हाट्स जस्ट हैपेंड राइट नाउ. तो हम लोग Right to match has got. Gee, who's your new player instead of the one that's been preserved by Koira Gladiators? Qasim Akram. Former under-19 captain Qasim Akram. Off spin भी कराते हैं, batting भी कर लेते हैं, and always handy against those left-handed batsmen. Qasim Akram has gone to Islamabad United. ठीक है जी, कराची किंग्स आपका टाइम शुरू होता है. ऑलराइट, ये अच्छी पिक है कासिम अकरम. इनकी काफ़ी बड़ी सीवी है. मेरे साथ अभी यहाँ पे उरूज बैठी हैं. उरूज से मैं बात करता हूँ. कासिम अकरम का जिक्र करें, पाकिस्तान ए के लिए खेला है, इमर्जिंग एशिया कप में थे, सेंट्रल पंजाब का कप्तान इनको बनाया शुएब मलिक की मौजूदगी में. उसके अलावा रिसेंटली भी बड़ी शानदार इनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं. कराची किंग्स में थे पिछले साल. अ ग्रेट बैटर टू हैव डाउन द ऑर्डर, कि उसको फिनिशर के तौर से भी कह सकते हैं, बट एंड ग्रेट टू हैव एज एन ऑफ स्पिनर एंड गन फील्डर. I think it's a reflection of A, his hard work, and B, consistency in the system. अक्सर ये होता है कि हम देखते हैं कि प्लेयर सिस्टम में दाखिल होता है और एज ग्रुप लेवल्स पे परफॉर्म करता है and then they fizzle out. So I think it's very nice that platform has remained for him, because the next step will be कि इंशाल्लाह अगर वो पाकिस्तान कलर्स में खेले तो कहीं ना कहीं at least white ball shorter version में PSL acts as bridging the gap between एज ग्रुप और डोमेस्टिक क्रिकेट, ए लेवल क्रिकेट, देन ऑब्वियसली पाकिस्तान लेवल. तो जिस तरह आपने कहा यूटिलिटी प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर है, ही नोज हिज स्किल, ऑब्वियसली लॉट्स टू लर्न इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट अ वेरी गुड पिक एंड अगेन गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान. अच्छा, यूजुअली कहा जाता है कि T20 की जब आप बात कर रहे होते तो उसमें आपको ज़्यादा स्पेशलिस्ट की तरफ नहीं जाते लोग. कोशिश करते हैं कि क्योंकि आज की तारीख में आप किसी को छुपा नहीं सकते फील्ड में. सो यू गॉट टू बी एक्टिव इन योर फील्ड गुड इनफ, एंड देन ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव एन ऑप्शन एज अ बॉलर पार्ट टाइम है तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं. बट किसी स्पेशलिस्ट का पिक होना इस माहौल में वो भी एक बड़ी कामयाबी. जो आरिफ याकूब का जिक्र हुआ, ही कैन हिट द बॉल, यस, but he is a specialist leg spinner. But leg spinner is a game changer, and then if you look at spinners in general in Pakistan, तो एक आप खुद ही आप ढूंढ रहे हैं, you're fishing them out क्योंकि नहीं है उस क्वालिटी के, नहीं है उस इम्पैक्ट के, नहीं है, और हैं जितने हैं वो बहुत कम है. इवन एट द नेशनल लेवल वी आर फाइंडिंग इट स्ट्रगलिंग टू इट्स अ लिटिल बिट स्ट्रगलिंग कि हमारे पास उस तरह नहीं है. तो आई थिंक ए लेग स्पिनर इन एनी फॉर्मेट, शॉर्टेस्ट वर्जन में एनी वेज, क्योंकि बैटर आपके पीछे जा ही रहा होता है विद द बॉल टर्निंग अवे, और जिस कंट्रोल से उन्होंने अभी पिछले दिनों नेशनल T20 में बॉलिंग की, दैट इज प्रॉब्ली व्हाट इज ब्रॉट सो मच अटेंशन टू हिम हियर. I'm pretty sure. We'll talk more on certain players. इसमें सजाद जूनियर भी है, but right now Karachi Kings are ready with their pick, I think. Karachi Kings is ready to announce who they've got in this category. Who's going to be announcing this? Haider Azhar ji. Anwar Ali. Bowling all-rounder Anwar Ali has been picked by Karachi Kings. We know his finishing ability, known for his swing bowling as well. A valuable addition to Karachi Kings. Previously, we've seen him with Quetta Gladiators, so he's a regular in the HBL PSL setup. Okay, we'll stay with Karachi Kings. They get a chance to pick another player, and your time starts now.
ये भी एक अच्छी पिक रही। आई थिंक ये पहले मुल्तान सुल्तान में थे उरूज अनवर अली और अब कराची ने इनको पिक किया। रिसेंटली नेशनल T20 में अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने यूज़ किया। ही वाज नॉट 100% फिट, बिकेम कमिंग फ्रॉम एन इंजरी, बट अ यूटिलिटी प्लेयर। आई मीन ऑल राउंड, बैट के साथ भी, बॉल के साथ भी, एंड अगेन अभी भी वेरी वेरी क्विक इन द फील्ड। हमारे साथ मौजूद अब हमारे स्टूडियो में अनदर नेम जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स फ्रॉम इट्स इंसेप्शन एंड नाउ ही हैज़ अ न्यू रोल। मोइन खान साहब हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम फाइन, थैंक यू। वाइसलाम। एक डिफरेंट रोल, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट यू स्टिल विल बी अ पार्ट ऑफ हाउ क्वेटा ग्लैडिएटर्स विल लुक दिस सीजन। वेल डेफिनेटली यू नो कभी कभार ऐसी ज़रूरत पड़ती है जब आपको टीम में चेंजेस करनी होती हैं, जस्ट फॉर द गुड। अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट 3 सीजन्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। दैन वी हैव डिसाइडेड एज अ टीम मैनेजमेंट कि हमें जो है शेन वॉटसन, जिसने हमें ऑलरेडी इतना सर्व किया हुआ है, ट्रॉफी जिताई थी 2019 की, इतना वास्ट एक्सपीरियंस है यू नो T20 क्रिकेट, तो इस वजह से हमने कोशिश की कि उसको लेके आएँ और कोचिंग असाइनमेंट दिया जाए उनको। एंड ही वाज आल्सो वेरी कीन टू सर्व क्वेटा अगेन। तो दैट वाज द ओनली चेंज एज फार एज द मैनेजमेंट इज कंसर्न। तो नदीम भाई से भी जिस वक्त बात हुई, he was very much confident and very clear in his thoughts कि why not, yeah, it's going to be a good change for Quetta Gladiators. So I hope it will work for this season. So, yeah. yes. आपके पास वापस आते हैं, एक पिक रेडी है, then we'll talk more to मोइन खान। Karachi Kings, you're ready to announce who your next pick is. Who wants to announce? Haider Azhar. We've picked Pakistan under-19 star Arafat Minhas. अराफात मिन्हास जूनियर लीग का प्रोडक्ट हैं और अब देखेंगे कराची किंग्स में। पहले भी हम इनको देख चुके हुए हैं एंड वी नो व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। ऑब्वियसली यू आर लुकिंग फॉर ऑल दोज ऑलराउंडर्स जिनके पास कैपेबिलिटी हो। अराफात मिन्हास इज अगेन वन सच प्लेयर हु विल ऐड वैल्यू टू कराची किंग्स। ओके, इट्स टाइम टू मूव ओवर टू पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, वी बैक इन द स्टूडियोज। मोइन खान साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं इस सीज़न क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। आपने भी जिक्र किया कि जिस तरह से देखा 8 सीजन्स को, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हमारी कभी बात इस बारे में हो नहीं पाई। जो हम ऊपर बैठे होते हैं कमेंट्री में, तो हमें ऐसा लगा कि आपकी जो टीम थी जब UAE में हो रहा था HBL PSL, वो टेलर मेड थी उन कंडीशंस के लिए, लेकिन जब वही टीम यहाँ रेप्लिकेट की तो शायद वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। ये ऐसा लग रहा था या वो सब? नहीं, ऐसा हुआ है बिल्कुल। देखें, हमने जब UAE में क्रिकेट हुई थी, हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और उन पिचेस को देखते हुए हमने अपनी टीम को फॉर्म किया था, यू नो, और वो क्लिक भी की। एट टाइम्स होता है जब कंपटीशन के अंदर बहुत सारी टीमें compete कर रही होती हैं, यू नो, सबके दिन होते हैं। क्रिकेट में हम कहते हैं ना हमेशा, गुड फॉर्म एंड बैड फॉर्म, गुड डे एंड बैड डे, तो इस तरह का सिलसिला चलता है। तो कभी कभार ऐसा होता है, जब अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा इसको, कि जब हमने 2019 में सिकंदर टूर्नामेंट जीता, तो जिस वक्त वो रिटेनिंग रूल था फॉर सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स आप रिटेन कर सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर्स थे ना चाहते हुए हमें यू नो रिलीज़ करने पड़े, तो वहाँ से कॉम्बिनेशन ख़राब होता है। ऑल्दो इट्स अ ब्यूटी ऑफ द PSL एज वेल कि हर टीम को एक फेयर मौका मिलता है हर सीज़न में एक अच्छी टीम फॉर्म करने का, यू नो, एक तरीके से ठीक भी है। बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि जब आप एक अपनी स्ट्रेंथ को लेके चल रहे होते हो, एक प्लेयर्स का ग्रुप बन गया होता है एज अ परफॉर्मर, अच्छा, यू नो, वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है किसी को रिलीज़ करना और उससे आपकी कॉम्बिनेशन भी ख़राब होती है। तो एट टाइम अगर आप देखें पूरे PSL के अंदर ऑलमोस्ट सारी फ्रेंचाइज ये टूर्नामेंट जीत चुकी हैं, तो ये इसकी ब्यूटी है इस PSL की, बिकॉज ऑफ दिस रूल कि आप जो विनिंग टीम कॉम्बिनेशन होता है उस कंप्लीटली उसको रिटेन नहीं कर सकते। सही। I'm sure you will have a question or two in terms of retentions जिन्होंने बात की। इफ्तिखार इन्होंने रिलीज़ कर दी है, बट रायली रूसो इनके पास वापस आ गए जो इनकी मेन गन रहे हैं। We'll talk to him about that. फिलहाल एक पिक रेडी है, we'll go to Zainab. All right, we are ready with the announcement from Peshawar Zalmi. Peshawar Zalmi, बताइए क्या? From Warwickshire and England Lions, Dan Mosley. There you go. Daniel Mosley has been picked. Batting all-rounder, under 19s में भी feature कर चुके हुए हैं और इंग्लैंड के काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि HBL PSL ड्राफ्ट के लिए नज़र आ रहे हैं
और Peshawar Zalmi has picked Daniel Mosley all the way from England as their all-rounder. Moving forward, we now move towards Islamabad United once again. Islamabad United, आपका टाइम शुरू होता है अब. All right, back here in the studios, मोइन खान साहब हमारे साथ हैं. जब आप बात करते हैं किसी फ्रेंचाइज की तो उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है. आपकी एज हेड कोच ये पिछले 2-3 सीजन से क्या एक्सपेक्टेशन या डिमांड है टीम से, एंड हाउ यू लुकिंग टू इम्प्लीमेंट दैट इस सीजन में? वेल एज अ हेड कोच ऑफ कोर्स डिमांड यही होती है कि बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द डे दी जाए, एंड एवरीबडी ट्राइज, इट्स अ गेम एट द एंड, एक प्लेयर अच्छा करता है, एक प्लेयर नहीं कर पाता, मुश्किल होता है, बट एवरीबडी ट्राइज. अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने पिछले 3 साल के अंदर, बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जिनको हमने रखा टीम के अंदर, अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अनफिट हो गए, तो कॉम्बिनेशन एक जो कहना चाहिए ना सिकंदर, जो आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन, वही अनफॉर्चुनेटली हम फॉर्म नहीं कर पाए उन प्लेयर्स की वजह से टाइम टू टाइम, एंड देन there were certain players who were available only for certain number of matches, so it's very difficult as a coach to उसको गैदर करना, उस विनिंग कॉम्बिनेशन को फॉर्म करना, तो मुश्किल हो जाती है एट टाइम्स. तो वही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हर्ट की है. आई होप इस दफ़ा हमने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज की है एंड कोशिश की है मोस्टली प्लेयर्स को कि जो प्लेयर हम पिक करें वो अवेलेबल हो फॉर द एंटायर टूर्नामेंट. ज़्यादा टर्म के लिए. या No, I think वही जो बात करें, I remember at one toss last year, I think सरफराज said कि आज 11 ही बचे हैं, because last year आप लोग काफ़ी availability and injuries have become a big issue. But letting go of obviously Naseem, Nawaz and even Iftikhar, but I still look at it on paper, Wasim Junior, Abrar and Riley Rasso, तो आप लोगों का core इस दफ़ा in terms of retention looks fresh, impactful and could be the change. या आप देखें तीनों ही बहुत ही इम्पैक्ट प्लेयर हैं. राइली रूसो हो गए, अब्रार हो गए, एंड ऑफ कोर्स वसीम जूनियर ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड बॉलर. इवन नॉट ओनली बॉलर, ही कैन हिट द बॉल एज वेल, सो दैट्सली हमेशा कोशिश यही होती है टीम फॉर्मेशन के वक्त आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन देखें. हमने अनफॉर्चुनेटली दे वर वेरी गुड प्लेयर्स जिनको हमने रिप्लेस किया, इफ्तिखार भी नो डाउट, बट अनफॉर्चुनेटली चाहते हुए हम उनको उन नंबर्स के ऊपर कभी या कभी कभार उनको वो सर्टेन नंबर ऑफ ओवर्स नहीं मिले जहाँ पे वो परफॉर्म कर पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इसी वजह से हमने कोशिश की. रायली को हमने रिलीज़ कर दिया था जिस वक्त हम 2019 के जीते थे, ना चाहते हुए. अनफॉर्चुनेट था हमारे लिए, एंड वी मिस्ड हिम, एंड हमने बड़ा रिग्रेट भी किया इस चीज़ के ऊपर. बट नाउ एक मौका मिला था कि यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे. नसीम वॉज नॉट रेडी टू प्ले फॉर कोयटा ग्लैडिएटर. आप कह लें कि उसकी एक अपनी थॉट थी कि वो जाना चाहता, तो और प्लेयर का राइट है, तो आई थिंक उसको हमने बिल्कुल बहुत ही एमिकेबली हैंडल किया चीज़ों को, उसकी विश को सामने रखते हुए उसको रिलीज़ किया, एंड देन वी यूटिलाइज दैट ऑप्शन ऑफ ट्रेड. तो वो उसमें हमें रायली मिल गया, ये बड़ा अच्छा हो गया हमें, बैक होम, और सॉरी इस्लामाबाद से हमें वसीम जूनियर और अबरार मिल गए. तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त हमारे कॉम्बिनेशन में जो है कहना चाहिए एडिशन है टू विन दिस टाइम एंड ट्राई आवर बेस्ट इंशाल्लाह. ग्रेट. एक सवाल और करेंगे इनसे कि आजम खान के लिए क्या प्लान है इनका, फिर भी वापस आएंगे. एक पिक रेडी है, विल हेड टू ज़ैनब अब्बास. इस्लामाबाद यूनाइटेड की पिक रेडी है, अनाउंसमेंट भी रेडी है. शदाब खान के हाथ में माइक है. जी शदाब. शहाब खान फ्रॉम एबटाबाद. मिलता जुलता नाम. Shahab Khan from Abbottabad has been picked by Islamabad United, all-rounder हैं, and यहाँ पे जो strike rate आपको नज़र आ रहा है, that's perhaps one of the reasons why Islamabad United has picked him. 153 का strike rate है. It's good to see कि अब हम उस stage में आ रहे हैं जहाँ आपके local talent को भी opportunities मिल रही हैं. So there you go, Islamabad United has picked Shahab Khan. And this is pretty much it when it comes to the silver round category. Remember, Quetta Gladiators अपनी pick खो चुके हैं because उन्होंने थोड़ी सी मस्ती की बीच में, लेकिन वो allowed है draft rules के मुताबिक. So the teams are shaping up well. The combinations are coming forth, but it's now time to head over to the studios. ऑलराइट, तो हम बात कर रहे हैं, मोइन खान साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के. और मैंने पूछा था आज़म के बारे में, मैंने कहा ये सवाल तो आपको सैकड़ों लोगों ने पूछा होगा, बट इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड ऑफ कोर्स गेम प्लान्स तो बनाने होते हैं, बट
how does one react अगर आजम खान मार रहा है क्वेटा के बॉलर्स को, तो आप सोचते होंगे मैं खुश हूँ या मैं ना खुश हूँ? तो नहीं, एज अ फादर ऑफ कोर्स सिकंदर, किसी भी बाप के लिए इससे बड़ी क्या खुशी होगी उसका बेटा इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म कर। बट एट द सेम टाइम एज अ प्रोफेशनल, एज अ कोच और टीम डायरेक्टर, मैं डेफिनेटली थोड़ा सा हर्ट होता हूँ ऑफ कोर्स कि टीम की पिटाई हो रही है या आज़म अच्छा खेल रहा है। तो नेचुरली हम डिस्कस करते हैं ऑफ कोर्स, टूर्नामेंट में जब बैठते हैं आपस में, टीम स्ट्रैटेजी बनती है तो प्लानिंग होती है ऑफ कोर्स। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स वेयर आज़म को पकड़ा जा सकता है तो अगर बॉलर वहाँ बेचारा गेंद नहीं कर पा रहा उस वक्त और वो प्रेशर में आ गया उसके हिटों से, तो बड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक दैट इज़ द टाइम एक्चुअली वहाँ कैप्टन का बड़ा रोल होता है तो जो भी हमारा कैप्टन है नेचुरली उसको वहाँ पे वो पॉइंट पिक करना चाहिए कि किस तरह बॉलर्स को रिएक्ट करना चाहिए अगेंस्ट आज़म। अच्छा उरूज, थोड़ा सा क्वेटा ग्लैडिएटर्स से हट के ये सारा सवाल है। ऐसा फील होता है दूर से कि इन्होंने एक सर्टेन लेवल का फ्रीडम दिया है आज़म को इन टर्म्स ऑफ चूजिंग व्हाट ही वांट्स टू फॉर हिज क्रिकेट। ऑफ कोर्स वो शायद रिफ्लेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जब फादर फॉर्मर इंटरनेशनल रह चुके हो तो अगर ज़्यादा अपनी इनपुट हो तो फिर देन यू फील समवन इज लाइक टाइड अप, बट यू डोंट फील दैट इन आज़म खान द वे ही इज बीन स्ट्राइकिंग द क्रिकेट बॉल। I mean, he's a different sort of a player. बहुत दफ़ा ये होता है that the parents want to live their dreams for their children and the child probably has some other ideas. And I think it's ज़रूरी है कि आप basic guidelines, basic rights and wrongs and एक कहते हैं overarching overview of the world ज़रूर देते हैं, but you can't control them. At the end of the day, he's an adult. He's obviously got his own expertise. He's already obviously got his own mindset and skill and how he wants to utilize it. And you'll always find that those kids probably do better once they're let loose and let them experience the world on their own. क्योंकि वो I think पीछे से remote control चलाना is slightly more difficult. He's got a huge expectation to live up to, which is also wrong in a way. Because when you've got the world-class player as former Pakistan captain as well as your dad, तो वो वहाँ पर एक ऑटोमेटिकली जो है ना वो जोड़ा जाता है कि यार आपके अब्बा ने ये कहता, तो वो वैसे ही प्रेशर होता है। तो आई थिंक उसके बाद छोड़ देना चाहिए। एंड यू सीन दैट ही इज ऑब्वियसली ग्रूम्ड इन हिज ओन वे। बिल्कुल, मैंने भी यही कोशिश की है कि आज़म को उसका गेम फ्रीडम के साथ खेलने दिया जाए। Wherever he want to play, he should play, and बिल्कुल फ्रीडम के साथ, क्योंकि जब तक आप किसी भी एज अ कोच में बात कर रहा हूँ इस वक्त, किसी भी प्लेयर को आप फ्रीडम नहीं देंगे, आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं उसको, वो या वो कैसे एक्सपोजर उसको मिल सकता है। तो इट वेरी मच डिपेंडिंग ऑन द कैप्टन एंड द कोच कि हमेशा शोल्डर पे आपके जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं जिनको आप समझते हैं उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके शोल्डर पे आपका हाथ होना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। डोंट वरी, जस्ट गो प्ले योर गेम, वी आर बिहाइंड यू, डोंट वरी। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि आप इससे अवेयर है कि नहीं, अभी रिसेंटली नेशनल T20 में ही वन एन इम्पैक्ट प्लेयर अवार्ड आज़म, and he came to me and he said, I feel that my teammate was more impactful and I want to give this award to him. So it just shows that you're not just a performer individually, but you're also a team man. Yes, a younger player, but he also realizes that I don't want to miss out on the effort that player has put in. Maybe you can share it, but he gave the award. The idea was not sharing the money with the person. It was the idea was sharing that stage with that individual, and that is very important. And that, I guess, shows the kind of culture and the kind of things you've instilled in young Azam Khan. बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो अभी recently I've just purchased a watch, and then I thought I should wear it. मैं रास्ते में जा रहा था, then my son was with me, the elder one. एकदम मुझे ख्याल है, मैंने कहा यार मैं इसका स्ट्रैप छोटा कराने जा रहा हूँ। मैं आज़म जब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है मैंने इसको कोई गिफ्ट नहीं दिया। वाई नॉट वैस हम आज़म को एक घड़ी दे देते हैं। उसको मैंने घड़ी दे दी यार, वो 3 दिन बाद मेरे लिए एक उससे महंगी घड़ी खरीद के लिए आई वाज सो हैप्पी। तो आज़म इसी तरह का है। आज़म लव्स शेयरिंग एवरीथिंग एंड आई मीन ही डोंट केयर अबाउट मनी, और माशाल्लाह उसके अंदर एक वो कहना चाहिए ना जो जज्बा जो एक स्पोर्ट्समैन में होना चाहिए वो नज़र आता है हमेशा। ऑलवेज इज़ अ टीम मैन बिकॉज ही रेडी टू गिव लाइक सेक्रीफाइस एंड शेयर एवरीथिंग विद द टीममेट्स। आपको नई पोजीशन डायरेक्टर क्रिकेट एंड कोटा ग्लैडिएटर्स का सॉरी ये सीजन best of luck उसके लिए, and we hope that Quetta Gladiators once again has been but completely comes back on track the way we know them. Thank you very much. Thank you very much. All right, so here we are now. We have a lot of things to share with you guys. The teams, of course, how they're looking, and जो अब तक की selections हो चुकी हैं उसकी formation कैसी नज़र आ रही है, और
कौन सी टीम किस तरह से अपने आप को आगे लेके चल रही है? जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड उरूज दिख रहा है सामने, और अपार्ट फ्रॉम देयर रिटेंशंस जो कि रेड में हैं, ये जो अभी तक पिक्स इनकी हुई हैं, हाउ डू यू सी इन देयर Islamabad United, this one and the one which has been in the past 2 seasons? Yeah, I think you see the quick bowlers in there. You see Tamal Mills obviously got the experience, but Matthew Ford, West Indies upcoming, अभी recently उन्होंने debut भी किया. Salman Ali Agha has made a name for himself. He's obviously got the consistency factor. Shorter version में at this PSL अब वो क्या करते हैं? So I think this is shaping up quite nicely. अब हम पहले बात कर रहे थे कि नसीम शाह का जो impact है वो तो होगा ही. जो internationals में हेल्स और मनरो हैं वो भी, and then शादाब leading this team in red and yellow. So I think it looks nice and shapes up nicely so far. Yeah, and I've got another guest here. He's been part of HBL PSL since its inception, and he's been part of this franchise, of course. Hassan Chima, you've seen this franchise very closely. You know how they operate and what's their core. और अब आपका एक नया रोल है, भाई यू हैविंग एन ओवरऑल लुक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. सो इसमें अभी हमने देखे कुछ ऐसे लड़के पिक हुए हैं जो रिसेंटली नेशनल T20 में परफॉर्म करके गए, एंड योर हेड हंटर्स वुड हैव बीन अराउंड लुकिंग फॉर बेटर क्रिकेटर्स फॉर पाकिस्तान. बट हाउ डू यू सी दिस ईयर्स HBL PSL for Islamabad? I'm very interested to know your take on that. Are they any different from the time you were with them? To be honest, not really. I think एक दो picks हैं जिसके ऊपर if I was on the table तो I would have disagreed with those. I know जैसे रीस टॉपली अभी मुल्तान में गए हैं, मैं 3 साल उनको पिक करवाया ज़बरदस्ती रेहान से लड़के. Every time he would say कि नहीं वो नहीं आएगा, and this year it was always between Mills and Topley usually for that position. तो आई थिंक कि इस साल मे बी वो टॉपली की तरफ इसलिए भी नहीं गया बिकॉज वो जो नया बॉल का इशू रहा है ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स इस्लामाबाद का, विद इमाद कमिंग इन, विद नसीम कमिंग इन, वो इशू शायद इतना ज़्यादा ना हो. आई फील लाइक कि अभी इमर्जिंग कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज ऑलमोस्ट विद एवरी टीम आई फील लाइक देयर इज़ वन होल समवेयर इन एवरी स्टार्टिंग 11 राइट नाउ. तो वो देखना होगा आगे इमर्जिंग का कैसे होगा. बट आई थिंक कि इस्लामाबाद का जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि लास्ट ईयर वाज द फर्स्ट टाइम इन 6 years के wasn't the first or the second best batting unit. Zalmi, I think, has taken over Islamabad as the leading batting unit PSL में. और इस साल जब आसिफ उनके साथ किया तो वो पहले से भी ज़्यादा तगड़ी हो गई है. तो इट बी इंटरेस्टिंग कि ओवर द years किस तरह आइडेंटिटी चेंज होती है फ्रेंचाइज की. I like what Mike Hessen said. I asked him what is Islamabad going to do now. With a little more calmness, and then we'll see where it goes. Okay, let's talk about Lahore Qalandars. पिछले 2 साल से ट्रॉफी को पिक कर रहे हैं और कोई वजह ही है कर रहे हैं, और इनको बहुत स्ट्रॉन्ग गैंग, इनकी बॉलिंग ऐसी है कि किसी भी साइड को किसी भी दिन उड़ा दे, और बैटिंग फिर जब इनके 2-4 बैटर ऊपर से फ़खर जमान क्लिक कर जाए, वैन डे डुसन एक बहुत बड़ी इंक्लूजन है इनके इसमें. हाउ डू यू सी दिस वन, उरूज? I think that Rassi Van der Dussen is a very, very big pick. I think probably one of the prime picks of this HBL PSL draft so far. Had a fantastic World Cup for South Africa as well, और फ़खर जमान के साथ in combination, even साहिबजादा फरहान recent national T20 में सबसे ज़्यादा highest strike rate इनका था. तो where you look at Lahore Qalandars as a dominant bowling powerhouse, I think they've done a very good job with the batters as well, even Dan Lawrence. So I think ये जो है क्योंकि बीच में आपके पास डेविड वीसा और सिकंदर रजा हैं, and then you also put Abdullah Shafiq, who I think is very technically sound but still very abled in the shorter version of the game. So they are starting to look as a very complete unit. जो हम अक्सर लाहौर के साथ कहते हैं कि यार बॉलिंग तगड़ी है, बैटिंग फ़खर देख लेगा. क्या लगता है आपको ऐसा कि क्योंकि बॉलिंग इतनी तगड़ी है, they can play around and experiment a bit with their batting from the past seasons, I'm saying? I think छुपा देती है बॉलिंग. जो फर्स्ट टाइटल विन थी उसमें तो उनकी बैटिंग भी डोमिनेंट थी, बट लास्ट ईयर अगर आप देखें तो वेरियस मैट्रिक्स में 4th या 5th ओवरऑल आ रही थी, बट उनकी बॉलिंग इतनी डोमिनेंट थी कि कोई करीब भी नहीं आ रहा था. तो अब रादर देन आई थिंक स्मार्ट डिसीजन लिया है कि रादर देन कि हम राशिद को डायरेक्टली रिप्लेस करें, बिकॉज कोई राशिद खान का नेमुल बदल नहीं है, तो उसकी बजाय अगर आप बैटिंग पे ही फोकस करें. आई एम स्पेशली हैप्पी फॉर साहिबजादा, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है आफ्टर द ड्राफ्ट उससे जब बात हुई थी, आई हैव नोन हिम सिंस PSL 2 या 3 में वो पिक किया था हमने, तो तब से उसका था कि मैं बैक टू बैक आई बिन द टॉप रन स्कोरर, और हिज एग्जैक्ट वर्ड्स वर कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में टॉपर होना जो है गुनाह है. एंड आई तब भी बात हुई व्हेन आई जॉइंड द सिलेक्शन कमेटी, तब भी बात हुई कि मसला ये नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ रन, इट्स अबाउट द स्ट्राइक रेट. एंड यू सॉ हिम दिस ईयर
पावर प्ले में जिस तरह से उसने एक्सेल किया है, ओवरऑल इवन आफ्टर द पावर प्ले जिस तरह से वो एक्सेल कर रहा था, इट्स नॉट जस्ट हिम कि आई एम हैप्पी फॉर हिम और उसको रिवॉर्ड मिला है, नॉट जस्ट गोल्ड कैटेगरी डायमंड में वाइल्ड कार्ड हुआ है, बट इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर जितने भी आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं कि रादर देन सेइंग कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, आप ये देखो कि आप में कमी क्या है एंड उसको आपने ओवरकम किस तरह करना है। एंड आई थिंक कि उससे बेहतर एग्जाम्पल इसकी इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई नहीं है। कराची किंग्स उरूज ये आपकी टीम है, वापसी हुई है केरन पोलार्ड की, पहले थे कराची किंग्स का हिस्सा, लेकिन इसमें ऑफ कोर्स कुछ ऐसे नाम, टिम साइफर्ट, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी Your favorite. One of yours. नॉट माय फेवरेट, आई डोंट इवन नो हिम पर्सनली, बट हाँ इनको देखा खेलते हुए। शान मसूद एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इंक्लूजन है, एंड देन यू हैव हसन अली, इनको पहली बार मैं रेड के अलावा किसी कप में देखूंगा, नहीं मुझे याद भी नहीं है, ज़ल्मी तो देखा है। हाउ डू यू सी दिस होल सेटअप एट द मोमेंट? हम कराची की बात कर रहे थे, आई थिंक एक शफल की ज़रूरत थी। आई थिंक शान मसूद ब्रिंग्स दैट माइंडसेट या विजन आप कह लें, आई थिंक पोटेंशियल कैप्टन मटेरियल इज़ वेल। हसन अली विद ऑल हिज एक्सपीरियंस, जेम विंस, शोएब मलिक, तबरेज शमसी, कोर ग्रुप बड़ा अच्छा है। बट टिम साइफर्ट की आपने बात की, डैनियल सैम्स ऑस्ट्रेलिया से, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक ये जो कंप्लीट पैकेजेस वाली बात है, कायरन पोलार्ड एक्सपीरियंस एंड द पावर हाउस टू फिनिश गेम्स सिंगल हैंडेडली, so they're starting to shape up quite nicely. Anwar Ali with his experience comes back in, but again with Karachi Kings sometimes the general impression is that you don't understand what they're trying to do. So I think us cheese can strategize thoda sa different. Even their bench on the in terms of coaching staff and think tank looks different, so hopefully good things to follow for them. You look at Kieran Pollard and Anwar Ali, and then they have someone like Akhlaq. They've taken a few gambles, and they've never been, that franchise जो फैसले लेने से डरे। बट क्या लगता है आपको कि पिछले जो कुछ सीजन्स हैं जिसमें बिल्कुल भी ये ऊपर नहीं आ पा रहे थे, अगर बाबर आजम इनके साथ था, अब कुछ आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है, बट यू मेक्स यू फील कि हाँ नहीं ये कुछ अब इम्पैक्ट आएगा? आई थिंक कि जो अगेन कराची के अगर आप ओवरऑल देखें तो बॉलिंग वाज नेवर देयर इशू, इवन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स भी जब वो जो उनकी फाइनल पोजीशन हुई, देयर बॉलिंग वाज स्टिल वन ऑफ द बेटर वंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बैटिंग पे ज़्यादा फोकस होता था, तो दैट इज़ व्हाट देव डन। शान टीम में आया है, विंस को रिटेन किया है, पॉलार्ड के आने से इरफान नियाजी का सेकंड सीजन होगा, आई फील लाइक ही इज़ समवन जो कि डेवलप करेगा, स्पेशली विद पॉलार्ड। आई थिंक उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इन दैट रोल। सैम्स, नवाज, आपकी बॉलिंग बैटिंग जो है डेप्थ भी है, इट्स गॉट अ लॉट ऑफ पावर इन गाइज लाइक मलिक, शान, साइफर, देव गॉट स्पिन हिटर्स एज वेल। आप बॉलिंग का विदाउट आमिर, विदाउट इमाद कंप्लीटली न्यू बॉलिंग अटैक होगा, वो देखना होगा कि हाउ दे जेल टुगेदर। मुझे कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी हम करते हैं क्योंकि नेक्स्ट कैटेगरी में जाएंगे। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की काफ़ी डिटेल में बात हुई, अभी मोइन खान बैठे हुए थे, सो ये अभी तक का सिनारियो है जिसमें हमने कुछ देखा है। वसीम जूनियर का इंक्लूजन बड़ा अच्छा लग रहा है, एंड देन अब अबरार, आई होप दैट ही गेट्स फिट वेरी सून। he's spoken about more, but I haven't seen him in action yet. तो कैसा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन? नो, आई थिंक हम वसीम जूनियर, अबरार की तो हम बात कर चुके हैं, बट आई थिंक जो अब इस वक्त जो नए पिक्स हुए हैं, आप शफीन रदरफोर्ड की बात करें, एक्सप्लोसिव, आप मोहम्मद आमिर ऑब्वियसली विद हिज एक्सपीरियंस, बट ऑन द राइट सऊद शकील, again it'll be interesting to see how they utilize him in the shorter version. Usman Qadir, good for him that he gets another go. He's been on the fringes, even traveled with the national side for a while. Leg spinner, always a game changer. So I think Karachi और क्वेटा दोनों का अब ये कि it looks a reshuffled unit. इनके लिए सबसे बड़ा मसला था injured and availability, at least as of last year. So if Hasaranga comes in, he's also a match winner with Abrar hopefully getting fit, and then overarching Saifi and Moin Khan in that as well. कह रहा हूँ अबरार को कह के हम लोगों को डराए जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं भाई दिखाओगे कम। अच्छा जी, okay, quickly, Hassan, as we have to rush, let us know about Multan Sultans and what do you feel? I think Multan without Andy Flower, without Haider Azhar, वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में फ़र्क आ सकता है, बट जो अभी मुझे दिखाई दे रहा है, देव रिप्लेस शान मसूद विद डेविड मिलान, सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर। अगेन इफ्तिखार आया जब टिम डेविड और वो डेविड मिलर वाली जो पोजीशन थी, इट्स सीम्स लाइक एक कंटिन्यूएशन वही चीज़ है। और द थिंग विद देम इज़ कि अगर आप देखें, दे आर ऑलवेज स्मार्ट विद देयर बॉलिंग के रीस्टॉप लिया है, डेविड विली है, गाइज हु डोंट जंप आउट ऑफ द पेज, लेकिन with a captain like रिजवान जिसको who prefers के 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस हों, आई कैन यूज़ खुशदिल, यहाँ पे वेली को यूज़ करूँगा, यहाँ पे टॉपली को यूज़ करूँगा, उसामा मीर उसके मिडल के लिए होगा, अब्बास अफरीदी डेथ के लिए होगा, सारे फेजेस कवर्ड होंगे। A captain like रिजवान के साथ this team makes a lot of sense with maybe another captain, वो शायद उससे वो परफॉर्मेंस ना निकाल सके जो रिजवान निकालता है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशावर ज़ल्मी उरूज।
Peshawar Zarmi हम बात करें कि if you look at them even when they were retentions की आप बात करें they probably look the most explosive batting unit. आप देखें रॉफमैन, पावल, साई मयूर और अब सारे ओपनर्स हारिस तो किस तरह कहाँ फिट होगा वो एक कभी-कभार चैलेंज हो जाता है कि 3 या 4 के बाद फिर वो ओपनर की गेम थोड़ी सी चेंज हो जाती है once especially once the power play is complete. Arif Yaqub interesting again with his leg spin. बाबर पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान अब वहाँ होंगे so TKC also was explosive. Asif Ali, we know what he can do. So this one looks interesting because they've got Amir Jamal and Khurram Shahzad with their quick bowling, who will obviously be still at the Pakistan level. भी नए अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, but batting बड़ी तगड़ी इनकी. Batting badi tagdi. All right. Time for us to take a break. Hassan, thank you so much for your input and thanks for joining us. और हम break के बाद वापस आएंगे. We won't take that long, so don't go too far. जश्न नहीं ये अपनी शान है मैचों से आग लगे यूं ही मैदान सजे खेल में खोने लगे शोर शराबा होने लगे नजरें सबसे तारे हमारे रोशन रहेंगे रौनक लगे सबका ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन जैसे हर घर में है क्रिकेटर बिक गई है टिकटें रेडियो पे लिसनर टीवी पे करें हम मैचों को व्यू सख्त है मुकाबला better be bringing the best of your crew best of 11 जैसे ये blessing from heaven अब उठेगा गेमों का लेवल ये है एथलेटिक एंडेवर ये क्राउड है हिस्टेरिकल ट्रॉफी हिस्टोरिकल हम सब सितारों के नाम इस पे लिखे forever and ever ये मैजिकल एब्राकडाब्रा विकेटें भी गिरेंगी स्लिप में जो निकली ये स्पिनिंग डिलीवरी बाउंड्री के ऊपर से मैसेज की एनर्जी लेके जो बैट्समैन ने खेली थी एक्चुअली लेग पे पिली थी ग्राउंड से बाहर चीखो पुकार सीने पे लिखा है टीमों का नाम वी ब्रिंग द हीट अप सुपर लीग का फीवर जैसे बुखार जीत और शिकस्त तो है मालिक के हाथ में आए सब सितारे हमारे दोबारा छोड़ो ये फिक्रें और छोड़ो वो गम ऊंची उम्मीद लेके आए हैं हम पूरी करेंगे हर टूटी कसम गेंद हवा में उड़ी सांस गई थम जीत और शिकस्त तो है मालिक के हाथ में आए सब सितारे हमारे दोबारा मैचों से आग लगे यूं ही मैदान सजे खेल में खोने लगे शोर शराबा होने लगे नजरें टिकी सारी आई है अपनी बारी सबसे तारे हमारे रोशन रहेंगे मैचों से आग लगे यूं ही मैदान सजे आंखें मिला के तू देख जलती हुई आतिश को देख खोई उम्मीदों से मेल तूफानी राहों में खेल हम कदमों में लाए जहान है मुकाबला यहाँ सरेआम है ये जश्न नहीं ये अपनी शान है मैचों से आग लगे यूं ही मैदान सजे खेल में खोने लगे
All right, we're starting off with the emerging category now. We have moved on to the emerging category. और सबसे पहली pick in the emerging category belongs to Islamabad United. Islamabad United, आपका time शुरू होता है अब. ठीक है जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डिसाइड कर लिया है कि उनको कौन चाहिए. Rehan's got the mic. Rehan, who have you picked in the emerging category? The second brother, Hunain Shah. So he's joining Islamabad United now. Keeping it in the family then. Keeping it in the family. Hunain Shah. Hunain Shah joins Islamabad United. शाहजी जो हैं सारे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हैं. तो congratulations to Islamabad United. अगली जो पिक है वो है पेशावर ज़ल्मी की. और पेशावर ज़ल्मी आपका इमर्जिंग कैटेगरी में टाइम शुरू होता है अब. Okay, here we are back again in the studio. We have a full house, but we have a guest who would like to speak with. जिस तरह हम different लोगों को welcome कर रहे हैं. This time it's a turn for Karachi Kings. He's the draft consultant for them. And Imran Ahmed Khan is a name which is very much been associated with HBL PSL for the seasons that have gone by. We've seen him on that stage where Zainab is. Imran, welcome to the studio. Thank you. Great to be with you guys. सिकंदर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं. ये बताइए कि इस साल क्या नया कोई जादू है कराची किंग्स को लेकर. यू आर द ड्राफ्ट कंसल्टेंट एंड हाउ यू लुकिंग टू मेक इट नॉट जस्ट लुक गुड बट गेट द रिजल्ट्स आउट दिस सीजन. Of course, rebuilding year. So when you're looking to reset the team, you have to make changes, which is something we've done this year. Letting go of someone like an Imad Wasim or a Mohammad Amir is not easy. They've done a great job for the franchise over the years. पर इस दफ़ा लगा कि एक different direction में जाना है. प्लस आपको ये देखना होता है कि कौन से खिलाड़ी आपको अवेलेबल होंगे स्लॉट वाइज. तो वी वेरी हैप्पी विद हाउ द ड्राफ्ट इज शेप्ड अप सो फार. यू नो, गेटिंग इन गाइज लाइक Karen Pollard and Mohammad Nawaz, experience bhi hai, and then someone like an Arafat Minhas, a young gun who we know will become big in the future, inshallah. So all in all, very excited with the picks that we've done today. कितनी परसेंटेज सक्सेस होती है? एक तो होता है कि हम क्या चाह रहे हैं एज अ फ्रेंचाइज और क्या हमें मिल पा रहा है, बिकॉज 5 और टीमें भी हैं. This year, how successful have you been in terms of maybe percentage, what you walked in with in mind and how it went out? Of course, draft को आप मैप ऐसे करते हैं कि आप एक एक चॉइस पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करते. हर बारी पे आप 4 से 5 ऑप्शंस लेकर चलते हैं, इसी वजह से कि कोई और टीम अगर किसी खिलाड़ी को पिक कर ले तो आपके पास कुछ बैकअप में मौजूद हो. उस लिहाज से तो अगर हम लेकर चलें तो we've been able to follow what we had come in with 100%. Obviously एक आधी जगह ऊपर नीचे होता है कि आपको प्रेफरेंस नंबर 1 नहीं मिलती तो प्रेफरेंस नंबर 2 मिल जाती है. And I think that's because every team in the draft came in with a very different set of requirements. A team like Multan, for example, came in with all local retentions. तो उनका फोकस ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स पे था. कोयटा को और कराची को प्लैटिनम में लोकल प्लेयर पिक करना था. तो उस लिहाज से थोड़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी, which is why I think we've been able to hit the mark in terms of our plans today. Uruj is alongside me. We have to really keep her calm when Karachi is playing because she's an ardent supporter of Karachi. She's from Karachi, so am I. But हमारे पास ज़्यादा कुछ कहने को रहा नहीं कुछ सीजन से, और ज़ैनब काफ़ी हावी रहती है हम पे. बट मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि फिल सिमंस के जो इंक्लूजन है, ये डिसीजन है, ये इसमें आपका कितना रोल था और इसके पीछे
क्या डिज़ाइन है? फिल सिमंस का आपने पूछा, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ. वर्ल्ड कप विनिंग कोच obviously comes in with a wealth of experience both in international cricket as well as franchise cricket. Obviously it was a decision that everyone was involved in, and really excited to have him working with someone like a Kyron Pollard as well, because they worked together in the West Indies camp. Brings in a lot of experience and the coaching pedigree that you would want associated with your franchise. Alright, we've got Azhar Ali here. Azhar, आपने किस तरह से देखा है? You know, I always think कि एक player जो कि of course खेल चुका है HBL PSL, उसका level वो जानता है किस टाइप की क्रिकेट वहाँ पे होती है. कितना इसने ग्रो किया है और इनकी टीम को आपने कैसा देखा है? मैं ज़्यादा पीछे नहीं कहूँगा, 8 के 8 सीजन, पिछले 2 सीजन से और अब जो सिलेक्शन दिखी है. देखिए कराची की बात करें, कराची जैसे लाहौर के साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस तरह कराची के साथ होती हैं, प्रेशर भी उसी तरह होता है. पिछले 2-3 सालों से ऐसे देखा कि यार यू नो प्लेयर्स स्टार्स प्लेयर्स भी थे, सब कुछ था, लेकिन परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड नहीं आ रही थी. उस तरह का जोड़ भी टीम में नज़र नहीं आ रहा था. ऑब्वियसली जब टीम हारती है ऐसी चीज़ें उभर के आती हैं और वो लगता है ऐसे ही कि टीम इकट्ठा होकर नहीं खेल रही. बट आई थिंक वंस 2-3 years पास यू नीड टू स्टार्ट चेंजिंग, और राइटली सो. इट्स नथिंग रॉन्ग कि जो प्लेयर्स इन्होंने छोड़े ऑब्वियसली उनके लिए टफ था, लेकिन वो प्लेयर्स बुरे थे या कोई इस तरह मसला था. बट आई थिंक एक फ्रेश वे में स्टार्ट करना दोबारा से, जैसे हमने फिल सिमंस के साथ भी बात की कि ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर और बेहतर करना, एक टीम को इकट्ठा होकर खेलना, एक प्लान के साथ खेलना. और शान मसूद की हमने जिस तरह बात स्टार्ट में भी की थी कि शान मसूद का इंक्लूजन मुल्तान सुल्तान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहा था. वो एज ए स्किपर, फिर उनको कप्तानी से हटाया, फिर भी उनका रोल बहुत अच्छा रहा. आई थिंक कि बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं इन राइट डायरेक्शन, एंड होपफुली वो परफॉर्मेंस में भी आपको नज़र आएंगे, क्योंकि इन्हीं दौरान एक जो है वो PSL जीती भी है कराची ने. उसके बाद ऑब्वियसली डिक्लाइन आई परफॉर्मेंस में. तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनको काम करना पड़ेगा परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए. जिस डायरेक्शन में इनको जाना चाहिए था वो ऑलरेडी जा शुरू हो चुके हैं उस तरफ. उरुज, हम देखते हैं डिफरेंट फ्रेंचाइजेस जो हैं किसी भी लीग में होती हैं. ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक बिजनेस मॉड्यूल भी है. आपको बेचना भी होता है टीम को, और फिर आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि मैं स्टार पावर भी लानी है फॉर इट टू लुक लाइक अ ब्रांड, and then young blood also for it to give us the results as well. But do you see the fair mix in Karachi Kings this time? I think this time around it looks quite refreshed. It probably looks a little bit more well thought out or structured in terms of कि प्लेयर क्या वैल्यू ला रहा है, प्लस दैट स्टार. आई थिंक यूटिलिटी मैटर्स मोस्ट. आप अगर भर भी दें कि प्लेयर्स की स्टार वैल्यू बट रिजल्ट्स अगर नहीं आ रहे, देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू लाइक this is not working, let's do something which actually works and yields results. अब अजहर की बात से मैं कंटिन्यू करूँ, शान मसूद who appears to be, and even when he speaks, well thought out, well structured, appears to be a good man manager. Thought process behind bringing him in, because at the end of the day taking everyone together and leading, because he's had his fair share of ups and downs as well, and obviously now Pakistan Test captain. How does that fit in? Because it looks like a refreshed look under Shan's leadership now. So what you said, very disciplined, very clear in terms of what he wants and how he'll get to that point. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कप्तानी का एक्सपीरियंस है उनके पास. PSL में कप्तानी की है और सीनियर खिलाड़ियों की कप्तानी की है. शाहिद आफरीदी थे उस टीम में, सुहेल तनवीर थे, जेम्स विंस थे, और फिर उन्होंने काउंटी क्रिकेट में भी कप्तानी की, डार्बिशर के लिए की, यॉर्कशायर के लिए कर रहे हैं. तो वो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और द एबिलिटी टू देन एग्जीक्यूट द प्लान्स दैट द मैनेजमेंट मेक्स ऑफ द फील्ड. आई थिंक ये दो बड़ी यूनिक एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमें लगा शान फिट्स द बिल for this reset at Karachi Kings. Because also when we saw last time, it felt like the batting was slightly let down, and it almost felt like Imad was single-handedly scoring runs when it was far too late in the bowling. This time round, it looks like a well-structured roundup. तो ये credit आपको दिया जाए? नहीं, क्रेडिट सबको दिया जाए. हैदर अजहर जो डायरेक्टर स्ट्रैटेजी हैं, तारिक वसी, सलमान इकबाल, एवरीवन, वसीम भाई. हमने इस दफ़ा ये ज़रूर कोशिश की कि जो गैप्स थी which we felt was our middle order, so 5 and then 6 and 7, तो getting people like Polly, Mohammad Nawaz and Daniel Sams, मुझे लगता है कि ये बड़ी ज़बरदस्त पिक्स हैं. And then backup में you have someone like an Anwar Ali, gun fielder, hits well at the end, gives you a few overs as well. And the one that I'm most excited about, मेहरबानी मुल्तान सुल्तान की, उन्होंने अपनी पिक्स इस तरह से टाइम की कि हमारे पास अराफात मिन्हास आ गया and we were able to get our hands on him. तो all in all good first 11 picks as well, और साथ साथ बैकअप भी हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, which I think अभी तक it is working out well. Let's see.
Your neck is not on the line, right? With draft consultant. No, not on the line. Once you No give them the pressure at players, all. you go out there and then perform. No Imran, pressure thank you at so much for joining us. Thank you, Always guys. lovely to talk to you, and good luck to Karachi Kings this year also. Thank you. All Pleasure right. being with you. Time for us to head out and join Zainab, and she'll tell us more about how the picks are going. Thanks. बेटा सैंडविच जी कोयटा ग्लैडिएटर्स नबील आप शेयर करना चाहेंगे कि आपने इमर्जिंग कैटेगरी में किसको पिक किया एंड अ वेरी गुड फास्ट बॉलर. और अभी जितने इमर्जिंग फास्ट बॉलर आ रहे हैं, आई थिंक सबसे अच्छा इन स्विंग अगर कोई करता है तो आई थिंक आदिल नाज को इस सीज़न देखा है. खास तौर पे स्काउटिंग के लिए गए थे हम लोगों ने, जो ग्रेड 2 के भी मैचेस हुए लिस्ट ए के. 14 विकेटें ले चुके हैं नेशनल T20 में और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है एंड एज पर नबील ही इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फास्ट बॉलर्स टू कम आउट ऑफ दिस सीजन दैट वी हैव सीन. अच्छा जी, कराची किंग्स, इट्स योर टर्न नाउ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अभी कराची अपनी पिक कर रहा है. बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड होगा. देख रहे हैं हम, नए नए नाम आपको देखेंगे और फ्यूचर स्टार्स भी दिखेंगे. मीनवाइल हमारे पास करंट स्टार मौजूद हैं स्टूडियो में. इनका नाम बड़ा तगड़ा है, रेहान सरदार, जीएम ऑफ कोर्स क्रिकेट या जीएम इस्लामाबाद यूनाइटेड. इस्लामाबाद यूनाइटेड हमने भी माइक हसन से भी बात की और ऑफ कोर्स ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड की ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम देखते आ रहे हैं. उसी चीज़ को लेके चलना चाहेंगे या यू फील कि अब थोड़ा सा चेंज लाना है, थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन करनी है? देखें, व्हेन आई फील कि किसी भी टीम के लिए उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करना ज़रूरी होता है. वंस दैट आइडेंटिटी इज़ क्रिएटेड तो आप देखते हैं मैंने एरर्स कहाँ किए हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं और अपनी आइडेंटिटी आप चेंज करते हैं तो आई थिंक यू आर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग जो आपने बिल्ड करने की कोशिश की. और ये आइडेंटिटी हमारी पहले दिन से नहीं बन गई थी. इट टुक टाइम. आई थिंक इसकी पीक जो थी वो PSL 3 एंड PSL 6 थी. परफॉर्मेंसेज उसकी ग्रुप स्टेज के अंदर जैसी हमारी थी. तो वी वांट टू कंटिन्यू प्लेइंग दैट वे, बट द आइडिया इज़ के दैट्स व्हाई आवर हैशटैग इस दिमाग से कि जहाँ पे आपसे छोटी मोटी गलतियाँ हो रही हैं उनको आपने कैसे प्लग करना है. एंड द आइडिया बिहाइंड द ड्राफ्ट एंड द ट्रेड्स, आई थिंक वी डिड रियली वेल इन द ट्रेड मार्केट दिस ईयर, वॉज कि जो आपके गैप्स आ रहे हैं उनको आपने कैसे प्लग करना है टू बिकम एन इवन स्ट्रॉन्गर टीम. कि आपके जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, सो यूजुअली हम प्लेऑफ्स में हम आखिरी मोमेंट्स पे जाके पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं. वी वांट टू रेक्टिफाई दैट, तो ट्राई टू फिक्स दैट ड्यूरिंग दिस ड्राफ्ट. बट जिस तरह हमने देखा उरूज रिसेंट टाइम्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड को, इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस वेदर एज अ फैन और एज फ्रॉम अ कमेंट्री बॉक्स, ये जो इनका बैटिंग ऑर्डर है इसमें एलेक्स हेल्स, मनरो एंड ऑल दैट, आपको नजर आ रहा है कि इनका जो स्टाइल है वो पावर हिटिंग है. हिट ऑल द वे टू आजम खान and that has worked for them many Karachi times Kings and has sometimes it decided who has they probably want in backfired, this but they backed category. that call. You like Imran, to see do you wanna Islamabad United share the who way you it got? has been doing it, or you feel that there's a We've gone certain for thing the that they right-arm can, paces, you know, Siraj. change or improvise and bring out? There you go. I think what Rehan said, Sirajuddin it's has been important to picked stay true by to yourself Karachi and true to your Kings. essence and what you believe in. It's very easy to get flabbergasted and परेशान कि यार ये चीज़ नहीं चल रही, इसको चेंज कर दो. जिस तरह लाहौर ने अपने आप को टाइम दिया, उस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑल्सो, बिकॉज जिस तरह से गेम इवॉल्व हो रही है, इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग ऑल आउट एंड दैट्स व्हाट दे बिलीव इन. उसमें जो वो बात करें, देयर इज अ फाइन लाइन जो आपको स्मार्टनेस के साथ उसको करना पड़ता है थोड़ा सा. आई थिंक दैट्स व्हाट माइक हैसन ऑल्सो सेड, अ लिटिल और डिफरेंट फ्रेंचाइजेस को देखा है. अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप देखते हैं, सबसे ज़्यादा किस कंट्री की लीग से आप इस टीम को रिलेट करते हैं कि इनका स्टाइल ऑफ क्रिकेट ऐसा है? देखिए, जैसे बात कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कि इनका ब्रांड ऑफ प्ले एक है विच इज़ वेरी गुड, वेरी अट्रैक्टिव. मैंने ये चीज़ फील की कि जब आप आते हैं ना नॉकआउट स्टेज पे, दैन इट बिकम्स प्रेशर क्रिकेट. जब आप वहाँ पे विकेट लूज़ होते हैं ना, उस तरह खेलते हुए आप जब राउंड मैच खेल रहे होंगे ना,
आप वो प्रेशर हैंडल कर लेंगे, वो आपको वो फियर ऑफ लॉस का उस तरह नहीं इफेक्ट होगा। जब आप राइट एट द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आते हैं ना, वहाँ पे आपको स्मार्ट क्रिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वो नहीं खेलते तो वहाँ पे आपको कॉस्ट कर जाता है। तो आई थिंक आई एम श्योर कि इन्होंने भी जो लास्ट 2 सीज़न से सीखा होगा। आई थिंक जो लाहौर के अंदर पहला सीज़न जीता है वो आसिफ अली जब बैटिंग कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैच इनके बिल्कुल हाथ में था, तो वहाँ से वो गेम चलेगी, वहाँ पर आपको कामनेस। People to see you where you are. Welcome to the studio. Thank you so much, Sikandar bhai. It's a pleasure to be here. Just tell me how and what did you actually feel when you were asked, would you like to be the GM of Multan Sultans, and what was your first reaction? Ecstatic, excited, and थोड़ा यकीन नहीं आ रहा था. I thought Ali was probably joking or pulling my leg. Like I asked him at least 3 times, "Are you sure this is what you want?" He said, "Yes. This was my first thought. I just want your confirmation for this." So okay. So after the 3rd time, I got the realization that he's actually serious about this. So yeah, ecstatic, excited, overwhelmed, all of it. No, you seem at ease, which means that you're in a good place and you're enjoying yourself and you see that how the things are going on. And the best part is that most of the people working around you, if I'm not wrong, are people who you are aware of their capabilities, you're aware how they see you, and it becomes like an easier environment. मुल्तान सुल्तान का बताएं इस साल क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने तो काफ़ी नाम घर भेज दिए और कुछ रख लिए अपने पास, तो ये एक चैलेंज है या आपको लगता है कि हमारा यही अभी फिलहाल लुकआउट है? नहीं, चैलेंज हमारी डेफिनेटली था, क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ रिटेंशन पीरियड जब हमें पता चला कि कुछ हमारे फॉरेन प्लेयर्स थे जो नहीं आ रहे इस साल, उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज था. एंड देन देयर वर अ कपल ऑफ प्लेयर्स हु वांटेड टू बी ट्रेडेड as well, so we had to respect their wishes. तो जब बात यहाँ आई कि we have to trade some people, and then there are some people who are not showing up this year, unfortunately, it was definitely a big challenge. But considering जितनी franchise cricket हो रही है इस वक्त दुनिया में, there are always going to be overlaps with other leagues, so it was always a priority to keep the local core strong, get as many local players, as many match winners as possible for Multan Sultans, and then get better picks in the draft, and maybe just pick the best out of the lot. Yeah, firstly, congratulations. I mean, I think it's a breaking boundary, not breaking boundary, smashing boundary, breaking stereotype appointment. So I wish you all the very best. But मुझे ये बताएं कि एक होती है चीज़ expectation, when you envision something that ये इस तरह से होगा, working with a franchise which is anyways bold and appears to be bold to take those decisions and do things out of the norm, obviously with strategy behind it. How has it been so far? Because I'm sure there's been sleepless nights. ये आज तो draft है, but इससे पहले काफ़ी काम गया होगा. How has it been? What was your expectation, and how has the actual working experience been so far? So my expectation was that since I'm taking this role for the very first time, so I thought that maybe I'll need a lot more help, or maybe I'll be very nervous at the start. But because of the people that I've surrounded myself with, especially our owner Ali Tareen, everything has been smooth sailing until now, and I hope that it goes that remains the case in the upcoming season as well. Although I have had sleepless nights, I will not lie, but I think that's all part of the gig now. Because as a general manager, there are always 100 million things to do, and you're the only one who has to do it. Azhar, isn't it an amazing success story, or a story that you would like to, see, more often in various places? Like, आपको शायद ना पता हो, एक commentary का competition हुआ था. I think it was last year, was it? 2022. 2022 में. And उसमें ये decide हुआ था कि जो भी जीतेगा उसको, they'll come in the commentary box and do the final. उसमें ये टॉप पे थी. अच्छा. And then of course cricket में different franchises से ये related रही हैं. Just like we're talking about, I won't say you're an emerging category, but we're talking about the youngsters in the field of cricket. It's important कि वो कहीं ना कहीं balance out हो, young leaders भी आए, so that we see a fresh, injection going into franchises or how we think. Yeah, of course we touched this point earlier on as well, कि नए ideas, fresh minds, और there are very much important. ठीक है, आपका एक core group होता है, लेकिन जितने new inductions होती रहेंगी, I think franchise is a great platform. I think इसी तरह फिर gradually I think अगली जो है national teams हैं या national management है, उसके अंदर भी आप इसी तरह देखेंगे, फिर नए लोग आएंगे, नए ideas के साथ आएंगे. I think the game is moving, everything is moving in different direction, so there is always a room for new ideas and I think experiments, and also the backing.
तो आई थिंक जिस तरह ने बात की इनके ओनर अली तरीन, यू नो ही इज़ वेरी यंग हिमसेल्फ, और हमेशा उनसे जब भी कन्वर्सेशन होती है इज़ वेरी यू नो पाकिस्तान के साथ पेट्रियोटिक भी हैं, और वो इज़ नो फियर, वो जब भी देखें वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नए बच्चों को चांस देना चाहते हैं, यू नो he's been amazing for Multan Sultan, and I think he's serving Pakistan as well. Good luck to you. All right. Now time for us to head out to Zainab because अब शुरू होने जा रहा है supplementary category. 12 picks in this category supplementary round शुरुआत होने लगी है, और शुरुआत हम करेंगे लाहौर कलंदर्स के साथ because they have the first pick in this round. लाहौर कलंदर्स, आपका टाइम शुरू होता है अब. Yep, we're back. हम आ गए. I think it's been fantastic so far. काफ़ी franchises, at least हमारी जितने लोगों से बात हुई है, they seem quite confident and happy कि उनके picks सब सही चल रहे हैं. But I've got a big smile on my face because obviously I'm talking to Hijab Zahidia, the general manager for Multan Sultan. Hijab, बहुत ज़रूरी होता है कि जब इस किस्म की appointments हों तो उनको empower किया जाए and let them then do the job. कभी कभार होता है कि the appointments are there but somebody else is running the show, क्योंकि इस तरह के appointments में decision making authorities के अंदर जब इस तरह के figureheads आते हैं, how do you deal with that? Because whether somebody likes it or not, we're still in a male dominated sport. है मेंस क्रिकेट, बट आप वैसे बात करें तो कमेंट्री में देख लें, बहुत सारी चीज़ें, मैं बिहाइंड द आउटसाइड द क्रिकेट फील्ड बात कर रही हूँ. वो हाउ डू यू डील विद इट? बिकॉज आई एम श्योर हर्डल्स आते होंगे इन टर्म्स ऑफ डिसीजन और पीपल टेकिंग यू सीरियसली. उसका किस तरह से कोई ऑब्स्टिकल इस तरह से आए, एंड हाउ डू यू एज योर सेल्फ, एंड दिस इज फॉर यंगर लर्नर्स एंड पीपल हु वांट टू टेक अप दिस रोल, information to them, and how have you dealt with it so far? I think hurdles definitely आते हैं. I'm not going to say कि नहीं आते हैं, but I think I am at that stage where I've crossed major hurdles already. I am extremely thankful for the unconditional support that I've received from people like you and Sikandar Bhai at the start when I came into this industry. How encouraging you were. Even when I started off as a commentator, as a presenter, every role that I've taken, I've been actually lucky enough to be surrounded by such people. And I think in Multan Sultans, a huge credit goes to our captain, Mohammad Rizwan, and the coaching staff. They've been very helpful. They've kept me included in every decision. They've valued my opinions, which was very important to me, because if I'm here, then I want to be heard. So. All right. I'm going to interrupt you. There'll be a lot of people interrupting you with the position that you've taken now. Okay. We have to head out and find out what's happening in the supplementary category. So it's all yours, Zainab. Well, no interruptions here, Sikandar, because Kalandars seem very convinced on their supplementary pick. If you can please share with us who you've gone for. Akif bhai, aap announce karna chahenge? Shea Hope from West Indies. Shea Hope from West Indies. Wicketkeeper batter from West Indies, Shea Hope has been picked by Lahore Qalandars in the supplementary round. पहले भी खेल चुके हुए हैं HBL PSL में, नज़र आ चुके हुए हैं, और एक बार फिर से लाहौर कलंदर्स ने उनको रखा है. Shea Hope all the way from West Indies. ठीक है, moving on to the next team, Multan Sultans. It's your turn and your time starts now. GM की नजरें जुड़ी हुई हैं स्क्रीन पर के मेरे बिना I really ये hope पता नहीं they किसको do what I उठाएंगे. asked them to do. Well, we'll find out right here, right now, if they listen to you or not. But that's a big, crowd in your side. और या पीछे साथ कुछ और लोग भी हैं जो just they're watching. But anyway, मुझे बताइए कि मुल्तान सुल्तान 3 फाइनल खेला है पिछले, और एक उसमें से जीता है. और जब आप ऐसे खेल रहे होते हैं फाइनल्स, तो फिर कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, अचानक आपने सोचा कि बोर हो गए फाइनल खेल खेल के, अब कुछ नया करें. तो अब इस बार शायद लाइन क्रॉस करें और हम जीत जाएं फिनिशिंग लाइन क्रॉस करके, क्योंकि हमने देखा कि आई थिंक कंप्लीट टीम दिखी है पिछले 2 साल से, तो मैं यही कहूँगा बिल्कुल कंप्लीट टीम दिखी है. और शायद ऑन द डे वो हार गए हों, वरना तो परफेक्ट होता है कि ये जाएंगे ही जाएंगे प्लेऑफ्स में. तो इस बार जो ये एक्सपेरिमेंटेशन की, कहीं थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स डर तो होता है. आई मीन इट्स नॉट, कोई जादू तो है नहीं कि हम जो करेंगे सही होगा. अब मुझे किसी ने इंटरप्ट कर दिया मेरे कान में कि अपना सवाल बंद करो. लेट्स गो बैक टू ज़ैनब एंड विल कम बैक. ठीक है जी, मुल्तान सुल्तान्स ने डिसाइड कर लिया है who they want. मुल्तान सुल्तान्स in the supplementary round.
Please announce. We are delighted to announce our pick, death bowling specialist Chris Jordan. Okay. प्लैटिनम कैटेगरी से यहाँ पे आ रहे हैं क्रिस जॉर्डन, काफ़ी फ्रैंचाइजेस का हिस्सा रह चुके हैं, HBL PSL फैमिली का हिस्सा बन चुके हुए हैं और अब इस साल नज़र आएंगे मुल्तान सुल्तान्स के साथ. There you go, मुल्तान सुल्तान्स ने डिसाइड कर लिया है क्रिस जॉर्डन को सेलेक्ट करने के लिए. उनके पास मौका था एंड देव पिक्ड क्रिस जॉर्डन. ओके, कोयरा ग्लैडिएटर्स वो भी हंस रहे हैं, पहले से डिसाइड कर लिया है. ये तो बाद में हम डिस्कस करेंगे क्यों इतनी हंसी आ रही है, लेकिन आपका टाइम अब शुरू होता है. क्रिस जॉर्डन पिक किया आपने. इनके कबर्ड में सारे फ्रेंचाइजेस के कपड़े हैं. जी. HBL PSL की तकरीबन सारी हैं. मेरा ख्याल है मुल्तान रह गया था इस तरह. हमने कहा ले लिया, ये चीज़ भी पूरी कर यही कह कर आई थी आप उनको. I'm so proud of my team. Well, he's a good pick. He's a very good pick. I mean, he's a very good, bowler at the death. इनकी pace बहुत अच्छी है. दिखते नहीं है इतने तेज, लेकिन ये हैं. And he's a good finisher with the bat. But anyway, we'll let you complete your answer. You know where you were at that time? नहीं. अच्छा चलो ठीक है. बस मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, fast and quick, and then we'll let you go and join your team. That obviously जो सोच के आते हैं, होता नहीं कि 100% वही मिल जाएगा. But overall satisfied हैं, और कोई ऐसा कोई एक है जो मिस कर दिया है जिसको मेंशन करना चाहेंगे और नहीं हो सका? नहीं, I'm pretty satisfied with the picks that we had and the players that we got. Alhamdulillah. I think जो हमारी first choice थी, I think we've been able to pick all of them. एक दो picks हैं जिस पे I would have my wish was to do right to match. I didn't get to do that in my first draft, so I really wanted to do that. But other than that, I think we're all good. बाकी ये कि आपका जो पिछला सवाल था कि a team that plays 3 finals consecutively, why make any changes into that? So when Ali took over Multan Sultans and when I came on board, our first priority was not to make many changes. So any changes that you see were because we had to make those. Okay. So it was there were a lot of things that required consent of other people as well. And there were a lot of other factors involved that as when I was an outsider I didn't know about. So I've been gaining a lot of knowledge of those things as well. So but the decisions that we've taken during this draft have been phenomenal. I'm really happy about them. Yeah. Well, great. Good luck to you. Good luck to your team, and we'll see you on the ground. Absolutely. All right. Thank Okay. Let's head out and find out what's happening on the stage. What's happening here is that Quetta Gladiators has decided who they want to go for in the supplementary category, and Nadeem Umar Saab will announce कि किसको pick किया. Akil Hussain from West Indies. Akil Hussain from West Indies, slow left arm orthodox. Akil Hussain, इनको हम पहले भी देख चुके हैं HBL PSL में, from a different franchise. मुल्तान सुल्तान्स के पास थे और अब आ गए हैं कोटा ग्लैडिएटर्स के पास. कुछ कहना चाहते हैं आप? I just want to thank Lahore Qalandars. We thought they would pick him up, but they didn't. Thank you so much. ये कोई rigging तो नहीं हुई? पहले से decide तो नहीं हुआ था? Decide पहले से नहीं होता, but we thought that. Rigging, oh, right. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you, Quetta Gladiators. Akil Hussain now belongs to you. We can move on to the next pick, which belongs to Islamabad United. Islamabad United, your time starts now. Hope. वही करेगा. All right, welcome back once again, everyone. All smiles out there. Whenever we have Islamabad United on the screen, we get Hassan here in our studio. I don't know, it's just a coincidence, but it's good to see happy faces. Looks like they're satisfied and where they are, where they want to be as a squad, as a team. Hassan, let's talk about you individually. What are the changes, or how easy or difficult was it for you to move from a franchise and join a couple of guys who work in a certain way as a selection panel? It's a bigger job, lots of other things are at stake, and to bring in value-added stuff in terms of stats, in terms of numbers, and make it work. I think I've been lucky because as so far I haven't gotten any pushback जो कि मैं expect कर रहा था कि जो selection meetings वगैरह में होता है. I understand कि वो जब national team वाला level है उस पे captain है, आपका head coach है, आपका chief selector है,
there are bigger stakeholders there, तो वहाँ पे I can only suggest and push, वहाँ पे मनमानी नहीं चल सकती. But I was always more keen on, जब initially I joined PCB as well, कि मेरा target was the under-19s, the Shaheens के, that is something that we've been lacking before. Even right now हमारे Shaheens के इतने ज़्यादा tour नहीं होते जितने होने चाहिए थे. But so far Shaheens have been pretty good. Emerging Asia Cup जीते, Australia में series went pretty well. Then अब under-19 आप देख रहे हैं, they've been good in the Asia Cup. Hopefully they'll continue that in the World Cup. So that's been good. Generally I don't think कि वो जो एक even मेरा जो perspective था बाहर बैठे हुए, उस तरह का कोई reaction या उस तरह की कोई मतलब back and forth उस तरह से नहीं हुआ. Everyone's been pretty supportive in that regard. ठीक है, हम वापस आते हैं और बात करेंगे. We are ready with some more picks out there. So Zainab, let us know what's happening. Thank you, Sikandar. Islamabad United, I think you are ready to share who you've got on board. Shamil Hussain. शाह पे रुक गए थे. अच्छा ठीक है. Impression ये दिया कि एक और शाह आ गया, but शाह नहीं था, Shamil Hussain, and he is somebody who scored runs yesterday, just yesterday in that match against Afghanistan. 75 इन्होंने बनाया था, and Islamabad United is not going to lose out on that opportunity to get somebody who is in form. So well done, Islamabad United, to you, and we can move on to the next pick, which belongs to Peshawar Zalmi. Your time starts now. The under-19 Asia Cup में दुबई में है, and he's recently got himself a Man of the Match award against Afghanistan. Opening batter, left-handed batter, and I've got two former players alongside Hassan Chima also. ये cricketers की एक love-hate, hot and cold relation होती है selection committee से, selectors से, क्योंकि हमेशा हर cricketer को लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, और वो इसमें कोई दो राय नहीं. I want to correct you here. I don't think love अभी तक, I've been here for 7 months, there has been no love at all. बड़ा मुश्किल है तो सबको satisfy करना. But do you feel that is it possible कि यार मैं कितना अच्छा हूँ वो दो तीन लोग decide कर लेंगे? How does a player feel? देखिए, this has been ये एक reality है sports की. Sometimes you're unlucky, sometimes you get lucky. So that it balance out. As a player, you just had to work hard, fight for your place, and wish for the right time. कि हर चीज़ का ना मेरा तो बड़ा strongly believe रहा है कि अल्लाह ताला ने आपका best time वो होता है, वो उसका wait करना चाहिए. बड़े टफ टाइम आपको करियर में देखने पड़ते हैं, वहाँ से उठना पड़ता है आपको. कोई आके आपको उठाएगा नहीं. आप ऐसी कंपनी में रहें जिससे से आपको पुश मिले rather than कि sympathies मिले, क्योंकि sympathies are at times आपको और negative कर देती हैं और पीछे ले जाती हैं. Great. We'll head back to the stage and Zainab will tell us more. Okay, Peshawar Zalmi Muhammad Haris has the mic in his hand. Supplementary round. Please share who you've got. Right arm fast bowler from South Africa, Lungi Ngidi. Lungi Ngidi has been picked by Peshawar Zalmi. We were talking about the fact that Peshawar Zalmi has had a rich history of having pace bowlers in their squad, and there's no better than Lungi Ngidi. He's express, and that average pretty much tells you how good he is in this department. Anyway, moving on to the next pick of the day, which is Karachi Kings. Karachi, your time starts now. All right. Uruj is also here with me, former Pakistan captain. Uruj, ये एक relation की बात हो रही थी, selection and captains and everything. They provide you 15 or 18 or whatever for a particular tour. Is it directly related to what they give? Because it's all about how you use those resources as a captain. I mean, they could be it could be a good combination, but you have a different mindset. But do you work in tandem? I think you have to, because if the selection committee's got its own mindset, or as a captain team आपका अलग है और आपको वो player ही नहीं मिला, तो I think it has to be a sync in between the selection committee, captain, and what you are trying to achieve, और आपका brand of cricket क्या है. तो वो players आपके पास होंगे तभी आप खिला सकते हैं. तो इस किस्म का sync बड़ा ज़रूरी है. Relations इसमें important होते हैं. Trust
बहुत ज़रूरी चीज़ है और आई थिंक प्लेयर्स को कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन और ऑनेस्टी से अपने आप को असेस करना प्राइमरीली, बिकॉज अजहर ने भी जो बात की कि वो हम एक एलिमेंट ऑफ विक्टिमाइजेशन और सिंपैथी में पहले चले जाते हैं बनिस्बत कि हम अपने आप को देखें, एंड देन आई थिंक दिस स्पोर्ट इज़ अ ग्रेट लेवलर। हर किसी का वक्त आता है और अच्छे काम को आप बहुत देर तक छुपा नहीं सकते, सो आई रियली फील दैट बिलीफ बट सेल्फ रियलाइजेशन। बट जो आपने बात की सिलेक्शन कमेटी का टीम की मैनेजमेंट के साथ साथ काम करना ज़रूरी है। इफ़ यू आर एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर तो फिर यू आर फाइटिंग अ यूजलेस बैटल। ठीक है, हसन से हम और बात करेंगे रिलेटेड टू HBL PSL एंड हाउ डज ही सी इट, जो कि अभी तक हमने ड्राफ्ट देखा है। अभी ये बाहर चलते हैं एंड लेट्स जॉइन ज़ैनब। Okay, we're ready with the announcement from Karachi Kings. Who would like to go for this one? Imran. Pakistan under-19 wicketkeeper captain Saad Beg. There you go, wicketkeeper batsman Saad Beg. He's also the under-19 captain and only 17 years of age. So we'll get to see a lot of young talent this time in the HBL PSL, like every time. So congratulations, Saad Beg. You're now with Karachi Kings. ठीक है जी, पेशावर ज़ल्मी, राउंड 2 के लिए आप तैयार हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। Saad Beg, he is the captain of the Pakistan under-19, as I said, currently under-19 एशिया कप में दुबई में है। हसन मेरे साथ हैं। हसन, ओवरऑल HBL PSL से आपका रिश्ता रहा है विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप एक डिफरेंट कैपेसिटी में है। शुरू में बात होती थी कि जी रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। कैसा देखा है इन टर्म्स ऑफ ग्रेजुएटिंग टू वे वी वर इन द फर्स्ट सीजन, जिसमें प्लेयर्स भी हैं, टीम्स भी हैं, किस तरह से ओवरव्यू है? आई थिंक जो सबसे बड़ा फ़र्क आया वो यही है कि जो इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ पाकिस्तान की डेप्थ नहीं थी एज सच लोकल प्लेयर्स की। अब आपके एक तो आपके वो जो एक एंटायर जनरेशन आई है विच हैज़ परफॉर्म सो वेल पिछले दोनों T20 वर्ल्ड कप्स में, बट देन अब जैसे आप देख रहे हैं उस्मान खान को, खैर वो तो UAE के हो गए, बट यासिर खान, गाइज लाइक दैट जो स्पेसिफिकली T20 टारगेटेड प्लेयर्स होते हैं वो अब आप देख रहे हैं। देयर इज़ एन एंटायर जनरेशन कमिंग थ्रू। अब साजिद जो एबटाबाद के लिए विकेट कीपर बैट्समैन थे, दीज आर गाइज हु डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अदर फॉर्मेट्स, लेकिन T20 में आ रहे हैं। वन थिंग दैट आई एम सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड विद राइट नाउ इज़ के कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बड़े फॉर्मेट्स में जिन्होंने रेगुलरली परफॉर्म किया है, हु हैवंट बीन पिक्ड। वो ऑब्वियसली T20 की फॉर्मेट स्पेशलाइजेशन पे टीम्स फोकस कर रही हैं, बट अजहर वुड अंडरस्टैंड दिस के पाकिस्तान में डोमेस्टिक में PSL इज ऑलमोस्ट लाइक अ रिवॉर्ड एंड ऑफ द सीजन आपको जो मिलता है, और कई प्लेयर्स हैं, देयर आर a lot of players that are missing, I feel like, but everyone has their own decisions. जैसे मोहम्मद अली फास्ट बॉलर को मौका मिला है PSL खेलने का, आई थिंक और भी क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं, दे फील लाइक समटाइम ना T20 पे फोकस। मेरे ख्याल में ये बात इनकी ठीक है कि जो प्लेयर्स लॉन्गर फॉर्मेट में परफॉर्म करता है उसको बहुत जल्दी ये नहीं करना चाहिए T20 नहीं खेल सकता। आई थिंक वहाँ पर जाकर थोड़ा सा, चाहे वो बॉलर है चाहे बैटर है, आई थिंक वहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए। मैं आपके पास वापस आता हूँ दोनों के पास। वी गो आउट देयर एंड वंस अगेन फाइंड आउट कि नेक्स्ट पिक कौन सी है सप्लीमेंट्री में। Peshawar Zalmi is ready to announce who they've got in this category. Mohammad Haris with the mic. Mehran Mumtaz. Mehran Mumtaz, slow left arm bowler आपको नजर आएंगे पहली दफा in the HBL PSL. Again, a lot of talent that we've seen at the domestic level will now be seen with all these franchises. So congratulations to all the ones that have made it in the HBL PSL draft. Okay, लाहौर कलंदर्स, आपका टाइम फिर से शुरू होता है और जाइए और सोचें कि किसको लेना है। सप्लीमेंट्री राउंड ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि 16 तो मैंडेटरी सेलेक्ट करने ही है, फिर उसके बाद ये 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी की हम बात करते हैं, इंजरीज की बात करते हैं। यू ऑब्वियसली बिन राइट एट द कोर ऑफ दिस प्लानिंग एंड ऑब्वियसली इफ इट सॉर्ट ऑफ इट स्ट्राइक्स यू कि ये चीज़ नहीं हो रही, सप्लीमेंट्री कैटेगरी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज नॉट मैंडेटरी। सो हाउ डू यू सी इट? इज इट समथिंग दैट शुड बी डन ऑन? आई फील लाइक द सप्लीमेंट्री कैटेगरीज इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर कैटेगरी, क्योंकि आपको एक तो आपको पहले जो 16 होते हैं, दे यू गो विद द बेस्ट पॉसिबल प्लेयर, आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, बट आपकी कोशिश यही होती है कि बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स हो। देन अगर कोई चीज़ मिसिंग है, जैसे हमने लाहौर कलंदर्स को देखा कि दे डिडंट हैव अ कीपर इन द फर्स्ट 16,
तो विद द फर्स्ट पिक दे वेंट विद शे होप, उनके पास एक कीपर आ गया जो रेगुलर खेल सकता है। एक ये चीज़ है। द सेकंड थिंग विद सप्लीमेंट्रीज, क्या वो थोड़ा डिटेल में चला जाता है, बट आपके पास कितना बजट है, क्योंकि ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे अगर प्लैटिनम इट कैन रेंज फ्रॉम 130 ग्रैंड टू 170 या 180 ग्रैंड, तो वो आपके पास उधर से कितना बजट है। आई नो रेहान क्या करता है, तो ही फर्स्ट पिक वाज एन इमर्जिंग, आई थिंक सेकंड पिक विल बी अ डायमंड और प्लैटिनम वन। All right, we'll go back to Zainab, and we're getting fast and quick results out there. All right, Lahore Qalandars, I think you are ready to announce who you've got. Who's got the mic? आतिफ राना साहब जी। देखें, फिर वही बात आ गई, ये भी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से थे, बट अब वेल इस्टेब्लिश प्लेयर हैं। 2017-18 में ये पिंडी में ट्रायल देने आए थे और फिर मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा बने। कामरान गुलाम। Kamran Ghulam has been picked by Lahore Qalandars, second highest run getter in the National T20, belongs to Lahore Qalandars. Top order batsman, एक बार फिर से हमें नजर आएंगे in the HBL PSL. अगली पिक है मुल्तान सुल्तान्स की। मुल्तान सुल्तान्स, आपका टाइम शुरू होता है अब। सप्लीमेंट्री राउंड्स कंटिन्यू। हसन, जब तक आप यहाँ मौजूद हैं, लेट्स पिक योर ब्रेन्स अ लिटिल बिट मोर। हम लिटरली अभी यही बात कर रहे थे कि कोई ऐसा प्लेयर जो नज़र आ रहा हो हम सबके दिमाग में हो, बट हु इज़ मिस्ड आउट इन द ड्राफ्ट। कामरान गुलाम काफ़ी देर तक अब पिक हो गए सप्लीमेंट्री में, बट यू फील कि कोई ऐसे प्लेयर्स हैं और वन और टू दैट यू थॉट के होने चाहिए थे एंड हैवंट बीन पिक्ड येट? या जब दाखिल हुआ, द फर्स्ट टू नेम्स आई सेड वर मेहरान मुमताज एंड कामरान गुलाम। थैंकफुली वो दोनों पिक हो गए। किसी और का भी नाम ले दें, वही अभी मैं सोचना शुरू करूँगा, बिकॉज दोज वर द टू गाइज आई वर मिसिंग। अहमद शहजाद की अभी अजहर और मैं बात कर रहे थे कि व्हाटएवर हिज ऑफ फील्ड इश्यूज आर, जिस तरह के ओवर द पास्ट सीजन उसने एफर्ट की है, वो सब के सामने। यू लुक एट समबडी लाइक निसार अहमद, अभी खेल रहा है, लाहौर के लिए खेला है, उसने आउट किए हैं, फाइफर्स लिए हैं। अमाद आलम कराची का, अमाद भट्ट सियालकोट से जो खेलते रहे हैं। देर असल में जब 18 टीम्स हुई हैं, आई थिंक के वो जो 6 से 18 हुए, देर बिन सो मेनी प्लेयर्स सडनली के देर आर गाइज मिसिंग समटाइम्स। जैसे शहाब अभी इस्लामाबाद में उठाए कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो फ़ौरन उठाई जाती है। जहांदाद के लिए आई एम रियली एक्साइटेड। आई थिंक ही इज़ बीन पिक्ड बाय, आई फॉरगेट हु इज़ बीन पिक्ड बाय, Qalandars, I think. तो ही इज़ रियली गुड। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ही विल बी रियली गुड। जनरली फास्ट बॉलर्स जो हैं अच्छे आ रहे हैं, बट वही बात है कि देर विल बी गाइज जो कि मिस आउट करेंगे। एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि दिस शुड बी अ 20-man team, not an 18-man team. All right. 20, we used to have even 21, I think, during COVID. Okay, we'll talk more on that. Let's go to Zainab. चले, मुल्तान सुल्तान्स is ready to announce who they've got in the supplementary round. थोड़ी सी जो हैं पिक्स रह गए हैं, जी बताएं। We are happy to announce our last pick, आफ्ताब इब्राहिम. आफ्ताब इब्राहिम पाकिस्तान के ऑलराउंडर, अभी इनकी तरफ से भी हमने परफॉर्मेंस देखी थी। आफ्ताब इब्राहिम, राइट आर्म, मीडियम फास्ट, आफ्ताब इब्राहिम फॉर मुल्तान सुल्तान्स। Congratulations, Multan. We can now move on to the next team, which is Islamabad United. हमने हमेशा देखा अजहर के बात करते थे पिछले कुछ फ्रेंचाइजेस से कि जी HBL PSL बड़ा बॉलर हैवी है, पाकिस्तान सेंट्रिक बॉलर्स आपको यहीं से मिलते हैं। यूजुअली फ्रेंचाइजेस नहीं ढूंढती फास्ट बॉलर्स बाहर से। एज अ बैटर ये लगता है ये चेंज हुआ है, क्योंकि अब फेयर मिक्स नज़र आता है। पहले आप सारे बैटर्स बाहर से लाते थे टॉप ऑर्डर, अब आपके पास भी इतना टैलेंट और फायर पावर है कि आप एट होम रिलाई कर सकते हैं एज अ टीम, एज अ बैटर। नहीं, बिल्कुल आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अगर आप पहले तीन से चार सीज़न देखें ना, तो आपको एक तो मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा ऑप्शन नज़र नहीं आते थे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। आपको रिलाई कर ओपनर्स फिर भी मिल जाते थे, लेकिन अब ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपको मिडिल ऑर्डर्स में प्लेयर्स भी नज़र आ रहे हैं। कुछ अभी आज देख रहा हूँ अंडर 19 से इमर्जिंग प्लेयर्स में से। सॉरी, एक मिनट के लिए, क्योंकि हम बाहर जाएंगे एंड ज़ैनब हैज़ अनदर नेम। Islamabad United, all smiles there in the camp. What's the reason behind these smiles? Please go on and announce who you've got in the supplementary round. Mike. Look, we've picked a player who also has a brother playing international cricket, but we've picked Tom Curran. Not another Shah? No. Okay.
That's sad. Okay, Tom Curran, all the way from England, has been picked for his all-round abilities. A lot of value to be added to this Islamabad United. Sam Curran का तो आपने सुना ही होगा. उन्हीं के भाई Tom Curran will now feature in the HBL PSL, and he has gone to Islamabad United. अगली पिक है कराची किंग्स की. कराची, आपका टाइम शुरू होता है अब. समीन गुल. तो अजहर बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि बैटिंग में भी अब आपको नाम दिखेंगे और काफ़ी नाम हसन ने भी बताए कि नज़र आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली इतने ही जा सकते हैं एक टीम में. कुछ मिस आउट कर जाएंगे, डिजर्विंग भी हों. कुछ ऐसे हैं जो बड़ा प्रॉमिस शो किए हैं काफ़ी साल से. आई थिंक पिछले साल प्लैटिनम में थे हैदर अली, एंड ही वाज पिक्ड बाय कराची किंग्स, एंड वी हैव सीन हिम ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स. रिसेंटली नेशनल T20 में भी देखा, एंड समहाउ आई थिंक थोड़ा लक फैक्टर भी होता है कि जब इट मैटर्स, maybe your bat is not talking right at the verge of the end of the national T20, you'll probably want to come into the eyes of the selectors of the teams. I mean, it's unfortunate because he burst onto the scene and he showed a lot of promise, but वो कहते हैं ना, talent meets opportunity. I think हैदर अली के आप quote unquote कह सकते हैं कि perfect opportunity मिली थी, and on quite multiple occasions, national level, domestic and franchise cricket के ऊपर. But आप कह सकते हैं कि मतलब he hasn't done himself any favors by not scoring the runs. आप लिमिटेड अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं. और अभी जैसे अजहर ने भी बात की कि अब पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर से भी बहुत सारे बैटर्स डेवलप हो रहे हैं हु अंडरस्टैंड कि मॉडर्न डे क्रिकेट में किस तरह से खेलना है, हु जो अडेप्टेबिलिटी दिखा रहे हैं. तो और हमारी मेमोरी भी बड़ी छोटी सी होती है, तो जब तक आप परफॉर्म ना करें उस तरह से, तो आई गेस इट्स अमैलगमेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट. थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करूं. मैं आपको अब बार-बार उनकी बात काट देते हैं. लेट्स हेड आउट, एंड ज़ैनब इज वेटिंग. Karachi Kings is ready to share with us who they have picked in the supplementary round. Salman Iqbal Saab, please share kara. All-rounder, Jamie Overton. Okay. Right arm fast, all-rounder, right arm fast from England, Jamie Overton. 100 plus T20s in which he's featured. And now he has gone to Karachi Kings. Karachi Kings, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. और अब, for the last time of the evening, Quetta Gladiators, आज का ड्राफ्ट आप ही ख़त्म करेंगे, तो आपका टाइम शुरू होता है अब. लास्ट पिक ऑफ द नाइट टुडे. आप लोगों ने देख लिया है टीम की फॉर्मुलेशन कैसी चल रही है सारी फ्रैंचाइजेस की. एंड राइट नाउ इज द लास्ट पिक ऑफ द ड्राफ्ट which is Quetta Gladiators. They seem to be very confident about who their pick is. They seem to already know. All the teams are looking really good. On paper, there's a bit of balance. Pacers भी नज़र आ रहे हैं, all-rounders भी नज़र आ रहे हैं, spinners भी नज़र आ रहे हैं. And it'll be interesting to see कि Quetta जो आज की आखिरी pick of the night है, who do they go for? Okay, we're ready now. We're ready to announce and share. And if somebody from the Quetta Gladiators camp, Nadeem Umar, would like to share कि कौन है supplementary round? I think it's a surprise package for everybody. It's Sohail Khan, but not a surprise package for us. I think he played the national T20 very well, second highest wicket taker, and bowling really well. So we'll go with Sohail Khan. Thank you. ठीक है जी. Sohail Khan goes to Quetta Gladiators, a fifer as well as a hat-trick, जो कि हमें देखने को मिली. And that was pretty much the last pick of the evening. Congratulations to all the franchises. All the teams are looking really good. And I'm sure that we're going to have an extremely exciting HBL PSL 2024. All the teams, like I said, are looking really good. Handshakes all round between all the franchises. And that's pretty much it from here on the stage. ज़ैनब, before I go anywhere, I have to let you finish. जल्दी से बताइएगा आप क्या कह रहे थे. हम 6 की 6 टीमें देखेंगे. क्योंकि हम बैटिंग की बात कर रहे थे, तो अगर आप देखें लेटली अब्दुल्ला शफीक हो, साउथ शकील अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो इंटरनेशनल कैरियर उनका एक्सेल कर रहा है. उसके बाद ताहिर
बेग एक आए थे, ये सब लोग देखें कि बहुत बड़े पावर हिटर्स नहीं है लेकिन बड़े ज़बरदस्त शॉट्स खेल रहे हैं। तो मैंने जितना देखा ना कि पाकिस्तानी प्लेयर्स में जो कल्चर आ रहा है, बाबर आजम को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि T20 के नंबर 1 बैट्समैन बने हैं। उनको पता लगा है कि सिर्फ चौके छक्के जो है वो, एक तो हमारा बहुत ज़्यादा था कि टांग की तरफ बस जो स्लॉगिंग करता है, छिक्के मार लेता है, तो ही इज़ अ पावर हिटर। बट आई थिंक T20 क्रिकेट इज़ नॉट ऑल अबाउट हिटिंग बाउंड्रीज। आप स्ट्राइक रोटेट कैसे करते हैं, डॉट बॉल कितने कम से कम खेलते हैं, अच्छी बॉल्स पे कैसे चौके लगाते हैं आप। तो आई थिंक दैट कल्चर इज कमिंग इन वेयर द कंसिस्टेंसी इन T20 क्रिकेट ऑफ बैटर्स इन पाकिस्तान इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। और होपफुली इन द टाइम्स टू कम आपको महर बिन यूसुफ जैसे प्लेयर्स और ऐसे ज़्यादा प्लेयर्स नज़र आएंगे, कामरान गुलाम और ज़्यादा इस्टेब्लिश होंगे T20 क्रिकेट में। तो ये जितने कंसिस्टेंसी आएगी आपके प्लेयर्स के अंदर, उतना आपको बाहर इंहिसार कम करना पड़ेगा, आपके लोकल बैटर्स भी ज़्यादा अच्छे नजर आएंगे। ठीक, ग्रेट। चलिए जी, तो अब ज़ैनब ने बताया कि टीम्स पिक कर ली हैं, 6 की 6 पूरी हो गई, 18 के 18 सबको मिल गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड से स्टार्ट करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात तो आई थिंक नो बेटर देन हसन टू टेल अस हाउ डज ही सी द 2024 स्क्वाड ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। I think looking at it, the batting as always is pretty much covered. आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, मे बी आई थिंक एक तीसरा स्पिनर मे बी मिसिंग है behind शादाब एंड इमाद. इट विल कम डाउन टू आगा एंड कासिम एज द थर्ड स्पिनर, विच आई फील लाइक कि वो शायद उसमें ऐड हो सकता था. तीनों शाह ब्रदर्स को ऐड कर लिया गया है. आई फील लाइक उबैद इज़न्ट रेडी येट, बट वही है कि बोथ उबैद एंड शामिल आर लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हुनैन विल बी द फर्स्ट चॉइस, नंबर 1 पिक है, वो खेलेगा. करन आई फील लाइक आई हैव टू चेक, बट आई थिंक अवेलेबिलिटी का इशू होगा, बिकॉज हमेशा दिस इज रिहान ट्रेडमार्क कि वो एक अनअवेलेबल प्लेयर लेगा. रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में आपको पता चल जाएगा बिग बैश और ILT20 में किसने परफॉर्म किया, एंड देन ही विल हैव अ रिप्लेसमेंट ऑन हिम देयर. अदरवाइज आई फील लाइक मोस्ट बेसिस कवर्ड. Fair enough. Let's talk about Karachi, and when you say Karachi Kings, Uruj Mumtaz will run us through. You almost make it sound like a bias, and we're not supposed to be biased in this. No, I think you have a better understanding of Karachi teams, Karachi players. Hopefully we'll be able to. Yeah, hardly any. No, but again, I think Karan Pollard की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी. इनके पहले जो हम ट्रेड्स किए, हसन अली एंड शान मसूद, उनकी हम बात कर चुके हैं. Vince retention is good, Shoaib Malik, Tabriz Shamsi, but then you look at Arafat Minhas, बहुत बात हो रही है उनके बारे में. Mohammad Nawaz, yes, he comes in, and Tim Seifert as well from New Zealand. I think all of that supplementary categories are good. We were slightly surprised Jamie Overton didn't get picked earlier, but now he does make it to supplementary, and Saad Beg as well. So I think in terms of players, they've got everything that they need. I think it's about delivery now, जो काफ़ी एक issue रहा है for them. So hopefully this should be a good one. Super. And let's. Hassan just wants to add. I think वो जो एक चीज़ मिसिंग थी इनकी हाई पेस वाली, जो हम पिछली मीटिंग में बात कर रहे थे पहले जब मैं आया था, कि विद मीर हमजा हसन एंड स्टफ लाइक दैट. आई थिंक जेमी ओवर्टन के आने से वो एटलीस्ट कवर हो जाती है. प्रॉब्ली हाफ वे थ्रू द टूर्नामेंट सैम्स, और दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन वेदर यू लुक एट सैम्स की लेफ्ट आर्म एज अ पावर प्ले बॉलर या ओवर्टन एज अ मिडल ओवर एनफोर्सर. वो क्वेश्चन मार्क होगा फिल सिमंस के लिए. Okay, all right. Former captain of Lahore Qalandars along with us, so let's see how Lahore Qalandar looks this season. डिफेंडिंग चैंपियन है ऑब्वियसली, और आई थिंक इनका कोर प्लेयर वही है. आई थिंक जो कीपर मिसिंग बात कर रहे थे, कीपर भी उनका शाय होप की सूरत में अब उनको मिल गया. उनके मर्जिंग में इरफान जो थे वो एज ए कीपर ज़रूर थे, लेकिन बड़ी फेंडरडूसन एक बड़ी ज़बरदस्त पिक है, एक बड़ा कॉम्पैक्ट प्लेयर है. ही कैन ऑब्वियसली स्टार्ट एंकरिंग द इनिंग एंड देन फिनिश ऑफ रियली वेल. साहबजादा फरहान को इन्होंने जो इसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है उसके ऊपर रिवॉर्ड दिया है, विच इज़ ऑलवेज़ वेरी गुड टू सी. कामरान गुलाम को भी आखिर में लिया उन्होंने. तो आई थिंक राशिद खान का जो इंजरी है वो देखनी पड़ेगी कि क्या वो खेल पाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है. अदर दैन दैट इज़ अ वेरी बैलेंस साइड. बॉलिंग अटैक इनका हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट है, और जो इनके इमर्जिंग प्लेयर आते हैं हर दफ़ा ये 1 से 2 ऐसे प्लेयर लेके आते हैं जो सरप्राइज पैकेज होते हैं पूरे PSL के लिए. तो वो भी हमें देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह. Alright. Okay, Hassan, how about Peshawar Zalmi for this season? I think going in, unless के something drastic happens, the best batting unit in the entire tournament. के ऊपर से नीचे बाबर, हारिस, इवन द लोकल गाइज, आसिफ अली, मतलब ऑलरेडी नंबर 1 आपका बैटिंग यूनिट था, उसमें आप आसिफ अली को ऐड करते हैं. इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट मोहम्मद ईशान. आई होप
वी नॉट जस्ट जलमी बट हम एक क्रिकेट फ्रेटर्निटी के तौर पे अगले 3-4 साल उसको इस तरफ से प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि उसका बहुत हाई पोटेंशियल है. लुंगी अंगीडी कमिंग इन, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज नवीन उल हक और नूर अहमद की अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है. तो अंगीडी एज द लीडर ऑफ द अटैक एंड मेहरान मुमताज़ आई थिंक विल एंड अप प्लेइंग रेगुलरली बिकॉज it will be between him, Hasibullah and Zishan for that one emerging spot, and with the lack of spinners they have, I think Mehran regular khelega unke Regular khelega. And last but not the least, Multan Sultan in the season 2024 in Uruj. This is looking good in the captaincy of Rizwan. I mean, yes, they've lifted the trophy as well, made it through 3 consecutive finals. और जब हिजाब यहाँ बैठी हुई थी वो कह रही थी कि they were mostly forced changes. वो चाह नहीं रहे थे क्योंकि एक चीज़ जो अच्छी चल रही है उसको ज़रूरत नहीं थी. But some players, I like the inclusion of David Malan. I think before Babar वो T20 number 1 batter थे. Reza Hendricks also very good. उनको अभी इस World Cup में भी कुछ मौके मिले थे. He did well. Reece Topley will add that obviously tall, fast bowler. Shahnawaz Dahani hopefully remains injury free and can play. But I think all in all, they look good. I really wish Faisal Akram gets a longish go in this. And I mean, he could be the game changer. We don't know how this plays. But it looks a different side. मुख्तलिफ लग रही है because of the force changes. But इनका जो कहते हैं ना एक mindset और strategy वो काफ़ी concrete and consolidated रहता है. So that also shapes up quite nicely. Anything interesting you saw in Multan Sultan जो last year थी और जो अब है, apart from जो retain किए थे? जिनके प्लेयर तैयब ताहिर इन्होंने लिए हैं, जिनके बारे में जिक्र किया हमने कुछ टाइम पहले कि एक तो उनकी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स फॉर्मेट, दूसरा था फाइनल खेला इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 100 किया है. इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है नेशनल T20 में भी. आई मीन फ्लेक्सिबिलिटी है उनमें इन व्हाट यू वांट आउट ऑफ हिम एंड इवन इन द नंबर ही बैट्स ऑन. तैयब ताहिर वेरी एक्साइटिंग प्लेयर. आई थिंक उन्होंने जो लास्ट ईयर कराची से भी 1-2 मैचेस किए बड़ा इंप्रेस किया था. आई थिंक ही इज़ अ वेरी ब्राइट स्पॉट इवन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड पिक. एंड अगर वो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान में अब वो मे बी आपको रेगुलरली नज़र आएंगे क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर है ना वो रायली रसो और टिम डेविड भी अब नहीं है इस दफ़ा. तो आई थिंक उनके जाने के बाद इनकी स्पेस बनेगी नंबर 3, 4, 5 के ऊपर कहीं ना कहीं इनको मौका मिलेगा. आई थिंक मुल्तान थोड़ी सी लास्ट ईयर से देखें तो बैटिंग उस तरह हैवी नहीं है. पहले बहुत बैटिंग हैवी टीम थी और जो बॉलिंग थी सारे लोकल प्लेयर्स ने संभाली हुई थी. अब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है बैलेंस. चलिए अब आप तीनों को इन्वॉल्व करता हूँ क्वेटा में. बैटर्स देता हूँ मैं आपको अजहर एंड बॉलर्स देता हूँ मैं उरूज को एंड देन वील गो टू द इमर्जिंग एंड सप्लीमेंट्री विद हसन. देखिए बैटिंग से स्टार्ट करेंगे तो बैटिंग तो हमने पहले ही देखी जब इन्होंने अपना स्टार्ट किया था. इनके पावर हाउस है इनके पास. जेसन रॉय, रदरफोर्ड को ने लिया, रायली रसो, ये 3 ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं बैटिंग में, टॉप ऑर्डर में और मिडिल ऑर्डर. विल स्मीथ भी इनके पास हैं, उमैर बिन यूसुफ, यू नो लिस्ट गोज ऑन. आई थिंक बॉलिंग पे अभी बाद में जाएंगे लेकिन मेरे ख्याल में ये जो टीम है ना दे विल बी द टीम ऑन पेपर दे आर प्रॉब्ली द बेस्ट टीम एट द मोमेंट. बॉलर्स उरूज अगेन आमिर ब्रिंग्स द एक्सपीरियंस. मुझे इनका जो ट्रेड हुआ वसीम जूनियर और अबरार दोनों बहुत आई थिंक वेरी फ्रूटफुल ट्रेड्स फॉर देम. वसीम जूनियर अगेन promising, अपना ऑलरेडी अपना मेडल मनवा चुके हैं. हसरंगा शुड बी अवेलेबल एंड फिट, who wasn't there all of last season. अकील हुसैन very economical, can bowl in the power play. उस्मान कादिर. तो I think they've got all options and I think they've got some impact bowlers in there as well, so they look good. You know, overall अपने foreign players को ज़्यादा छेड़ा नहीं है सिवाय शरफीन के, बाकी सब वही है. Emerging and supplementary हसन. Yeah, so emerging में आदिल नाज है, फास्ट बॉलर है. We had a really good grade 2 हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी this year. ख्वाजा नाफे है, उसका इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि यूजली इनके जो अगर बात करें रॉय की, स्मीट की, ये सब टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं. नाफे बैट्स देयर एज वेल, उमैर बिन यूसुफ बैट्स देयर एज वेल. तो उमैर या नाफे को शायद नंबर 4, नंबर 5 पे खिलाएं तो वो उनके लिए टेस्ट होगा. सरफराज का फिर क्या रोल बनता है अगर ये यहाँ पे खेलते हैं, दैट्स गोइंग टू बी द क्वेश्चन. सोहेल खान और मोहम्मद आमिर के आने से वो जो एक कोयटा का इशू रहा है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स कि हसनैन था या नसीम था, साथ में कोई एक्सपीरियंस लोकल बॉलर नहीं होता था जस्ट टू गाइड दोज गाइज थ्रू. अब अगर वसीम है, आई हैव लेफ्ट, तो जो बेसिकली मेरे सारे बच्चे थे वो रेहान ने टीम से निकाल दिए. तो आई एम एक्साइटेड फॉर अबरार एंड वसीम इन पर्टिकुलर, नॉट जस्ट फॉर व्हाट दे विल हैव फॉर दैट टीम बट जितना उनका पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा ड्रेसिंग रूम के ऊपर. बिकॉज अबरार एक लाइव वायर है, इज़ रियली गुड फॉर द ड्रेसिंग रूम. वसीम एक कम्प्लीटली पॉजिटिव आदमी है.
तो कोयटा का जब टीम एक रेगुलर हारती होती है तो वो जो ड्रेसिंग रूम का इशू आता है, दे ऑल्सो गॉट गाइज देयर नाउ जो कि ड्रेसिंग रूम पॉइजनस नहीं होने देंगे, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। चलिए रैप अप करते हैं इसको। हमने देख ली 6 की 6 टीमें। आपसे ही स्टार्ट कर लेता हूँ हसन के फॉरेन कोचेस और माइक हैसन के इंक्लूजन हुआ है, फिल सिमंस रेपुटेशंस हैं ऑफ कोर्स, और सर्टन फ्रेंचाइजेस चूज करती हैं, दे स्टक विद देयर फॉरेन कोचेस, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, and then this time around Multan have taken a big decision of giving Abdur Rahman, he's been with them, yes, big decision in terms of leaving Andy out, but you think it's a fair blend of someone who's got a good man management and someone who has a good knowledge of local conditions, local coaches versus foreign coaches as a team? I think बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि प्रूवन कोचेज़ हैं। फिल सिमंस का जो वेस्ट इंडीज़ के साथ रिकॉर्ड था, उससे पहले आयरलैंड के साथ था। एवरीवन नोज दैट न्यूजीलैंड की क्रिकेट जिस तरह से माइक हैसन ने ओवर द पास्ट 5-6 ईयर्स बनाई है, आई एम रियली हैप्पी फॉर रहमान भाई कि जितना डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने डोमिनेट किया है, दिस इज़ अ पोजीशन दैट इट्स नॉट जस्ट दैट ही डिजर्व्स, ही प्रॉब्ली डिजर्व्ड इट 5 years ago। अब हमें अपने बंदे को रिवॉर्ड करने में थोड़ा लेट ही रहते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी वॉटो हेयर, शेन वॉटसन आएंगे कोयटा के साथ, क्योंकि आपको यूजुअली कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। आई थिंक वन ऑफ द रीजन जो कोयटा लैक करी थी, दे हैड अ कंप्लीटली डोमेस्टिक स्टाफ द लास्ट फ्यू ईयर्स। वॉटसन के आने से वो फ़र्क पड़ेगा। इस्लामाबाद का अगर देखें तो इट वॉज मोस्टली अ डोमेस्टिक स्टाफ, अब हैसन के आने से वो फ़र्क पड़ेगा। फिर सिमंस हैविंग समबडी विद दैट कामनेस विल बी अ बिग थिंग फॉर कराची। It has to be a balance. It has to be a balance. It has to be a balance. नेशनल T20 का इम्पैक्ट कितना आपको नजर आता है? कई नाम देखे जो वहाँ से उठ के आए हैं। Which is बहुत अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि इट्स वेरी गुड टू सी कि जो परफॉर्मेंस उसमें से आई हैं, एक तो सब देख रहे हैं ऑब्वियसली, जहाँ जहाँ स्लॉट्स मिसिंग थे उसके अंदर देखा गया है कि ट्रस्ट किया उस परफॉर्मेंस को, फ्रेंचाइजीज ने उनको लेके आए हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ ये भी है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर थे, जो ऐसे प्लेयर्स थे जो काफ़ी अरसे से PSL का हिस्सा थे, वो हमें अब नज़र नहीं आ रहे, जिसमें एम शहजाद, उमर अकमल, शर्जील खान में भी जब जो दोबारा वो क्या होता है जिसमें रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट उसमें वो आए, लेकिन काफ़ी ऐसे, लेकिन फ्रेश फेसेस हमें नज़र आ रहे हैं। तो एक्साइटमेंट इस से भी है कि T20 को इस तरह से नए, स्पेशली नए ब्लड में देखा गया है कि नए प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया इस PSL। जी हाँ, नए प्लेयर्स भी आए और जो कुछ ट्रेड्स हुए हैं उसमें एक अच्छी चीज़ है टू लुक एट देम उरूज, is certain players who have their own character, who have their own skill, and they bring it to that franchise, and it'll be great to see how that blends in. Yeah, I think that's the beauty of franchise cricket, that sometimes it is the strategy and the mindset that runs a franchise. Sometimes it's player driven also, that one individual can make all the difference. हम Watto की बात करें that Australian flair that he brings could be the game changer for Quetta Gladiators, क्योंकि you don't know what sparks the change. बट इस दफ़ा अगर आप 6 की 6 टीमें देखें तो इट्स नॉट लाइक कि आप किसी एक को देख के बोल रहे हैं कि यार पता नहीं। आई थिंक दिस टाइम राउंड इट लुक्स लाइक दे वेरी वेल बैलेंस्ड एंड दे गो इन टुगेदर क्वाइट लेवल हेडेड। जो फ्रेंचाइजीज लास्ट 2-3 साल से स्ट्रगल की, आई थिंक वो ज़्यादा तगड़ी लग रही है। वो इसलिए लग रही है कि दे ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने सीखा 2-3 सालों से, और उनकी जो डिसीजन मेकिंग है ना उसमें नज़र आ रहा है कि दे वांट टू मेक चेंजेस, दे वांट टू टेक स्टेप्स इन द डायरेक्शन वेयर थोड़ा सा बैलेंस में चेंज लाएंगे, और थोड़ा सा स्पोर्ट्स स्टाफ में भी हमने चेंजेस देखी हैं। आई थिंक इट विल बी अ वेरी टफ PSL फॉर एवरीवन, it will be and it will be good to watch. It will be great to watch. Uruj and Azhar and of course Hassan, thank you so much for being here in the studio, and also thank you to all the guests who walked in and gave us their bits and pieces. Now time for us to wait. It's not too far away. February is the month where we'll come back and we'll see you all in the field, and we'll have all that action once again. Congratulations to all the players who got picked. And of course, congratulations to all the franchises. I hope they got the teams they wanted. The ones who didn't get picked, आप लोग भी अपना वेट कर रहे हैं। इन्होंने कहा अभी replacements भी आएंगी, और उसके अलावा आपका talent है, your time will also come. So there's always an opportunity available for each and every one. HBL PSL season 2024 draft comes to an end, and now it's all about action and these 6 franchises out there. Take care of yourselves. अपना ख्याल रखिएगा, and we're coming back in Feb with the play. छोड़ो ये फिक्रें और छोड़ो वो गम, ऊंची उम्मीद लेके आए हैं हम, पूरी करेंगे हर टूटी कसम, गेंद हवा में उड़ी सांस गई थम। जीतो शिकस्त तो है मालिक के हाथ में, आए सब सितारे हमारे दोबारा।